Ladies and gentlemen, this is SKOAR College Cup Daily Edition powered by OPPO storage partners SanDisk and Digit. Ladies and gentlemen, this is Grand Finals Day 1. I'm Saithar and I welcome you all. Along with me, I have my co-caster Seven Arm. Hello Seven Arm. I would like to ask you first of all, how much excited are you for this Grand Finals? We are about to start off with Day 1 match number 1. It will be Rondo. What's your expectation? देखिए एक्सपेक्टेशंस तो यहाँ पर रोंडो के साथ में एक ही रहती है कि आपको बेहतरीन डोमिनेशन देखने को मिलेगा और हर एक सेकंड में आपको एक मिनट में काफ़ी अच्छे फ्रैक्स देखने को मिलेंगे और वो ऐसा गेम भी देखने को मिलता है जहाँ पर आपको स्टार्टिंग के 4 स्टेज तक आपको रिकॉल सिस्टम देखने को मिलता है। तो एक बढ़िया यहाँ पे शुरुआत हर एक प्लेयर दिखा सकता है, हर एक दिए तो डोमिनेशन यहाँ पर हम लोग नोटिस करते हैं पहले मुकाबले के साथ में, लेकिन वहीं पर बाकी टीम्स को भी देखना पड़ेगा। काफ़ी अच्छी यहाँ पे बेहतरीन हमें प्लेयर्स और टीम्स खेलते हुए नजर आएंगी। तो यहाँ पर जैसा कि हम लोगों ने मेंशन किया कि डे वन में कौन सी यहाँ पे टीम होगी जो पॉइंट टेबल में हमें टॉप पे देखने को मिलेगी, फिलहाल देखना इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमारे ग्रैंड फाइनल्स और ग्रैंड फाइनल्स में हमारी ये टीमें बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस को दिखा के आई हैं। तो फिर कौन सी यहाँ पे टीम होगी जो बेहतरीन विनर चिकन के आज के पहले मुकाबले में निकालेगी साइथर? Well, it's very much important to start off with a good winner chicken, and I guess Aquila Esports, they are the contender of winning this first Rondo game. Even Invincible Esports, they have a really good gunpowder as well. So yes, Invincible Esports and Aquila Esports at the same time, Team 9mm, they have a really good gunpowder as well. So these teams, I have my eyes on them especially, and I guess they might go for that winner chicken. चलिए उन टीमों के लोगों के साथ में भी हम लोग उनके नाम को देख लेते हैं जहां पर 9mm के प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, A7 Esports बहुत अच्छा खेलते हैं, एक्विला वो भी यहां पर काफ़ी टफ कंपटीशन देने वाले हैं, ब्लास्टर एक्स सारदा, ये सारदा यूनिवर्सिटी की काफ़ी पॉपुलर टीम है, बॉग Esports देखने को मिलता है, टीम कियोस के प्लेयर्स, इनविंसिबल देखने को मिलती है, लास्ट कंटेनर भी काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखाते हैं और कोडस 404 को हम लोगों ने देखा है और ओल्डजन के प्लेयर्स बहुत यहाँ पे बेहतरीन खेलते हैं, लेकिन इनको हम लोगों ने जब भी मतलब सेमीफाइनल्स और क्वार्टर फाइनल्स में देखा है इनसे थोड़ा सा मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कर लेते, लेकिन वो उसमें खरे नहीं उतर पाते। तो आज के दिन में अच्छा गेम प्ले दिखाने की यहाँ पर उनको कोशिश और ज्यादा करनी पड़ेगी। W2R काफी अच्छी टीम है, टीम वैलोर वो यहाँ पर वैलोर कॉलेज की तरफ से आते हैं, टीम हंसराज को कॉलेज की तरफ से आते हैं, काफी बढ़िया यहाँ पर वो भी आपको टीम देखने को मिलती है। T1 Esports, रेड डाइट, ओवर पावर्ड एंड अभियुक्त यूनिवर्सिटी के यहाँ पे टीम देखने को मिलेगी, अभियुक्त यहाँ पर टीम खेलते हुए, तो काफी पॉपुलर टीम्स देखने को मिल रही है। हमारा सारा का सारा कंपटीशन आपको यूनिवर्सिटीज के बीच में नजर आता है, तो देखने की बारी है कि हमारी इन यूनिवर्सिटीज की टीम्स में से कौन सी टीम होगी जो पहले मैच को निकालेगी और आज के आखिरी दिन तक वो अपने आप को टॉप पे रखने की कोशिश करेगी। मैप शेड्यूल आपके सामने जहां पर हमारे शुरुआत होगा रोंडो के मुकाबले के साथ में साइथर। Obviously, we are starting off with Rondo. It's going to be epic. It's going to be chaotic. Match 2, it will be Wrangle. It will be a series of Wrangle. 3 Wrangle will be played back to back. Then we'll head towards Miramar. It will be match number 5.
and match number 6 in Miramar. So it will be very much crucial to fetch out a huge amount of profit in this Rondo game. You need a good amount of finishes, good amount of points so that you can, extend that lead on points table. Once you sit on the head of the table, you would want that you have a very huge lead, and teams they find it difficult to chase you down. So yes, this Rondo needs to be pretty much good for teams. Teams need to go for that good start, and then Erangel. By default, Erangel map, you have tons and tons of experience of this map. So yes, these Erangel games are tough at the same time, but as you have so much experience of this map, you can pitch out some loopholes as well. 7-up. जी हाँ, ऐसे यहाँ पर मैचेस में स्ट्रेटजीज तो आपको यहाँ पर दिखानी पड़ेगी और अपने गेम प्ले में यहाँ पर कुछ सुधार को यहाँ पर टीमों को करना पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रैंड फाइनल्स है, गलतियाँ आप अफोर्ड कर नहीं सकते। और ग्रैंड फाइनल्स का डेब्यू जैसा देखने को मिल रहा है, तो आपको पहला मैप यहाँ पर डोमिनेशन वाला देखने को मिलता है, तो आप फुल ऑन डोमिनेशन की तरफ जा सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पर ये मेक श्योर करना है कि आपका एक प्लेयर, अगर आप किसी फाइट में यहाँ पे फंस जाते हैं और आपके बाकी यहाँ पे प्लेयर्स डोमिनेट हो जाते हैं, लेकिन एक प्लेयर आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं करके रिकॉल टावर तक उसको पहुंचाना है, तो हर एक स्ट्रेटजीज के साथ में आपको बहुत ही शार्पली वर्क करना है। जैसे हम लोगों ने एरांगल की बात की, एरांगल में बोलते तो सभी यहाँ पर टीम्स है, सभी यहाँ पे प्लेयर्स बोलते हैं कि ये मेरा बेस्ट मैप है, लेकिन वहां पर बेस्ट आपको हर मैच में 3 एरांगल में एक ही टीम देखने को मिलेगी। तो बेस्ट से बेस्ट आपको इस स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वहीं पर मिरामार को तो हम लोग जानते हैं कितना यहाँ पे वो डेडली मैप हो जाता है, जहां पर आपको ना कवर मिलता है ना कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब वो आपको यहाँ पर एक ओपन फाइट जैसा यहाँ पर आपको मिरामार देखने को मिलता है, जहां पर आप रिचेस पे चले गए, आपकी फाइट हो रही है, मल्टीपल टीम्स आपकी तरफ प्रेशर बनाने की कोशिश करी, तो आपको वहां से बच के निकलना है। और बच के आप इतनी आसानी से निकल भी नहीं सकते, क्योंकि मिरामार के व्हीकल्स को हम लोग जानते हैं, आपको पूरी तरीके से यहाँ पे फोकस्ड होकर गेम प्ले दिखाना। लेकिन लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला मुकाबला हमारे सामने आज का स्टार्ट होते हुए डे 1 का ग्रैंड फाइनल्स का आप लोग देख रहे हैं स्कोर कॉलेज कप दिल्ली एडिशन, मैच नंबर 1 रोंडो का ये मुकाबला है। और प्लेन पाथ और पायलट दोनों ही काफी यहाँ पर सुंदर देखने को मिलेंगे हल्लूसा के साथ में मैच स्टार्ट होते हुए। और प्लेन पाथ की बात करें तो जहां पर हम लोग देखेंगे काफी शानदार ये प्लेन पाथ है, वेस्टर्न से स्टार्ट हुआ, सदर्न की तरफ यहाँ पर तिंगलोंग गार्डन की तरफ ये एंड होता हुआ नजर आएगा। आपको यहाँ पर यूलिन का एरिया वो मिल जाता है, न्यूयॉर्क फैक्ट्री भी काफी करीब देखने को मिलेगी, हल्की सी ग्लाइडिंग स्किल का इस्तेमाल करना है। और रिंग जियान की तरफ एक टीम एटलीस्ट यहाँ पे जानी ही चाहिए, और तिंगलोंग गार्डन की तरफ तो जाएंगी ही जाएंगी टीम। लेकिन वहीं पे देखना है साइथर, स्टेडियम, टेस्ट ट्रैक, न्यूयॉर्क फैक्ट्री, जेडेना सिटी, ये 3 पॉपुलर ड्रॉप रहते हैं जो कि बहुत शानदार आपको वहां पे लूट मिल जाती है। तो वहां पे कौन सी टीमें जाएंगी और किन टीमों के बीच में फाइट वहां पे इनिशिएट होती हुई देखने को मिलेगी? After looking at this flight path, it seems like it will be quite difficult for teams to head towards New York's factory and Jadana City because the distance is too much. But at the same time, if we talk about old generation, I guess they're trying to access stadium regions, and it's hotspot in stadium. It's always hotspot in New York's factory. And right now, we can see players are trying their very best to glide and access New York's factory. But at the same time, players need to keep one thing in their mind. They need to maintain those 3-1 splits successfully. And the flight path right now is favoring a particular region of Rondo map. That's the reason why. That's the reason why the entire region of Rondo cannot be accessed. We talk about Kungjia, Muhopan. Entering those regions will be very much difficult. And here comes the first circle as well, which is favoring New York's factory for now. Circle is favoring the eastern regions of Rondo map, and immediately the fight has started in the southwestern regions of Yulin. That's a huge cluster. Multiple teams are there. Dhruv will be taking down 404 mid to dawn, code 404 there on back foot for now. Dhruv will be taken down. Ansh will with that brilliant retaliation. Dhruv there, he will be flushed out. Even God takes down Ansh, and I guess he'll be getting 2 frags there. Yes, he'll be getting another bonus frag. Brilliantly, Team T1, they will be going for the third party, and code 404, I guess now they have to go for the recall. Last contenders, they are taking on Team Overpower Esports, Redline Esports. They are into action too. But really good start for Team T1, and I would love to see this team playing well in this first Rondo game because they have the potential, they have the gunpowder. So yes, I have my eyes on Team T1 as well, though I didn't mention their name on the casters test. But this is a kind of team who can really surprise you out of nowhere. Meanwhile, Akula Esports, I'm waiting for them because I haven't seen them on the positive side of the finish feed yet. They haven't started contributing finishes for themselves. Overpower Esports, meanwhile, they've lost Ashu and the player on recall tower right now. Need to do some job here. Arrow, he took down one player. And then in return, Arrow gets knocked out as well. That was Bruiser who came up with that brilliant trade knock. Arrow on his knees, but even God won't mess it up. And meanwhile, it's Kanishk will be moving up. Bruiser will be immediately taken down. And the question is, Kanishk, can he get that confirmation as well? Or that finish is going to be stolen from someone else? LC Stark
Finishes off Viper, Kamlesh right in front of him. But right now, Stark, I guess he'll be going for the revival, but Kamlesh immediately with that grenade goes for that confirmation. Ragnarok will be taken down. Ragnarok will be flushed out, but still he has that recall, so no need to worry. But a 1v2 situation, low ground disadvantage right now. Stark gets knocked out. Kamlesh with that beautiful connection with that S12K. And now it's Vicky versus Kamlesh, and Vicky doesn't have a proper weapon here. To fight S12K, you need a good weapon for close range. Vicky doesn't have one. That's the reason why he was falling back, but Redline Akshat takes him down, and Team Last Contenders, they are down to one man now. Shobit is the last ray of hope surviving, and he needs to find a recall tower as soon as possible so that he can recall his teammates back in this game 7-up. That was huge chaos over there, जहां पर आपको मल्टीपल टीम्स देखने को मिली थी। वहां पर आपको T1 Esports के प्लेयर्स देखने को मिले थे, जिनसे हम लोगों ने शुरुआत देखी थी डोमिनेशन की, 2 फिनिशर्स निकाले थे, और उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि T1 को मल्टीपल टीम्स ने डोमिनेट किया। RL के प्लेयर्स, रिटर्न के प्लेयर्स मौजूद हैं, ओवरपावर्ड के प्लेयर्स मौजूद हैं, W2R देखने को मिलेगी। हर एक टीम यहाँ पर इवन टीम वैल्योर के प्लेयर्स भी देखने को मिलेंगे, ओवरपावर्ड की टीम भी देखने को मिलेगी। लेकिन खैर देखिए जनता, यहाँ पर इस ड्रॉप लोकेशन के पास में स्पेस है, और स्पेस आपको भी यहाँ पर अपने गेम प्ले में चाहिए रहेगा, ताकि आप भी यहाँ पर अमेजिंग अपने मोंटाइज एंड बाकी यहाँ पे चीजों को रिकॉर्ड कर पाए। तो उसके लिए आपको चाहिए रहेगा कि एक बेहतरीन यहाँ पर फास्टेस्ट एसएसडी और बेहतरीन यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस, तो वो आपको देखने को मिल जाता है वर्ल्ड्स फास्टेस्ट PCI Gen 5 SSD यहाँ पर, जो कि हमारे स्टोरेज पार्टनर लेकर के आए SanDisk WD Black। तो आप लोग इनकी यहाँ पर SSDs को कंसिडर कर सकते हैं, अपने यहाँ पर उन यहाँ पर डिवाइसेस में लगा सकते हैं, जहां पर आपको बेहतरीन ये स्टोरेज डिवाइसेस आपको सपोर्ट करके काफी अच्छा यहाँ पर आपको स्पेस दिलाएंगे और एक रफ्तार दिलाएंगी, और यहाँ पर आप अपने अमेजिंग गेम प्ले को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने आप अमेजिंग यहाँ पे वीडियोस एंड मूवीज को यहाँ पे रिकॉर्ड करके सेव करके रख सकते हैं। बहुत अमेजिंग यहाँ पर फाइल्स आपकी, बहुत ही स्पीड रीड एंड राइट उसकी कैपेसिटी देखने को मिल जाती है उन SanDisk की। लेकिन फिलहाल बैक टू द गेम, जहां पर हम लोग देखेंगे काफी बड़ी बड़ी टीमें देखने को मिलेंगी। ओवर पावर प्लेयर्स, 2 प्लेयर यहाँ पे गवा चुके हैं, 2 फिनिशर्स उनके पास में देखने को मिलेंगे। वाइपर जो कि बहुत बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन इस मैच में यहाँ पर उनको सबसे पहले खत्म कर दिया जाता है। रिकॉल टावर ओपन है, लेकिन वही हम लोगों ने बात की थी कि साइथर 1+3 का स्प्लिट आपको खेलना पड़ेगा, तभी आपको एक बढ़िया यहाँ पर वो रिकॉल सिस्टम आप उसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अभी तक रिकॉल की तरफ हमें कोई टीम जाती हुई खास देखने को मिलेगी। 9mm यहाँ पे हलूसा पे डाउन होते हुए नजर आएंगे। TR क्लैप्स, उनको यहाँ पे फाइट के लिए जाना था, लेकिन रिवाइवल के लिए गए थे, सबसे बड़ी गलती कर दी, खुद यहाँ पे डाउन हुए, उनके प्लेयर भी खत्म होते हुए नजर आए। और वहीं पर आपको कोड ऑफ 404 के प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। यश सामने मयंक को देखा, लगातार वो स्प्रे बनाने की कोशिश, लेकिन अल्लाह यहाँ पर एक भी बुलेट कनेक्ट नहीं हो पाई। और अगर वो बुलेट कनेक्ट होती साइथर, तो वो प्रॉपर हेडशॉट ही होती नजर आती, क्योंकि हम लोग देखते हैं बग्गी पे जब भी ड्राइवर सीट पे गोलियां कनेक्ट होती हैं, तो वो हेडशॉट के साथ ही देखने को मिलती है। मयंक फाइनली यहाँ पर अपनी टीम की ओर से इकलौते प्लेयर बचे, रिकॉल टावर की तरफ सक्सेसफुली आगे मार्च कर चुके, कोई खिलाड़ी है नहीं, और यहाँ पर ये रिवाइवल देके अपनी टीम को पूरी तरीके से फिर से जिंदा करेंगे। That's a very good news for Team AKT. They were about to lose this game. They were about to get eliminated. They haven't secured any finish yet. That was a really close call. But finally, Recall Tower is available there. And again, Team AKT, they will be 4 players strong. But now they've lost all their recalls. And from here, they will need to play passive. They need to gather their things up and head towards the circle, as well as they are almost 2,500 meters away from the circle. Monk, on the other hand, takes down overpowered far. Overpowered Esports again losing players. I haven't seen overpowered Esports on the positive side of the finish feed yet. We saw Kamlesh securing some frags, but only Kamlesh contributing in terms of finishes like this. It won't really work out for Team Overpowered Esports. And now Kamlesh gets finished off too. Kamlesh gets cooked too. Concerns rising for Overpowered Esports. Meanwhile, Team 9mm, they are taking on Team Aquila. This is going to be an epic fight. Aquila Esports versus Team 9mm. Both these teams has nothing to lose. Both these teams has the recalls with them. But the question is, who will take that initiative first? Ash immediately moves in. Gary gets taken down. Ash lacking with his HP. That was a brilliant shot connection on Ash. But Aquila Esports quite unlucky here. Here comes the second shift of the circle. It will be a basic centralized shift. Neox Factory still present inside the circle. Dustin knocking down Novojord, and Novojord immediately will be flushed out. Aquila Esports having a really hard time. The question is, which team has been eliminated from this game? Because I can see only 15 teams are alive, but Mong, he's on that recall tower. Aquila Esports, they're still present. I told you that Aquila Esports might get that winner chicken dinner in this opening game of the grand finals of SKOAR College Cup Kelly edition. But immediately Monk after that to recall.
He is into action. Monk gets knocked out immediately. And concerns again rising for Aquila Esports. But on the other end, Team 9mm, they are now going after Team Valor. Alusa tried to go for the grenade with that cheeky angle. That cheeky angle, he wanted to make some connections there, but couldn't make so. On the other end, Monk, he'll be flushed out. Jimmy gets knocked out. The grenade was right on money. Jimmy gets knocked out. Dustin OG, that brilliant spray. And he gets that confirmation as well. Dustin OG very smartly finishes off Jimmy, and this will be 4th elimination for Team 9mm. And now those grenades coming in. Team 9mm controlling this fight right now. Team Valor, they are submissive. Team 9mm, they are dominant as always. Team Valor now trying to increase the distance, trying to avoid this fight, trying to buy some time because they are quite unsettled here, 7-arm. And they are completely surrounded by players. And all the 4 players of Team 9mm are participating in this fight. This is a bit concerning because things can go south. And 9mm Esports, they have too much faith in themselves, which is good. But you have to be prepared. If something goes south, you need those recall towers. And for that, you need a 3-1 split. आई थिंक टीम वेलोर यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। देखिए जहाँ पर उनके प्लेयर्स रिकॉल टावर पे भी मौजूद हैं और कुछ प्लेयर्स रिकॉल होकर के आए हैं, तो उनको यहाँ पर फाइट में जाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आप यहाँ पर डाउन हो जाएंगे, बट आपके पास में रिकॉल टावर का कंट्रोल है तो आप फिर से यहाँ पर रिवाइव हो सकते हैं। तो टीम वेलोर को एक बार के लिए रिस्क लेना चाहिए। हाइयर रिस्क रहेगा, हाइयर रिवॉर्ड आपको देखने को मिलेगा, लेकिन डस्टिन ओजी आगे बढ़ते हुए जाट यहाँ पर क्या वो रिटायर्ड कर पाएंगे, अपनी टीम की ओर से यहाँ पर प्रहार कर पाएंगे, डस्टिन को किसी भी तरीके से रोक पाएंगे? सवाल बहुत बड़ा। मॉल्टोव के साथ में एक बार फिर से यहाँ पर कोशिश, वो रफ्तार वो देखने को मिले। डस्टिन ओजी के हाथ में शॉटगन है और वो कनेक्शन बनाएगा। वेलोर के प्लेयर्स निकले नहीं, ट्राई किया नहीं, और डस्टिन ओजी को हायर रिस्क हायर रिवॉर्ड मिलेगा और अपनी टीम के नाम बड़े फ्रैग निकालेंगे। देखना है कि क्या वेलोर अब यहां पर रीसेट कर पाएगी अपने आप को। जहां पर रिकॉल टावर का अभी फिलहाल कुछ देर पहले उनके पास में कंट्रोल था, कुछ प्लेयर रिकॉल हुए थे, लेकिन अब यहां पर वो वापसी करने के हालात में है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक ही रिकॉल टावर पे मल्टीपल प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। राइट नाउ हमारे सामने देखने को मिलेंगे टीम में बीएल, और सामने से कितनी बुरी तरीके से ध्रुव भागे हैं जान बचा करके। अगर यहां पे मौका मिल जाता फायर जॉट को तो वो पूरी तरीके से यहां पर खत्म कर देते, और हम्बल एजियल उनके साथ है, पूरी की पूरी टीम मौजूद है इस जगह पर। लेकिन वहीं पर आप देखिए एक और टीम के बीच में मुलाकात होगी और मुकालात यहां पे होती हुई नजर आएगी, विच इज अ टीम इनविंसिबल, और वहीं पर उनके सामने देखने को मिलेंगे रेड लाइन ई स्पोर्ट्स के प्लेयर। दोनों ही टीमें काफी घातक है। ध्रुव एक जगह से निकले हैं बट दूसरी जगह आकर के फंस चुके हैं, अपने टीममेट्स को रिकॉल देना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान इनके लिए है नहीं। मोस्ट ऑफ रिकॉल टावर्स कैप्चर हो चुके हैं और वहां पर फाइट आपको देखने को मिलेंगी। ध्रुव एंड इनविंसिबल के यहाँ पर इकलौते यहाँ पर खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। ध्रुव के साथ में इकलौते सपोर्टर देखने को मिलेंगे, विच इज गांजा ओपी। नेट किया गया, कवर बनाने की कोशिश की गई, काफी बढ़िया यहाँ पर वो प्रॉपर आपको डिग देखने को मिलेगा। लेकिन बारी है रेड लाइन स्पोर्ट्स क्या करने वाले हैं देखने की, और धीरे धीरे करके पूरी तरीके से घेराबंदी चालू हो चुकी है। एक ग्रेनेड, एक गोल्डन ग्रेनेड दोनों ही प्लेयर को नॉकआउट कर सकता है। ध्रुव को नॉकआउट किया गया, ये बढ़िया सा ग्रेनेड ध्रुव हैज कंफर्म राइट नाउ, और पीछे से पूरी केवलरी यहाँ पे रेड लाइन की आते हुए, लेकिन वहीं पे गांजा का भी ग्रेनेड काफी यहाँ पे उत्तम नॉक हुआ वो प्लेयर, और इकलौता प्लेयर गांजा ओपी अपने लिए बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे कंडीशंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एचपी काफी लो हो चुकी गांजा की। व्हीकल बस्ट करने की यहाँ पे कोशिश है, क्या करना चाहते हैं, बल्कि यहाँ पे एमोस को थोड़ा सा इस्तेमाल कर, मतलब थोड़ा देख दाख के इस्तेमाल करें, लेकिन आखिरी कनेक्शन आएंगे उड़ते हुए। यहाँ पर ये खिलाड़ी यहाँ पे यथार्थ आखिरी कनेक्शन बनाएगा। गांजा का एलिमिनेशन देखने को मिलेगा, इनविंसिबल 14 पोजीशन पे एलिमिनेशन यहाँ पर दिखाते हुए, और रेड लाइन 4 बेहतरीन फिनिशर्स, चारों खिलाड़ी जीवित है, और अब बारी हो चुकी है बीएल के प्लेयर से फाइट निकालने की। रेड लाइन रुकने को तैयार नहीं है, पूरी तरीके से यहाँ पे अपना वो एग्रेसिव परफॉर्मेंस दिखा रही है। लॉन्ग रेंज की फाइट में भी यहाँ पर एक बड़ा यहाँ पर चैलेंज दिखाती हुई नजर आएगी साइथर। Wow, Invincible Esports, they desperately wanted to recall their players, but Redline Esports, even Team BL, they didn't allow them to do so. Redline Esports, they were just phenomenal in that fight, taking down Invincible Esports, eliminating them in the initial stages. This is a huge accomplishment, and this will surely boost their confidence. But Team BL and Redline Esports, sort of they were poking each other, but now the pace slowed down a lot. Oh, TC Noob can take down at least 2 players at this point, but he messed up with that spray completely. Was waiting here for a better opportunity, but Team Chaos Noob, it was chaotic for him. This time he
targets Akshat there. Akshat barely survives that spray. Survives that spray by the barest of margins. And now it's time for Team Chaos to move towards the circle. Even Team Blaster X Shada, they are out of the circle too. They need to start moving as well. But problem here is there are multiple teams around them and they need to secure a pathway. They need to secure a route to head towards the circle, especially Team Chaos. If they see Team BL rotating right now, if they see Team RL even rotating, they will just blow up on them. So yes, both the teams, Team RL and Team BL, both of these teams needs to figure out a way, a safe way to enter the circle. But Team Chaos Noob, right now he has a threat because immediately Team Borg, they will be closing in. And Noob, he is all alone. He has no teammate here. It's a 1v2 situation, and first of all, instead of healing, he'll just try to block those angles. Just trying to spread those smoke out, creating pressure on his opponents. Still hasn't popped in that first hit, but he hasn't. No first hit right now. Just relying on those bandages and this grenade. Can this grenade make those connections? Bravo gets knocked out. That was brilliant by Noob. And now it's 1v1 with Rahul. And all pressure on Team Borg. I don't think so Rahul is going to close in for now. But again, Noob pulls that grenade. But that Molotov was right on target. And Noob with this, he'll be taken down. Yes, with this Team Chaos, they are eliminated from this game. Yes, Team Chaos, they're eliminated on 12th position. That was a sad ending for them. Team Borg getting their 4th elimination. Things got nasty for them. Bravo did get knocked out, but now it's time to head towards the circle and forget whatever mistakes they made here. 180 meters is the distance. Meanwhile, last contenders, Stark. Yes, pinned down Team Valorant and Juicy. But that Ridge right now making that separation, that's the reason why Stark... Oh my goodness! Juicy had his eyes on Stark and that was savage! Savage! Stark on his knees. Maybe Team Valor, they'll start closing in now. Ragnarok, he has a different angle and maybe he will revive Stark there. And still Team Valor, because of that numbers disadvantage, they couldn't close in. They are restricted and they can't do anything about it. Now they're just trying to make those connections with that grenade. And Ragnarok is looking forward to go for that revival, which will be very much difficult for him. But Team Valor, somehow, desperately, if they make any connection here, Team Last Contenders, they will be on back foot. Team Valor, even they have a really good gun power. And I guess Team Valor with their vehicles, are they trying to close in or they're just trying to create some new angles? Not now. Team Valor, they aren't closing in and maybe they just make their way to the circle because they are still not present inside the circle. They are right on the edge and they've got enough time, 7-arm. They can just avoid this fight and enter the circle. It will be a good investment for them. They need to place themselves inside the circle. They will get enough time to fight Team Last Contenders. जी हाँ, और यहाँ पर वो देखने को मिलेगा उनको, वो अपने आप को रिपोजिशन करते हुए देखने को मिलेंगे। लास्ट कंटेंट अपने आप को हील करते ही रह गए और आपको 8 टीम में 25 खिलाड़ी, जहाँ पर टीम वेलोर के प्लेयर्स बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाते हुए लास्ट कंटेंट के ऊपर यहाँ पर प्रेशर आप क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि सर्कल का काफी अच्छा एडवांटेज उनके पास में आ चुका है। काफी अच्छे यहाँ पर आपको रिचेस के कवर देखने को मिलेंगे, लेकिन वहीं पर लास्ट कंटेनर उनके पास हाइट का एडवांटेज है जरूर, लेकिन थोड़ा सा ओपन एरियाज में फंसते हुए नजर आ सकते हैं अगर वो हल्का सा मूवमेंट आगे देंगे। लेकिन जाट अभी देखने को मिल रहा है बैक लाइंस पे पूरी तरीके से उनके निगाहें हैं, जहां पे कोई फिलहाल के लिए प्लेयर नजर आ तो नहीं रहा है, लेकिन कंफर्म करना चाहते हैं कि वहां से कोई आता है या नहीं आता है, तो निगाहें पूरी तरीके से बना करके रखिए। लेकिन इसी बीच यहाँ पे कोड 404 के प्लेयर्स अपने लिए एक नॉक निकाल चुके हैं। बीएल ब्लास्टर एक्स शारदा के यहाँ पर हम्बल आईजीएल को डाउन कर दिया गया। देखते देखिए व्हीकल रन ओवर, व्हीकल स्लैम के साथ में उस खिलाड़ी को कंफर्म किया जाता है। कोड 404 बचे मात्र अब 2 खिलाड़ी, एक यश और दूसरे स्ट्राइकर। क्या यहाँ पर ये 2 प्लेयर आगे बढ़ करके अपने टीममेट का बदला निकालते हुए नजर आएंगे? मिथुडॉन खत्म हो चुके हैं, अंश यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। 8 फ्रैग इनके पास में देखने को मिलेंगे। देखिए प्रॉपर बढ़िया सा यहाँ पर उन्होंने कवर बना करके रखा है, लेकिन सामने से जब हाइट का एडवांटेज होता है तब काफी दिक्कत देखने को मिलती है। लेकिन यश एक बार बनाया, लेकिन दूसरे से यहाँ पे नॉकआउट हुए। ब्लास्टर एक शारदा के शेडो एक बढ़िया गेम प्ले दिखाते हुए, लेकिन स्ट्राइकर उतने ही ज्यादा यहाँ पे खराब सिचुएशन में बैक लाइन से भी कनेक्शन आएंगे और सामने से शेडो एक बड़े यहाँ पर कनेक्शन बना करके उस खिलाड़ी को कंफर्म करेंगे। लेकिन लास्ट कंटेनर सोबित, उन्होंने शेडो को देखा, शेडो को यहां पर खत्म किया। आखिरी की 5 टीमें, लास्ट कंटेनर के पास में हाइट का एडवांटेज है, लेकिन सर्कल उनके साथ में अभी तो मौजूद है।
बट कवर यहाँ पे नहीं है। अगर एक भी प्लेयर डाउन हुआ तो फिर बहुत मुसीबतें हो सकती हैं, क्योंकि उनके पास में इतना ज्यादा वो मोमेंट स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन सामने टीम वैल्योर जाट का यहाँ पर वो इंतकाल करने के लिए तैयार है रैग्नारॉक, लेकिन फिर भी जाट बचते हुए अपने आप को कोर में ले जाते हुए, और रैग्नारॉक फिर से तलाश में कि कोई और यहाँ पे टीम का खिलाड़ी मिले और अपनी हाइट के एडवांटेज के साथ में उस टीम के लिए दिक्कतें बना करके उनको खत्म करने की कोशिश की जाए। स्ट्रेटजी काफी अच्छी है, लेकिन ओ माय गॉड, सर्कल जिस तरीके से करवटे ले रहा है, केवल लास्ट कंटेंडर ही देखने को मिल रहे हैं सर्कल के अंदर। बाकी हर टीम के प्लेयर यहां पर आपको बाहर देखने को मिलेंगे। कुछ इक्का दुक्का यहाँ पे टीम के प्लेयर देखने को मिलेंगे। लाइक हम लोग अगर देखें तो रेड लाइन का एक खिलाड़ी नजर आएगा सर्कल के अंदर, लेकिन उसके ऊपर ही मुसीबतें बहुत ज्यादा। लास्ट कंटेंडर के पास में हाइट का एडवांटेज है साइथर, उनके पास में नंबर्स का गेम देखने को मिल रहा है। किसी को भी एंट्री लेने ही नहीं दे रहे सर्कल के अंदर वो। Last contender is looking like the first contender to win this winner-winner chicken dinner in this Rondo game. This will be an epic start for them for sure. Vayu gets knocked out. Aquila Esports, they are still hanging in. Spec knocks down Akshat. 2 openings has been created by Aquila Esports. Maybe they will straight away go for that Slamming because Redline Esports, they are present inside the circle. But Team Last Contenders, they couldn't block anybody's circle till now. Team Redline Esports, they made it to the circle, but because of that early rotation, Aquila Esports, they stabbed them in the back. Till now, Old Generation, they've been very much quiet. Team Old Generation, they are in contention too, and I guess they got a spot inside the circle. Juicy gets knocked out. John is the last player surviving for Team Valor. Shobit finishes off Gary there, and now Ragnarok, he'll be going for that revival. Yathat with that 1v1 fight, takes down one player. Job is not done yet. Monk is still surviving, and those third party continuously from the players of Team LC. Yathat, he gets that confirmation as well. Aquila Esports, they fumble too, and they need to win this 1v1 at any cost. They need to win this fight at any cost. It's Mark versus Aral Yathat. And look how smartly Yathat, he's closing in, but he's lacking with his HPs now. Just one connection is needed. Rightly, he sits inside that vehicle, popping in that bandage. Same goes with Monk. He's sitting inside that vehicle too. Monk trying to spam those shots. And finally he makes this connection. Aquila Esports, they eliminate Team Aral on 3rd position. I guess it's a 1v3 scenario. And Team Old Generation it is, I guess. Team Old Generation, did they win this game? It's chaotic, it's confusing. But I guess it's Old Generation. Out of nowhere, they got this winner chicken in a 7-up. देखिए, ये तो अभी हमको भी नहीं पता कि कौन सी यहाँ पे टीम वाकई भी जीती है, क्योंकि वो सडनली सा कनेक्शन आया पीछे से और वो पूरा यहाँ पे मैच खत्म होता नजर आया। जी हाँ, ओल्ड जेन के प्लेयर्स ने बहुत ही शानदार विनर कंटेंट निकाला है। एक आखिरी प्लेयर के साथ में जिंदा रहे और जिस तरीके से उन्होंने लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर थर्ड पार्टी की उस यहाँ पे खिलाड़ी को कंफर्म किया, एक बड़ा गेम यहाँ पे दिखाते हुए ओल्ड जनरेशन फाइनली पहले मुकाबले को जीत चुके। काफी यहाँ पे बड़े उन्होंने माइंड गेम्स को खेला था और वो माइंड गेम्स यहाँ पे वर्क करते हुए देखने को मिले और रोंडो के पहले मुकाबले को यहाँ पर उन्होंने विन कर लिया है। अब बाकी यहाँ पे रैंगल्स उनके सामने देखने को मिलेंगे, क्या यही कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएंगे। देखिए, हमने साइतर यहाँ पे हमने पहले ही बोला था कि ओल्ड जन को जिस तरीके से हम लोग उम्मीद करते हैं वो उस तरीके से उम्मीद पे खड़े नहीं उतरते, लेकिन ये जो माइंड गेम खेला पहले मुकाबले में शुरुआत हो चुकी है। हमने बोला था कि इनको बेहतर से और ज्यादा बेहतर करना पड़ेगा और यहाँ पर उन्होंने शुरुआत कर दी है, पर यही कंसिस्टेंसी आज के आखिरी मैच तक यहाँ पे उनकी मेंटेन होनी चाहिए, तभी जाकर के आपको पॉइंट टेबल में टॉप पे देखने को मिल सकते हैं। वरना फिर अगर हल्का सा भी यहाँ पे लैग करेंगे किसी भी मैच में तो फिर इनके लिए दिक्कतें हो सकती है। पहला विनर मैच करने यहाँ पे कांग्रेचुलेशंस ओल्ड जैन, आपको अब यहाँ पे थोड़ा सा और अपने गेम प्ले को फिनिशर्स के साथ में हर मैच में यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, जहां पर अब आपके सामने 3 रैंगल आने वाले हैं। Great start for Old Generation. Well deserving winner chicken dinner by their side. I mean, they were very much quiet, didn't mess up with teams, stayed out of the side, and at the end when it mattered the most, they delivered and they got that winner chicken dinner. That was just brilliant. They got a good lead on points table and they need to maintain this. After this, it will be Wrangle, ladies and gentlemen, but now it's time for a short break. We will be right back. Till then, stay happy.
Ladies and gentlemen, this is SKOAR College Cup Delhi Edition Grand Finals Day 1, powered by OPPO along with a storage partner SanDisk and Digit. I'm Saithar and I welcome you all. Along with me, I have my co-caster 7arm. Hello 7arm, what's up? हम तो बहुत अच्छे हैं। आई होप यहाँ पर आप भी अच्छे होंगे और हमारी सारी टीम्स तो बहुत अच्छा खेल रही हैं, बहुत अच्छी हैं। लेकिन वहाँ पर आपको सबसे बेहतर ओल्ड जन देखने को मिल जाते हैं, जिन्होंने पिछले मुकाबले में और राउंडो के मुकाबले में बहुत ही अच्छे तरीके से विनर चिकन निकाला है। तो अब बाकी यहाँ पे टीमों की बारी आ चुकी है, जहाँ पर सभी के पास में अभी आपको 5 मौके देखने को मिलेंगे, 5 मैचेस आपको स्टिल देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर अब हमारा राउंडो का तो एक ही मुकाबला था, लेकिन अब यहाँ पर हमारा स्टार्ट होगा वो जर्नी इरेंगल का। 3 बैक टू बैक आपको मैचेस देखने को मिलेंगे इरेंगल के, तो हर एक टीम के पास में बराबर का मौका देखने को मिल रहा है। बट वहीं पर आपको जिस तरीके से ओल्ड जन ने पहले ही एक लॉन्ग जंप लगाई है, तो ओल्ड जन के पास में यहाँ पर एक्स्ट्रा आपको 5 मौके देखने को मिलेंगे विनर चिकन निकालने के, जहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी एक विक्ट्री सिक्योर कर ली है। तो देख रहा है कि ओल्ड जन को कौन सी टीम बीट कर सकती है और कौन सी टीम होगी जो यहाँ पर विनर चिकन निकालेगी। क्या ओल्ड जन एक बार फिर से रिपीटेबल चिकन निकालेंगे, यहाँ पे कोई एक नई टीम देखने को मिलेगी, जहाँ पर हकदार तो बहुत सारी टीमें देखने को मिल जाती हैं। ओल्ड जन के अलावा हम लोगों ने W2R Esports को देखा है, बहुत अच्छा गेम प्ले दिखाते हैं। और वहीं पर हम लोग टीम वेलोर को भी आज के दिन में बहुत ज्यादा बेहतरीन यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखा है। और अभी फिलहाल बहुत सारी टीमें हैं, बट चलिए हम लोग देखते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग्स क्या कहती है साइथर। Oh, old generation as expected, they are the head of the table with that winner chicken dinner. 10 finish points, 10 placement points. They have total 20 points. Hashtag 2 for team Aquila Esports after the first game with total amount of 18 points. Hashtag 3 for Redline Esports with a total amount of 15 points. Hashtag 4 for Blaster X Sharda with 13 points. Last contenders, they're on 5th position with a total amount of 10 points. Coders 404, they're on 6th position with a total amount of 9 points. Team Valor with 7 points, they're on 7th position. T1 Esports with 7 points, they are on 8th position. 9mm Esports with total 6 points, they are on 9th position. W2R Esports, they are on 10th position with a total amount of 5 points. Borg Esports, they need to do better. Total amount of 4 points, they are on 11th position. Team Chaos, they're on 12th position with a total amount of 2 points. Overpower Esports, they're on 13th position with a total amount of 2. Avyukt Esports, just 1 point for them. Invincible Esports, 1 for them as well. And A7 Esports, they need to start well because last game was, a blunder for them. They didn't secure any point, 7-up. जी हाँ, जहाँ पर हमें इनिशियली यहाँ पर A7 Esports और T1 Esports के प्लेयर्स का एलिमिनेशन देखने को मिला था, लेकिन T1 Esports ने जाते जाते बहुत अच्छी फिनिशेस पॉइंट्स की वो यहाँ पर गेम प्ले दिखाई थी और उसी की बदौलत यहाँ पर उनके पास में काफ़ी अच्छे पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं और वहीं पर उन्होंने रिकॉल भी कर दिया था, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर शुरुआत देखने को मिलेगी। बट अब देखने की बारी है कि ओल्ड जेन जहाँ पर उन्होंने 20 पॉइंट्स के साथ में अपने लिए एक अच्छी यहाँ पर मैच को पिछले मैच में विनर करने के साथ में अपने अच्छे मैच को दिखाया था। लेकिन अब यहाँ पर चलिए जनता आपको सामने देखने को मिलेगा मैच नंबर 2 रैंगल का मुकाबला। आप लोग देख रहे हैं स्कोर कॉलेज कप दिल्ली एडिशन पावर्ड बाय ओप्पो स्टोरेज पार्टनर SanDisk। तो देखना पड़ेगा कि इस मुकाबले में कौन सी टीम विनर करने निकालती है। 9mm के प्लेयर से हम लोग देखेंगे यहाँ पर इस प्लेन पाथ को स्टार्ट होते हुए मिलिट्री बेस से स्टार्ट हुआ, वेस्टर्न एरियाज पे जाकर के हॉस्पिटल जॉर्ज पुल के नॉर्दर्न एज पे यहाँ पर एंड होते हुए देखने को मिलेगा। तो काफी इंटरेस्टिंग प्लेन पाथ है, जहां पर हम लोग देखेंगे मिलिट्री बेस नोवो रफनोय को बहुत अच्छी तरीके से फेवर करा प्लेन पाथ क्वारी फेरिपियर और आपको वहीं पर ही प्रीमॉक्स का रीजन भी काफी अच्छे तरीके से कुछ टीमों के द्वारा कॉन्कर होता हुआ नजर आएगा। घटका पे थोड़ी सी यहाँ पर आपको यहाँ पर व्हीकल्स की जरूरत पड़ सकती है क्योंकि आपको छोटे छोटे कंपाउंड देखने को मिलते हैं, लेकिन वहीं पे हॉस्पिटल जॉर्ज पुल वो बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे कवर अप होता हुआ देखने को मिलेगा टीम्स की तरफ से साइथर। लेकिन पोचिंग की हार्ट ऑफ रैंगल में बहुत कम टीमें उतरती हैं, जहां पे हम लोगों ने देखा है कि वो एक बेहतरीन ड्रॉप लोकेशन हो जाता है। लेकिन अब इस प्लेन पाथ के साथ में क्या कोई पोचिंकी में टीम जाने की कोशिश करेगी? I guess Team Valor, they are trying to access Pochinki regions, and yep, they'll need to collect vehicles as well, and maybe that southern region's garage will help them out for that. And no team is in the nearby areas of Pochinki, so it will be a very good process for Team Valor. They can easily collect vehicles and loot in Pochinki regions, and they will have their eyes on the first circle as well. Invincible Esports, they headed towards Nova Repno regions. Team T1 accessing Sosnoka military base. W2 are headed towards the bridge of military base. A huge split maintained by their side as well. But I can see multiple teams trying to access the northwestern regions, especially the Georgopol city, the containers. Maybe the big city will be accessed too. Some teams might try to head towards Sirti. In this game, 70 will be vacant, maybe school apartments as well. If we talk about Team Borg, they're trying to access Milta regions. And that's the primary drop location. And I'm not at all surprised here that Team Borg is heading towards Milta. But a huge drop clash. 9mm Esports, they'll be taking on Team A7. Team A7, last game was an absolute misery for them.
And on the back end areas, there is another team present. So it will be a triple threat fight for sure. And the first circle has been initiated, and sort of confusion for players because the Sosnoka military base island is present inside the circle. And same goes with School and Pachinki as well. The question rising for players here is whether the circle it will favor the southern regions of the Wrangle map or the main islands. But here we go, ladies and gentlemen. 9mm Esports looking forward to go for those finishes, for those frags. And I guess, well, ladies and gentlemen, we'll be starting this game again. This is absolutely natural. There was some technical issue and no need to worry for that. We will be back. But 7 yes. As we saw, 9mm Esports in this game as well, they started off very much aggressive. Maybe things didn't work out for them. And in upcoming game, what do you think? If things go this way as well, will A7 Esports, they will avoid this drop clash, or they will continue to go for drop clash against 9mm Esports and they will continue to access the Western City? देखिए, हमारा मानना यहाँ पर ये है कि A7 Esports को थोड़े से यहाँ पर ड्रॉप क्लैचेस को इग्नोर करना चाहिए, जहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ऑलरेडी उनके पास में कोई अंक है नहीं। तो अगर उनको यहाँ पर एक और मौका मिलता है, हमारा ये अगर मैच रीहोस्ट होता हुआ नजर आएगा, तो उनको यहाँ पर ड्रॉप क्लैश को इग्नोर ही करना चाहिए रहेगा और अपने यहाँ पर अगर कोशिश करें तो थोड़ा सा अलग यहाँ पर जा करके अपनी लूट के साथ में, बेहतर लूट के साथ में आगे एग्जीक्यूशन दिखाएं, तो फिर एक अच्छा यहाँ पर उनके तरफ से एक स्कोरिंग गेम देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से ट्रैप्ड थे, तो यहाँ पर वो दिक्कतें बना सकता है। लेकिन फिलहाल लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोग देख रहे हैं स्कोर कॉलेज कप दिल्ली एडिशन पावर्ड बाय ओप्पो एंड स्टोरेज पार्टनर WWE ब्लैक सैंडिस्क। तो हम लोग लेंगे यहाँ पे छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे आपके इसी मैच के साथ में दोबारा यहाँ पर कुछ ही देर में। Welcome back, ladies and gentlemen. This is SKOAR College Cup Delhi Edition Grand Finals, Day 1, powered by OPPO, along with our storage partners SanDisk and Digit. I'm Saidar, and again, I welcome you all along with my co-caster 7arm. The most awaited moment is here. We are about to start off with Erangel. I'm very much excited for this Erangel game. What about you, 7arm? देखिए, एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारा ये जैसा हमने बोला कि हर एक टीम यहाँ पे दावा करती है कि बहुत अच्छा हमारा रैंगल मैप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मैप देखने को मिलता है। तो फिर देखना पड़ेगा कि कौन सी बाकी टीम यहाँ पे फिर एवरेज कंटेंट निकाल करके अपने आप को बेहतरीन यहाँ पर साबित कर पाएगी। जहाँ पर हमारे सामने काफ़ी बड़ी बड़ी टीमें खेलती हुई नजर आ रही, काफ़ी बहुत ज़्यादा टफ यहाँ पे कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है इन सभी टीम्स के बीच में। जहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि पहली टीम ऑलरेडी हमें नजर आई है जिन्होंने बहुत प्यारा बिना बेंच कंटेंट निकाल दिया, विच इज़ ओल्ड जेन। बट अब देखने की बारी कि ओल्ड जेन को यहाँ पे टैकल कौन कर पाएगा, कौन सी टीम होगी जो उनसे यहाँ पर
#1 का खिताब छीन पाएगी इस दूसरे मुकाबले के खत्म होने के बाद में। लेकिन आपको अभी यहाँ पर 5 मौके नजर आ जाते हैं, तो ओल्ड जन को बार-बार यहाँ पे कोशिश करना पड़ेगा और बार-बार यहाँ पर बाकी टीम्स को कोशिश करना पड़ेगा कि ओल्ड जन के खिलाफ एक अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएं। फिलहाल W2R Esports ऐसी यहाँ पर कुछ टीमें देखने को मिल रही हैं जिनके पास में बहुत अच्छा यहाँ पर वो गेमिंग सेंस देखने को मिलता है। तो देखने की बारी है कि W2R Esports क्या आज के दिन में यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाएगी। आपको क्या लगता है कि यहाँ पर साइथर कौन-कौन सी टीमें होंगी जो इस पहले मैच में एक विक्ट्री की तरफ जा सकती हैं? Well, I'm hoping a lot from W2R Esports because their strength is Erangel. I mean, they're really good at it. The way they play, their play style really favors those winner-winner chicken dinners. So yeah, I believe W2R Esports, they might go forward for those winner-winner chicken dinner. My prediction is with them, but I guess 9mm Esports, they will go for a blast. 9mm Esports, they'll love to fight in the initial stages. So I guess 9mm Esports, they will get good amount of finishes, but getting that winner-winner chicken dinner is quite difficult because I don't know why in the initial stages they are quite relieved. They play really well. I don't think so. There is any kind of pressure on them, but as much as time they spend in the game, I guess the pressure starts increasing on them, and with that, they start making those series of mistakes, and they are not able to win games. So I believe they have the potential to win games, but 9mm Esports, just if they soak in that pressure, I believe that they might become the contender as well. जी हाँ, 9mm Esports के प्लेयर्स भी हैं और कुछ यहाँ पर आपको इनविंसिबल देखने को मिल जाते हैं, टीम वैलोर देखने को मिल जाते हैं और वहीं पर आपको और भी ज़्यादा बेहतरीन टीम देखने को मिलती है। एवन Esports, उन्होंने भी इस पिछले मुकाबले में काफ़ी अच्छा खेला था, जहाँ पर वो सर्वाइवल नहीं दिखा पाए थे। अगर सर्वाइवल दिखाते तो बहुत अच्छा और ज़्यादा उनका गेम प्ले हो जाता। 7 पॉइंट्स उन्होंने इनिशियली निकाल करके अपना एलिमिनेशन दिखाया तो काफ़ी अच्छी उनकी स्टार्टिंग देखने को मिली थी और वहीं पर आपको और भी ज़्यादा यहाँ पर बेहतरीन टीमें देखने को मिल जाती, लाइक ब्लास्टर एक्स शारदा, वो भी काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इवन रेड लाइन ने भी, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि उन्होंने और टीम वो ध्रुव और उनके प्लेयर्स के सामने, गाजा ओपी के सामने किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने उनको ट्रैप में फंसा करके उनको खत्म किया था। तो रेड लाइन Esports भी अपने ट्रैक पे कहीं पहले मुकाबले के साथ में आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वहीं पर टीम केओस ने उनको रोका था। तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर ये टीमें अब फिर से ट्रैक पे आ सकती है, अपने विनर फिनिश करने की तरफ जा सकती हैं। काफी इंटरेस्टिंग गेम देखने को मिलता है। टीम केओस, उनको और ज्यादा यहाँ पर अपने आप को फोकस दिखाना पड़ेगा इस गेम में। और वहीं पे टीम वेलोर, ये टीम आई गेस हमको लगता है कि शायद यहाँ पर एक विनर फिनिश करना आज के दिन में निकालने ही वाली है और जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रही है तो टीम वेलोर टॉप 5 के अंदर तो रहने ही वाली है उनकी इस परफॉर्मेंस के साथ में नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर वही कंसिस्टेंसी मेंटेन हो पाएगी नहीं हो पाएगी वो इस दूसरे मैच के साथ में नजर आएगा, क्योंकि पहला मैच तो उन्होंने बहुत अच्छे से खेला था। लास्ट कंटेंट यहाँ पर वेलोर के लिए मुसीबतें बनते हुए नजर आए थे, लेकिन सेकंड मैच में अगर टीम वेलोर ने एक बार फिर से कंसिस्टेंसी दिखाने की कोशिश की तो आप लिख के लीजिए साइथर के यहाँ पर 5 मैचेस में 4 मैचेस आने वाले ऐसे होंगे जहाँ पर टीम वेलोर टॉप 5, टॉप 6, मतलब टॉप 10 के अंदर ही आपको एंडिंग करते हुए नजर आएगी और एक अच्छे पॉइंट्स के साथ में यहाँ पर वो अपने गेम प्ले को दिखाएंगे। I wanted to criticize Team LC a bit, their last contenders, because they had the circle advantage, but they still lost that winner chicken dinner. So, what are they going to do if circle doesn't favor them? So this is concerning for them. But ladies and gentlemen, here we go. It's good. It's going to be match number 2 of the grand finals of SKOAR College Cup Delhi edition, powered by OPPO, along with our storage partner SanDisk. The flight path is here. The big eagle again in the sky, moving from Stalbert towards the southwestern regions of Sosnovoka military base. The flight path right now favoring the central regions of Erangel map, which will make it easy for the players to access the central region. But now it's difficult to head towards the western and the eastern edges, especially the Georgopol city, the Georgopol containers. These regions, it's very much difficult to be accessed. Maybe the players will grab vehicles and head towards these particular regions. Still no team is trying to access 70. That's a huge surprise for me. But I guess now Team Chaos, they're heading towards 70 regions. All right. Not at all surprising that was. Team LC, they're heading towards Kameshki. Meanwhile, if we talk about Team AKT, maybe they access Lipovka regions. Aquila Esports, maybe they're heading towards Lipovka as well. Invincible Esports, as usual, headed towards Yasnaya Polyana. A better flight path as compared to the last game, because last game, the flight path was absolute misery, was just favoring a particular region of Erangel map. But here, all the drop locations can be accessed except Novorepnoy, because it's too much far from the flight path. Maybe players, they will just grab vehicles and try to access Novorepnoy. The first circle is a concern here. The first circle, will it favor the central regions of Erangel or the southern regions of Erangel map? That's the question here. Team Borg, they're heading towards Milta, and a drop flash is expected because Old Generation, they're heading towards Milta too. And Old Generation, after winning the last game, they wanted to go for a slow start because they played so passive in that round, just secured 10 eliminations. And they wanted a slow start in this Erangel game as well, but unfortunately,
against Team Borg, they will be forcing them to initiate a fight in the initial stages. Meanwhile, Team 9mm, change in drop location, change in plans by their side, but Team A7 sort of following Team 9mm for now, and a similar circle, just like the last game, favoring Sosnoka military base and the central regions of Erangel map. Ash, with a revolver, can he make those connections? It will be a miracle for sure if he make those connections, but he couldn't do so, so it's fine now. He can just focus on his looting process. 9mm Esports, again, they were about to fight Team A7 in the initial stages, but that didn't happen. So now the process is pretty much simple for them. Just focus on the loot and then try to enter the circle because they're 300 meters away. And I guess players might go for those early rotations as well because Sosnoka military base is inside the circle, and there is a probability that the second circle might completely favor Sosnoka military base. And if that happens, there are only two ways to enter the circle: the Novorotnoy bridge and the military base bridge. If those two bridges are blocked, then you need to go for rotation. You need to go for some out-of-the-box rotations. You need to grab some hovercrafts as well. And that is very much risky and time-consuming as well. So I guess it will be best for teams to just go for advanced rotation, avoid looting process, just collect vehicles and start rotating, enter the circle first, enter the military base island first, and after that, you can focus on loot and fights at the same time. But you need to make an investment here. You need to enter the circle as soon as possible. And I guess Team 9mm Esports, they know it very well. 404, right beside them, looting in Rozok regions. There is a threat for Team 9mm. Team 404 might really close in and try to choose violence. But for now, the distance is safe there. And maybe Team 9mm Esports, they will retreat towards the save. So, as I said, Team Borg, they will be taking on Team Old Generation. Well, they forced Team Old Generation to initiate this fight in the initial stages. And Team Old Generation, did they face any casualty here? Because we started off with a total number of 16 teams and 64 players, I guess. And I guess one casualty has occurred. Maybe it's Old Generation who lost a player, because I can see only 3 players in the mini-map. El Humble Igel gets knocked out. Team AKT coming into action. Shadow taking down Ventox. Clasp knocking down Shadow there. Clasp immediately getting that confirmation. Humble Igel will be flushed out. Shadow will be flushed out. Last Rickshaw, not a really good start for them. Last round of game was not that great. And in this Erangel game as well, they didn't get a good start. But I guess they are playing 3-man. Old Generation didn't face any casualty here. They're just playing with 3 players in this game. The numbers disadvantage, but still trying to take this initiative. Halusa taking on Team Code 404. Yes, one casualty has been faced by Team 404 there. And Team Code 404. Even they didn't get a good start in this game. But Old Generation Utkarsh trying to get his hands on Aquila Esports carry. Aquila Esports safely maintaining that distance. And this is what I was talking about. Aquila Esports really heard me out there. Aquila Esports going for that early rotation. They know it, how crucial it is to enter the circle. It's always difficult. It's always exhausting. You need to put in 200% efforts when the circle is favoring the southern regions, when the circle is favoring the Sosnoka military base island. So much difficulty has been increased in this game. But what's going on here? My goodness, Spec took so much risk. Could have been taken down. Omen wasn't ready at all. Rahul barely surviving in 10 HPs. Rahul survives there. Spec is sort of trapped. But now Spec, he'll be following his teammates, and maybe he will make it to the safe zone as well. Team Borg needs to initiate this fight as soon as possible. Do they know that they have a numbers advantage factor here? If they do know that, they should push it. And Omen now just pinning down Mr. Joker. Still, Omen hasn't held fire. Maybe his position hasn't been revealed yet. Flexi. He was surrounded by players to overpower Esports. They were moving too closely. There was a threat for Flexi. He has some guts, doesn't he? This is a brave player for Team Old Generation. How open he is going in. There is a threat. Still, any team can go and move from this particular region, and Flexi might get caught off guard. But so much guts he has. Gutsy player Flexi going for that flank angle. It might just suppress Team Borg Esports in a small area. And if he sees any pixels there, if he finds any player in open, he has to make sure that he deals a spray and knocks that player down. Because he'll just get one chance. Once he is exposed, it's game over for him. Ladies and gentlemen, OPPO K13 Turbo Series, India's only smartphone with a cooling fan. It enhances your gaming. Do check out this phone. OPPO has
played a mastermind move here by putting in a phone, a rare phone with a cooling fan. I mean, that's unexpected, that's unreal, but OPPO has made it happen. But ladies and gentlemen, it's T1 Esports versus Overpowered Esports. Kanishk immediately gets knocked out. He pushed that fight. He pushed that fight too much. Kamlesh immediately humbles him, but Arrow knocking down OP Kamlesh. Arrow, he messed up really bad there. Arrow gets knocked out too. Immediately he gets flushed out. Now God, he'll be closing in. He'll be coming into action too. Immediately, Overpowered Esports, they're trying to save Kamlesh. God messes up there. Ashu, can he knock down God? God barely surviving in 10 HPs and he'll be taken down as well. And with this team T1, they are eliminated on 16th position. Well, Ashu gave a hell of a competition there to T1 God. Ashu was barely surviving in 10 HPs but still fought really hard there. Made it so much difficult for God to knock him down. Finally, Team T1, they are out of this game. Overpowered Esports securing those 4 eliminations and a really, really good start for them. There was a rotational clash with Team T1, but Overpowered Esports, they didn't mess up. 2 players did get knocked out, but that was a brilliant setup by Overpowered Esports. Get start means boost in confidence. Overpowered Esports, will they go deep inside the circle or they will just hold near these riverbanks? River shows. Maybe they will just hold near these river shows because there is a possibility that any team might breach Sosnoka military base through those rivers, through some hovercraft. Still no action in Milta. Lexi did close in. Still didn't find any angle on the players, on the opponents. Still waiting for pixels to get revealed. He's so much cautious. He's snaking in. Doesn't want to reveal his footsteps at all. He's still waiting for a chance. Invincible Esports. This is their moment. Invincible Esports. जी They are heading towards the circle as well. 7 welcome. जी हाँ, देखिए काफ़ी बेहतरीन आपको डिवाइस भी देखने को मिल रहा है और काफ़ी यहाँ पर बेहतरीन वो मैच देखने को मिल रहा है। तो जनता आपको देखने को मिलेगा टर्बो K13 टर्बो सीरीज पावर्ड बाई ओप्पो। काफ़ी यहाँ पर आपको बेहतरीन ये डिवाइस देखने को मिलता है, जहाँ पर आप अगर इसके प्रोसेसर की बात करें तो काफ़ी शानदार प्रोसेसर देखने को मिल रहा है। हाई स्पीड प्रोसेसर देखने को मिलता है आपको यहाँ पर। गेमिंग एंड हर एक चीज़ को यहाँ पर आप स्मूथली रन कर सकते हैं उस ओप्पो K13 टर्बो सीरीज़ में। तो आपको जल्द से जल्द अपने गेमिंग लाइफ में और एडिटिंग लाइफ में आपको कंसिडर करना चाहिए। आप यहाँ पे कंटेंट शूट भी काफ़ी प्रॉपर एक बेहतरीन यहाँ पे ग्राफिक्स के साथ में, वीडियो क्वालिटी के साथ में कर सकते हैं। लेकिन चलिए फिलहाल यहाँ पे बैक टू द गेम, जहाँ पे 15 टीमें अभी भी आपको स्टिल देखने को मिलेंगी। BE राहुल, ब्लास्टर एक्स शारदा के प्लेयर्स आपको फाइनली परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। एक खिलाड़ी को नॉकआउट किया है और कोशिश यहाँ पे करते हुए देखने को मिलेंगे। फ्लेक्सी गोज डाउन नाउ। मिस्टर जोकर एंड यहाँ पे ओल्ड जेन के उत्कर्ष देखने को मिलेंगे। ओल्ड जेन ये बड़ी गलती कर रहे हैं। पहले मुकाबले में विनर चिकन डेंट निकाला, उनका इतना ज्यादा मोराल हो गया कि यहाँ पर 3 खिलाड़ियों के साथ में नजर आ रहे हैं और सामने से ब्लास्टर एक शारदा की टीम को उन्होंने बहुत ज्यादा हल्के में ले लिया और यहाँ पर फ्लेक्सी डाउन हो चुके हैं। बचे मात्र 2 प्लेयर। मिस्टर जोकर एक बड़ा यहाँ पर वो फ्लैंक डालने की कोशिश कर रहे हैं। तोजी को स्पॉट करके डाउन कर सकते हैं, लेकिन तोजी वो भी टीपीपी लेकर के तैयार बैठे हैं। अभी भी यहाँ पे वो सरप्राइज दे सकते हैं, लेकिन फ्लेक्सी को रिवाइव देना, मौत से खेलना होगा। फ्लेक्सी यहाँ पे कंफर्म होते हुए राहुल के खेमे में वो किल जाते हुए, फिनिश जाते हुए, और वहीं पे देखिए तोजी भी अपना टीपीपी एंगल व्यू का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जोकर का एक पिक्सल यहां पे टोजी को मिलेगा। टोजी पूरी तरीके से कंफर्म करेंगे, लेकिन राहुल की पोजीशन क्या यहां पर जोकर को पता है? लॉन्ग रेंज के लिए मात्र वो पीपी बाइजन ही इनके पास में नजर आ रही है। वहीं पर आप ब्रावो को देखिए, ब्रावो की पूरी तरीके से पोजीशन कॉम्प्रोमाइज है। उत्कर्ष डाउन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नंबर्स का गेम है नहीं उनके पास में, तो ब्लास्टर एक्स शारदा के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर नहीं सकते। राहुल मेनवाइल इन्होंने अपनी टीम की ओर से ओपनिंग निकाल ली है, तो काफी यहाँ पर बढ़िया सा यहाँ पे मैच दोनों यहाँ पे कर दिया उन्होंने अपनी टीम के लिए। शुरुआत काफी अच्छी। ओ हो ओ मैन, एसएम बैकन के साथ में उन्होंने डाउन किया जोकर को, और एक आखिरी प्लेयर, एक आखिरी होप देखने को मिलेंगे बीएल के ब्लास्टर शारदा के खिलाड़ी, जो कि अभी भी यहाँ पे टीपीपी व्यू का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जोकर को वो यहाँ पर अब रिवाइव नहीं दे पाएंगे क्योंकि राहुल आगे जा चुके हैं। और देखते ही देखते टीसी फेथ वो भी यहां पर वो माफी चाहेंगे। यहाँ पे ये बॉग स्पोर्ट्स है
और ब्लास्टर एक शारदा के यहाँ पे जो सामने प्लेयर्स देखने को मिले थे वो यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आएगी। एक आखिरी इकलौता प्लेयर उनकी तरफ से देखने को मिलेगा और बी के प्लेयर्स जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके काफी इंटरेस्टिंग गेम प्ले दिखाते हुए, सॉरी यहाँ पे ब्लास्टर शारदा नहीं, बहुत कंफ्यूजन हो गया, सॉरी माफी चाहेंगे। यहाँ पर ओल्ड जन देखने को मिलेगी, ओल्ड जन का एक आखिरी प्लेयर उत्कर्ष। राइट नाउ ही इज इन ट्रबल, जहां पे जिस तरीके से बॉग स्पोर्ट्स अब उनको ढूंढने की कोशिश कर रही है, अगर वो हाथ में आते हैं तो फिर उनको अकेले पा करके पूरी तरीके से ये टीम खत्म करेगी। साइतर अभी देखिए कि ओमेन आगे बढ़ रहे हैं, उस प्लेयर की अभी तक पोजीशन को पता नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पर सरप्राइज उत्कर्ष किसी भी खिलाड़ी को दे पाएंगे? एक बेहतरीन मौका है उनके पास में जहां पे ओमेन को वो डाउन कर सकते थे, बाकी प्लेयर्स काफी डिस्टेंस में देखने को मिलेंगे, लेकिन उत्कर्ष भी अब अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं। उनके पास में मौका है कि एस्केप कर सकते हैं वो, Yeah. अगर यहाँ से ईस्टर्न साइड से निकलने की कोशिश करें तो निकल सकते हैं, लेकिन अभी देखिए इसी बीच यहाँ पे डायनामिक के प्लेयर्स भी देखने को मिलेंगे। 3 फिनिश उनके पास में, ओ बड़ी गलती यहाँ पर हो चुके हैं और हमला देखने को मिलेगा जाट की तरफ से टीम वेलोर। आज यहाँ पे नॉन स्टॉप गेम प्ले दिखा रही, जब भी आती है फाइट निकालने की कोशिश करती है 9mm के प्लेयर्स के साथ में। बड़ा कठिन मुकाबला, पहला नॉक मिल चुका, लेकिन जाट एक आखिरी प्लेयर खत्म हुए इस मुकाबले से। 9mm एक आखिरी फ्रैग निकाल करके अल्फा को नहीं बचा पाए, लेकिन जितना भी गेम प्ले दिखाया 4 फिनिशेस के साथ में 3 खिलाड़ी अभी भी जीवित देखने को मिलेंगे। एक बढ़िया सौदा था, एक खिलाड़ी के बदले 4 फिनिशेस को उन्होंने निकाला है। Yeah. Neither of Esports could have avoided this casualty. I mean, that was a surprise for them for sure, and I won't blame Alpha Yogoji for this. Hard luck. But Team Valor, we were expecting a great performance by their side, but just got one elimination and they get eliminated on 15th position. That is not at all satisfactory for them. And again, now they'll be focusing on the upcoming game because they messed up in this one, but they performed really well in the rondo, so they have a decent position on the points table, but the margin of error is very less because you just get one chance, and this is the last chance for Team Valor. From here onwards, they need to show ultimate consistency because there are teams here who perform so well that they just mess up in one game and rest other games they continue to make it to the top 2 or top 3. So if Team Valor, they want to find themselves at the head of the table, they need to maintain ultimate consistency. But Old Generation, this is the last thing they wanted. Old Generation, they're down to one man. Utkarsh is the last player surviving for them. Old Generation with that winner chicken dinner in the last game here with a very, very bad start, I must say. Old Generation sort of pushed that fight too much. Lexi did go for that flank angle, but couldn't get any openings there. And after that, it just kept getting worse for Team Old Generation. And now, Team Old Generation, Utkarsh, all eyes on him. See if he makes it to the circle or not. But second circle has been initiated, ladies and gentlemen, and I guess second circle went for a Southern Heart shift. That's the reason while Team Redline Esports, they're outside the circle. And what are they waiting for? Redline Esports should enter the circle. I don't think so there is any team blocking this circle. The question is, do Redline Esports know about this fact? But Team AKT versus Team Borg. On the back end areas, we can see Old Generation Utkarsh as well. He might go for the third party. And I'm surprised that Old Generation Utkarsh didn't really fall back and head towards the safe zone. He still wants revenge, and these regions are still present inside the circle. That means both these teams will take their full time. But immediately, Bravo, he invades that property. Wintox will be taken down. Team AKT faces a casualty. Wintox was trying to scout, I guess. That's the reason why he's so much separated from his teammates. But what about Utkarsh? The players were in open areas. Utkarsh had an angle on them, but didn't really open his fire and still patiently waiting inside that house. What is he waiting for? And now Team AKT might look forward to go for that retaliation. It's very difficult. It's very difficult to make connections from here. It's really difficult to make those openings from here. And even if Team AKT creates some openings, information will be difficult. And if they reach that property, I guess Team Borg will successfully, execute those revivals. So there is no point of initiating this fight. Team AKT must head towards the circle bit because time is slipping out of their hands, 7-arm. जी हाँ, टाइम यहाँ पर आपको गुजरते हुए और धीरे धीरे करके प्लेयर सर्कल के अंदर भी जाते हुए W2R Esports के प्लेयर्स ने अभी तक फिलहाल के लिए कोई भी ओपनिंग निकाली नहीं है, लेकिन इनकी इर्द गिर्द जिस तरीके से ओवर पावर्ड के प्लेयर्स नजर आएंगे रोटेशन के साथ में वो रुक चुके हैं और भागने की कोशिश कर रहे हैं। W2R घात लगा करके बैठी है, जैसे यहाँ पर ओपी के प्लेयर्स कोई गलती करेंगे तो बड़ा झटका उनको मिल सकता है, बड़ा झटका उनकी तरफ से यहाँ पर लग सकता है। लेकिन वहीं पर आप देखिए आशु काफ़ी क्लोज, अभी तक उनको पता नहीं है आई गेस कि W2R वहाँ पे मौजूद है।
आदि की पोजीशन काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन रहेगी, जहाँ पर वो अपने हाइट के एडवांटेज के साथ में पूरे हर एक ओवर पावर्ड के प्लेयर्स को स्पॉट कर सकते हैं। गोलियाँ चली हैं और ओवर पावर्ड को ही पता चल चुका है कि आपको W2R के आदि वहाँ पर नज़र आएँगे, तो इतनी आसानी से आप आगे बढ़ नहीं पाएँगे। लेकिन वहीं पे आशु, चलिए बहुत बढ़िया तरीके से अपने आप को उन्होंने उस पोजीशन से बचाया है। व्हीकल यहाँ पर ज़रूर डैमेज हो चुकी है, लेकिन अपने प्राण को बचा लिया, वही एक अच्छी बात है। 14 टीम 45 प्लेयर्स आपको देखने को मिलेंगे। स्टेज 2 का सर्कल है, 27 सेकंड बाद फिर से ये जोन करवट लेता हुआ नजर आएगा और ओवर पावर्ड के प्लेयर 4 फिनिशर्स निकाल चुके हैं। अच्छी बात यह है कि W2R से उन्होंने फोर्सली फाइट नहीं लेने की कोशिश की नहीं। पता था कि वहां पे प्लेयर्स मौजूद है, लेकिन सेफ गेम प्ले दिखाने की कोशिश कर। लेकिन ओल्ड जेन के उत्कर्ष फाइनली मिल्टा के कंपाउंड्स में बाहर निकले, वार किया और राहुल को यहां पर पनिश करते हुए नजर आए हैं। क्या वो यहां पर अपने उस फिनिश को कंफर्म कर पाएंगे? आई गेस हाँ। देखिए यहाँ पे सर्कल के अंदर मौजूद है और राहुल यहाँ पर जिस तरीके से पकड़े गए हैं, उनके प्लेयर्स माइट बी पॉसिबल कि वो रिवाइव नहीं दे पाएंगे, लेकिन वहीं पे ब्रिज कैंप की सिचुएशन हो सकती है। टीम केओस के पास में एक अच्छा मौका है, वो ब्रिज कैंप पे यहाँ पर नजर आएंगे तो फिर 2 से 3 टीम्स के यहाँ पर टीम्स को हंट डाउन कर सकते हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पे ओवर पावर्ड कमलेश वो निकलते हुए 4 फिनिशेस। टीम ओवर पावर्ड बहुत अच्छा खेल रही है। अभी तक उनके कोई भी यहाँ पर प्लेयर खत्म हुए नहीं है विदाउट फेसिंग यानी कैजुअलिटी। अपने गेम प्ले को बहुत स्मूथली रन करा रहे हैं। लेकिन सामने देखिए इनविंसिबल के प्लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर यहाँ पर फाइट हुई तो फिर इनविंसिबल से फाइट निकालना डिफिकल्ट हो सकता है। ओवर पावर्ड और इनविंसिबल दोनों के पास में बराबर का वो कैलिबर है और दोनों ही टीमें काफी अच्छी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर साइथर और ओल्ड जेन उत्कर्ष फाइनली वो कंफर्म हुए और ओल्ड जेन का खात्मा 14th पोजीशन पे होता हुआ। Oh, that's really sad. Old generation, after getting that winner chicken in at this game, that was absolute misery. They get nothing. Old generation on 15th position, all their hard work just goes in vain just like that. So sad. But they have more chances after this. It will be match number 3. Again, it will be a wrangle. Old generation will try to avoid those gunfights and drop clashes in the initial stages. And most important part is they will try to play with 4 players. Because in this game, they were playing with 3 players, which is not at all a good signal because you're playing grand finals, you need all your players to be a part of it. So yes, old generation in the upcoming game, they will be focusing on playing with all their players. Yathart, brilliant tracing by his side. Ash gets knocked out. It's going to be 9mm versus Team Redline Esports. Yathart immediately he'll be moving forward to go for that confirmation, but he has to be very much careful because Ash will be getting cover from his teammates as well. Didn't get that confirmation, and Yathart gets knocked out. Team RL with a blunder, I must say. But Akshat, can he save his teammate from this particular position? Alusa in open areas, and Akshat won't make a mistake there. Alusa gets knocked out. Dustin OG just avoiding this fight. Oh, and I guess Dustin OG gets knocked out as well, and it's 9mm they are out of this game. 9mm gets eliminated on 13th position. That was unbelievable. Redline Esports with absolute ease eliminates 9mm on 13th position. That was a brilliant tracing as well. Team RL now successfully they can cross the bridge. They are 1700 meters away from the circle. They have to move now. This is the moment. Equila Esports meanwhile playing very passively. They have a really good position inside the circle. Even Invincible Esports has a very good position inside the circle. They have height advantage. Invincible Esports must fetch out huge amount of profit. And I guess the end circle might really favor Invincible Esports. They might not need to move a lot because circle might form in their neighborhood regions. Equila Esports, no finish has been secured yet. They're fighting team of Chaos. Back in areas, it's AKT Mayank. Only Mayank I can see near the Nova Repnoy regions. Did all the players make it to the Nova Repnoy or just Mayank it is? Let's hope for the best. But B Toji on the other end taking down A7 Dethi. Now again A7 facing difficulties. Meanwhile, Invincible Esports trying to cut off the rotation of Team Chaos. Fade, I guess the back tire of his vehicle has been damaged there. That's the reason why he has been trapped there in open areas. He'll be needing some assistance there, some guidance. A lift will be needed there. Who will dare? Who will dare to give that lift to Fade? I guess Noob is going in. This is friendship. Pure example of friendship. On the other end, A7 30 he'll be finished off. A7 Esports facing a casualty. Noob couldn't pick up Fate. Now he'll do that. Still some issues are going on there. But finally, Fate now sits in that vehicle. That vehicle has been completely damaged. This could have been executed more
brilliantly, more in a better way. But I guess Team Chaos Fate took too much time there to sit inside that vehicle, and all these small things matters a lot. And now this vehicle, and almost Team Chaos, they sacrificed a vehicle to save Fate there. Now two of their vehicles are completely damaged. Future is vehicle here. You'll be needing these vehicles for future to make your way inside the circle, even form those covers inside the circle, because the way circle is forming right now, it's completely open. This is most of the time we see in Erangel. Circle forms in open areas. You need vehicles for the end circle. And now, time to collect vehicle is all gone. Team Chaos, they might really move the same vehicles. They might share vehicles, and this is where the threat increases. Kill switch and Noob moving with just one vehicle, and that vehicle has been smoked out. And where will they go? And now the flames coming out of that vehicle. The end is near. Will they make it to the safe zone? He got a sweet spot inside the circle. That shack could have been useful for Team Chaos, but they're still extending. And finally they make it to the safe zone. Team Borgomen taking down Master. 1 by 1 A7 Esports. They are losing players. Things are getting much more concerning for A7 Esports here, 7 up. काफी बेहतरीन टीमें फाइट करते हुए नजर आ रही। 11 टीमें बची और 37 प्लेयर्स हमें देखने को मिलेंगे राइट नाउ। लास्ट कंटेंट यहाँ पर आपको टीम केओस के प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, जिनके पास में मौका तो काफ़ी अच्छा है। नंबर्स का गेम भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन सामने जो आपको टीम देखने को मिलेगी, इनके अगेंस्ट में दोनों डायरेक्शन से आपको कहीं हमला देखने को मिल सकता है। एक तरफ आपको देखने को मिलेगी ओवर पावर्ड के प्लेयर्स, वहीं पर हाइट के एडवांटेज के साथ में आपको टावर की तरफ से देखने को मिल जाएंगे, रेडियो टावर की तरफ से इनविंसिबल के प्लेयर्स। काफी इंटरेस्टिंग ये सिचुएशन है। टीम के के प्लेयर्स अगर उनको पता नहीं है तो फिर गांजा ओपी वार्निंग जरूर देने वाले, लेकिन पोजीशन को यहाँ पे अपने चेंज करते हुए W2R इसी बीच यहाँ पे ओवर पावर्ड को यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करेंगे। ओह माय गॉड, W2R अनस्टॉपेबल, एक के बाद एक नॉक निकालेंगे। ओवर पावर्ड को पूरी तरीके से झंझोड़ करके रख दिया है। एक आखिरी प्लेयर यहाँ पर उनका भी देखने को मिलेगा ओवर पावर्ड का, जो कि अपने टीममेट्स को बचाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन फा हैज कंफर्म नाउ। जहां पर अब बचे मात्र 3 खिलाड़ी। ओवर पावर्ड क्या इस सदमे के साथ में यहां पे संभाल पाएगी, अपने आप को संभाल पाएगी? 2 फिनिशेस को कंफर्म कर चुकी है W2R, और ओवर पावर्ड के लिए सबसे बड़ा झटका। लेकिन इसी बीच हमने लास्ट कंटेनर का एक बार नाम लिया था, वो गलती से यहां पर आ चुका था, लेकिन लास्ट कंटेनर बोलेंगे कि भाई गलती नहीं थी वो आपकी, यहां पर वो एक कहीं ना कहीं वो हमने टाइमिंग सेट कर दी है, जहां पे लास्ट कंटेनर के प्लेयर्स भी फाइट निकालने की कोशिश करेंगे। टीम एक्वला देखने को मिलेगी, अभी तक कोई फिनिशर के पास मौजूद नहीं, लेकिन ओवर पावर्ड के प्लेयर्स को स्पॉट करके रखा है। आशु यहां पे डाउन हो सकते, 1 HP के मेहमान नवाजी यहां पर नोवोजॉट की तरफ से, लेकिन अपनी पोजीशन को कॉम्प्रोमाइज कर चुके W2R के अगेंस्ट में। क्या W2R यहां पर नोवोजॉट को स्पॉट करके उनकी तरफ हमला कर पाएगी? लेकिन नोवोजॉट भी उतनी तरीके से तैयार, उतनी बेहतरीन यहां पर गन के साथ में M4+4X के साथ में तैयार, और पीछे से यहां पर उनके खिलाड़ी भी मौजूद हैं। अगर W2R वहां पर नोवोजॉट से फाइट लेने के लिए रुक जाते तो दिक्कत हो जाती, लेकिन खैर चलिए, फिलहाल W2R के पास में काफी अच्छी व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। होवरक्राफ्ट यहां पर वो सबसे बड़ा व्हीकल देखने को मिलता है BGMI का, जिसके सामने जिसकी एचपी भी बहुत ज्यादा और जिसके सामने सारी व्हीकल्स यहां पे रुक जाती हैं। और अभी होवरक्राफ्ट के साथ में W2R अपना परफॉर्मेंस दिखाते हुए, लेकिन वॉट एक्विला की स्पेक खुद ही गिर के नॉक हो जाते हैं। तो रिवाइव तो यहां पर उनको देने के लिए तैयार है खिलाड़ी, लेकिन आपको ऐसी गलतियों से बचना पड़ेगा। अगर यहां पर देखिए कोडा 404 की पोजीशन देखिए प्रॉपर है साइथर, अगर वो हमला करने को आए तो यहाँ पे इस नॉक प्लेयर को तुरंत खत्म कर सकते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है। एलसी रग्नारॉक किसी बीच यहाँ पर वो भी एक बढ़िया फ्रैग निकालेंगे अपनी टीम के लिए। बीई के ब्रावो यहाँ पर एक और यहाँ पर वाइटल यहाँ पर इंपॉर्टेंट नॉक निकालेंगे, फिनिश भी निकालने की कोशिश करेंगे। विकी गोज डाउन, स्टार्क एज वेल, WTR स्टिल इन एक्शन, जहां पर कुछ प्लेयर्स को उन्होंने बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट किया, और फिर से यहाँ पे कुछ प्लेयर मतलब रग्नारॉक को कंफर्म करते हुए W2R अनस्टॉपेबल, जहां जा रहे वो छापा मार युद्ध की नीति का इस्तेमाल कर रहे हैं, हर एक प्लेयर को बहुत ज्यादा दिक्कतें बना रहे। बट व्हाट गांजोपी, उनके पास में बड़ा मौका, एक नीड और सामने वाले यहाँ पे 3 खिलाड़ियों को डाउन कर सकते हैं। लेकिन टीम एक्विला नोवोजॉट ये 1+3 के स्प्लिट में जिस तरीके से खेला जा रहा है, काफी बढ़िया गेम देखने को मिलेगा टीम एक्विला का। नोवोजॉट ने ऑलरेडी 2 फिनिशर निकाल ली और अभी अपनी टीम की ओर से जिद्दोजहद करते हुए नजर आएंगे, लेकिन इस पे गोस डाउन, रिवाइवल की जरूरत है। इनविंसिबल के खिलाड़ी उदित ओपी एक बढ़िया कनेक्शन बनाएंगे, फेथ को डाउन किया गया, नूब कंफर्म हो चुके हैं, और वहीं पर इनविंसिबल के डेंजर आगे बढ़ेंगे। टीम के ओस, ओह माय गुडनेस, टीम के ओस कहां थी, कहां पहुंच गई? सभी खिलाड़ियों की पेटी बन चुकी है साइथर यहां पर अब। No way. Team Chaos,
will be getting eliminated on 6th position. Invincible Esports made no mistake in this fight. They had a height advantage. They had all control over this fight. And they didn't mess up. Well, Invincible Esports showing their true colors now. They make it to the top 5. Aquila Esports still standing tall. And I guess Aquila Esports, they might challenge Team Invincible Esports. Morg goes for that spray. Gets damaged too. Or that will be immediately shutted out. Morg now, can he make those connection with that S12K? Immediately Aquila Esports, they are trying to close on that distance. Or that makes those short connection, but Spec, my goodness, that was savage. Bullet gets knocked out, Ganja gets knocked out, 2 players are down, Invincible Esports, they are trembling. Novachot gets knocked out. Oh no! Dhruv takes down the last player and within a fraction of a second, Aquila Esports, they are eliminated on 5th position. Unreal stuff there by Team Invincible Esports. What a comeback they made. 2 players got knocked out in the very beginning of this fight, but they still made a comeback. And Aquila Esports, they just cannot believe this. Ecstasy for Invincible Esports. Agony for Aquila as they get eliminated on 5th position. And now it's 4 teams and 10 players. Invincible Esports, they still have that numbers advantage factor with them. Ganja immediately makes it to the circle. Redline Esports, they are still hanging in. W2R Esports, you cannot count them out. They love Erangel and they perform well in Erangel too. But Dhruv, outstanding that spray was. Bruiser gets knocked out. But I guess Kyanj, he will easily revive his teammate Bruiser there. And after that, W2R Esports will make their way to the circle as well. Ganja, he isn't doing anything extra. He just have to patiently sit there. He won't really allow Redline Esports to enter the circle. And now it's time for Redline Esports to show their skills, to show their reflexes, how sharp they are. Because this is a do-or-die situation. After playing so well, after working so hard, when they are so close to win this game, you cannot just mess it up. You cannot let this go. You cannot let this slip away. Yatharth, he knows that Ganja OP just blocking the circle of Redline Esports. And maybe Redline Esports, they will just change the direction of their rotation. Oh no, they are straight away heading towards Team Invincible Esports. Ladies and gentlemen, get ready for this fight. Ganja immediately knocking down Yatharth. Vayu's the only player who closed in, but he falls down there. And why are you getting knocked out? Anmol is the last ray of hope now for Redline Esports. The blue zone is closing into, and Redline Esports on the verge to get eliminated from this game. And no team is going for that third party. W2R Bruiser taking down Bravo. Broad Esports, they'll be getting eliminated on 4th position. Danger. Now throwing those grenades on W2R. Krish with that spray through the smoke, knocking down Yatharth. And meanwhile, Redline Esports, they are being punished by W2. They are being punished by Team Invincible Esports. Bruiser knocking down Invincible. Danger. Retaliation coming in from Team W2R side. Danger. He will be sent back to the lobby. Invincible Esports, they are down to 2 men. Redline Esports, they are still hanging in as Anmol is the solo player surviving for them. The way W2R Esports, they control this game is absolutely phenomenal. And now they need to finish this game in style. Continuously, they'll be attempting those grenades. And Anmol, he revives his teammate there. But again, Krish, through the smokes, targets Anmol there. Finds those connections. Anmol lacking with his HPs. Redline Esports doesn't have much area. And Kyanj now with that opening created. Ganja gets knocked out. Fish gets knocked out. Yatharth with this fabulous retaliation there. But W2R Esports, they are not at all in a state of worry. Invincible Esports, they have the circle advantage as Dhruv is the only ray of hope surviving. And he's present inside the circle very quietly. Just sitting there. Just waiting for his opponents to enter the circle. He doesn't have to really worry about finishes here. If he gets that winner chicken dinner, he'll be straight away getting 10 extra points for his team. And that should be the sole focus of TB Dhruvia. Redline Esports dodging all those bullets and making it to the circle with style. Anmol has entered the circle now. Yatharth, time for him to make it to the circle too and support his teammate. But W2R Esports, they're about to explode on Invincible Esports. Oh, it's a surprise from Dhruv's side. Dhruv will be taken down. No player got knocked out here. It's a 2v3 fight. W2R Esports, they have the numbers advantage. Kyanj moving ahead. That grenade was right on money. Look at the HP of Krish. He was about to get knocked out there. But he will be surviving that grenade. W2R Esports, they are still tall here. They are still 3-man strong. Another grenade came. Worries for Kyanj there. He got affected because of the splinters of that grenade, but didn't get knocked out. Another grenade by Anmol here. Bruiser this time gets very low because of the grenade, but still survives. And Anmol won't stop. He's continuously prioritizing those utilities. But W2R Esports, they are very smart.
at dodging those grenades. And now it's all about patience. Oh, grenade was right on money. Bruiser, you beauty. Redline Esports now. Yatot is the last player surviving. And I guess W2R Esports, they will get this job done with those grenades. Trish with that flank angle. And it's a checkmate for Yatot. It is all over. W2R Esports stole the show. W2R Esports with a phenomenal winner chicken in a 7-up. What a match! जिस तरीके से W2R खेली है, देखिए इस टीम का इसलिए ही नाम लिया था हमने, शुरुआत से ही हमने आपको बोला था साइथर कि ये W2R है, और आज के दिन में जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं वो एक बड़ा यहाँ पर गेम प्ले दिखाएंगे और W2R ने फाइनली आज के दिन में दूसरा यहाँ पर मतलब दूसरे मैच में विनर चिकन निकाल लिया है। उनका पहला विनर चिकन देखने को मिल रहा है। बहुत प्यारा डे 1 के ग्रैंड फाइनल्स में इस तरीके के यहाँ पे मैचेस आपको चाहिए ही चाहिए रहते हैं। एंड फाइनली हम लोग देखेंगे W2R अपनी विक्ट्री क्लेम कर चुके हैं। अभी भी यहाँ पर उनके पास में 4 मौके नजर आएंगे। अगर एक और चिकन निकाल लेते हैं W2R तो फिर क्या बात है, फिर कहीं यहाँ पर जो ओल्ड जेन के प्लेयर्स हैं उनके साथ में कहीं एक इनका टफ कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा ओवरऑल रैंकिंग में, जहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे हमें हर एक टीम आती हुई नजर आ रही है। W2R ने भी एक चिकन निकाल लिया, ओल्ड जेन के प्लेयर से चिकन निकाल लिया है, तो देखना है कि क्या वो रिपीटेबल चिकन निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए W2R कांग्रेचुलेशंस। जहां पर दूसरा मैच का भी ये चिकनर आ चुका है, तो अभी भी यहाँ पर 2 रैंकल बैक टू बैक और नजर आएंगे। क्या W2R एक और विनर प्रेज करने के साथ नजर आएगी साइथर, एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल बाकी टीमों से भी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर हम लोग रखेंगे, क्योंकि 4 मैचेस है उनको भी 4 मुकाबले मिलने वाले हैं, और इनविजिबल जैसी टीम्स है जो कि काफी अच्छा उन्होंने भी परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश की है। और हम लोगों ने बाकी और टीम को भी देखा है, ओवर पावर थोड़ा सा लैक हो गए थे इस मुकाबले में, जिनका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। पूरी टीम यहाँ पे एलिमिनेशन होती हुई नजर आई, एक के बाद एक यहाँ पे उनके खिलाड़ी डोमिनेट होते हुए नजर आए। और वहीं पर हम लोगों ने देखा था कि एक्विला जो एक बड़े परफॉर्मेंस के साथ में नजर आ रही है, लेकिन उनके प्लेयर्स थोड़ी सी गलती ये हो रही है कि वो स्प्लिट में ज्यादा खेल रहे हैं। उनको मतलब एक साथ यहाँ पे मिल करके खेलना पड़ेगा, या तो फिर 2+2 के स्प्लिट में खेलें, एक साथ खेलें, ताकि एक प्लेयर नॉक हो तो दूसरे प्लेयर के थ्रू रिवाइवल उनको मिल जाए। Absolutely. Well, I totally agree with you, 7arm. And I would love to see Aquila Esports playing well, and I would love to see them making a comeback in match number 3. Their strength is Erangel. Let's see what they do in the match number 3. W2R Esports will be standing in their way. Old generation, they will be standing in their way, as old generation will be looking forward to make a comeback. Well, ladies and gentlemen, it's time for a short break. We'll be right back after a short break with live action. Till then, make sure to hit that like and that subscribe button. Stay tuned.
वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। हम लोग देख रहे हैं स्कोर कॉलेज कप दिल्ली एडिशन पावर्ड बाय ओप्पो स्टोरेज पार्टनर सैंडिस। तो हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से यहाँ पर आपको दो मुकाबले दिखा दिए और अब हमारे सामने एक और यहाँ पर रैंगल की शुरुआत होने वाली। काफी इंटरेस्टिंग गेम देखने को मिल रहा है। हर मुकाबले में आपको अलग अलग टीम देखने को मिलती है, जहाँ पे W2R ने भी बेहतरीन विनर निकाल दिया। और शुरुआत हम लोगों ने देखी थी कि जिस तरीके से यहाँ पर आपको एक बढ़िया टीम ओल्ड के प्लेयर्स ने गेम प्ले दिखाते हुए अपनी उस राउंड के मैप में शुरुआत की थी। काफी इंटरेस्टिंग आपको हर एक मैच हर एक दिन देखने को मिल रहा है साइतर। तो अब यहाँ पर हमारे सामने तीसरा मुकाबला देखने को मिलेगा, दूसरा आज का रैंगल देखने को मिलेगा। तो कैसी एक्सपेक्टेशन देंगे आपको इस रैंगल के मुकाबले से? Well, I'm expecting a lot from old generation, first of all, because old generation, they played really well in the Rondo and they fumbled in the first Wrangle game. Now it's second Wrangle, which will be third game of the grand finals, first day of the grand finals. So yes, they desperately need to perform well in this Wrangle game. W2R Esports, I mean, they're just incredible. They love Wrangle, and I guess again, consecutive winner chicken dinners I'm expecting from their side as well. Aquila Esports, they are managing to keep up. They are maintaining consistency. Rondo was great for them. Wrangle was great for them again. Maybe in this game as well, they will start climbing up and they will try to close in the distance with #1. Maybe this time #2, #3. Maybe this time they go for the winner chicken dinner as well. So uncertainty is on peak. It is very much difficult to predict one name which will get that winner chicken dinner. I mean, there are multiple teams running in that race. The way teams are performing right now, it's so much uncertain, it's so much unpredictable to take one name. But here we go, ladies and gentlemen. Match number 3 of SKOAR College Cup Delhi Edition Grand Finals. Flight path initiating from 7E and finishing off towards Primorsk region, favoring the western regions of Wrangle map. And it will be easy to access the western regions of Wrangle map. Complete western edge of a Wrangle map can be easily accessed. But on the other hand, if you talk about the eastern region, a blind spot has been created due to which accessing Kamishki, Lipov, Kamal, Tapar, and Overupno, it will be very much difficult for players. Central region might become a hotspot because the teams who usually access the eastern edge might go for the secondary drop location and they might try to access the central regions of a Wrangle map. Similarly, if you talk about the southern edge, Sosnoka military base, we usually see T1 Esports heading towards Sosnoka military base, but now they might really need to head towards the secondary drop location. जी हाँ, बहुत ही यहाँ पे बेहतरीन तरीके से 70 से ये प्री बॉक्स की तरफ प्लेन पास जाते हुए जहाँ पर हर एक टीम पे जाने की कोशिश कर रही थी कि यास्टर पुराना आपको बहुत अच्छी तरीके से वो एक ड्रॉप लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर अप्रॉक्स 2 टीमें आपको वहाँ पर अप्रोच डालने की कोशिश करते हुए नजर आएंगी। लेकिन पहला सर्कल आपको पोचिंग की हार्ट ऑफ रैंगल यहाँ पर सर्कल के अंदर देखने को मिलेगा। फार्म स्प्लिट अगर कोई टीम खेलना चाहेगी तो वो भी सर्कल के अंदर देखने को मिलेगी। बोट यार्ड, स्कूल एंड स्कूल अपार्ट्स, रूइंस जैसे एरिया आपको सर्कल के अंदर देखने को मिलेंगे। खटका नजर आएगा, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर एक पेन रहेगा जो कि हमारा मिलिट्री बेस ऑफ फेरी पियर की मिड का ये जो ब्रिज है, वहां पर आपको उसके अराउंड में अगर कोई टीम खेलती हुई नजर आई तो उनके लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। और अगर सर्कल उधरी आपको यहाँ पर आने वाले यहाँ पे 3 से 4 सर्कल आपको उसी साइड देखने को मिले तो फिर बहुत ज्यादा वो फाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी हर एक टीम के लिए। और स्पेशली मिलिट्री बेस में अगर कोई टीम जाने की कोशिश कर रही है तो उनके लिए चैलेंजिंग मोमेंट होगा कि वो कैसे इस सर्कल को टैकल करेंगे। मीनवाइल जॉर्ज पोल 3 टीम्स का वहां पे घर बनते हुए और तीनों टीम्स अपने यहां पर गेम प्ले को दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन वहीं पे देखिए W2R क्रिश चलिए फाइनली यहां पर होवरक्राफ्ट के साथ में अपने आप को सेफर साइड में लेकर के उन टीम से हटने की कोशिश करेंगे और एक अच्छा डिसीजन रहेगा। अगर वहीं पर आपको प्रीमॉक्स में ये क्रिश आगे जाते हुए देखने को मिलते तो फिर दिक्कतें हो सकती थी। होवरक्राफ्ट लेकर के तुरंत के तुरंत चलते बनते हुए नजर आएंगे। Well, on the other hand, AKT Esports, they lost 2 players, I guess. AKT Esports with a bad start. AKT Esports, they are fighting Invincible Esports. Mr. Choco on the other end taking down Mayank. Did AKT Esports get eliminated from this game? That's the question here. I don't think so. They're still hanging in. Only 2 players are surviving for now. AKT Esports, they are moving around the Yasnaya Polyana regions. And they're too much stubborn. I mean, they are not falling back. They are not heading towards the safe zone. They're still entering the Yasnaya Polyana regions. And they are very close to Invincible Esports. I mean, things can go south for them. They've already lost 2 players. Even Invincible Esports, they've lost Dhruv. So bad start for Invincible Esports as well. And meanwhile, as you were saying in Georgopol regions, there are 2 teams fighting. 9mm Esports, they're fighting A7. And on the back end areas, that was scored 4-4. It was all set to go for that third party. But now, that's a question. Will A7 initiate that fight with 9mm? जी हाँ, इस तरीके से परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। देखिए, हर एक टीम अपना यहाँ पे पूरा कैलिबर दिखाने की कोशिश कर रही है। एक बड़ा यहाँ पे मुकाबला है। आपको दूसरा रैंगल आज के दिन के देखने को मिलेगा। इनविंसिबल के प्लेयर्स बहुत ऐसी बेहतरीन टीम है, जिनकी तरफ से हम लोग एक चिकन एक्सपेक्टेशंस लगा करके बैठे हैं।
लेकिन वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि 16 टीमें, 57 प्लेयर्स और इसी बीच यहाँ पर टीम वैल्योर के लिए भी इस फाइट को निकालना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि उनकी जो सामने वाली टीम है, उनके 2 प्लेयर्स को डाउन कर चुकी है और इनविजिबल के प्लेयर्स ने भी 1 खिलाड़ी को अपने गँवा दिया है। तो डिफिकल्टीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आएँगी। 3 खिलाड़ी के साथ में इनविजिबल किस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा पाएगी, ये थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा इनके लिए सवाल। लेकिन दे आर ट्राइंग। जहाँ पर पहला फिनिश ऑलरेडी इनके पास में है, ध्रुव यहाँ पे डाउन हो चुके हैं। आस-पास इनकी एक टीम देखने को मिलेगी जिससे इनको फाइट निकालनी है। यासना पुराना का रीज़न इतना आसान रहता नहीं है जैसा हम लोग देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे अपार्ट्स से बहुत सारी टीमों का यहाँ पर वो एक घर बन जाता है और एक-एक करके प्लेयर किसी भी टीम से यहाँ पर बाहर जा सकते हैं। लेकिन इनविजिबल अभी भी 3 खिलाड़ी के साथ टिकी है। डेंजर आपको देखने को मिलेंगे ओपन एरियाज़ पर हॉवर करते हुए, ताकि अपनी टीम के लिए कुछ अच्छे यहाँ पर हेलमेट और कुछ अपने लिए यहाँ पर हेलमेट वेस्ट यहाँ पर उठा सके, ताकि अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखाएँ, अपनी टीम में कंट्रीब्यूशन बनाएँ। लेकिन इसी बीच यहाँ पे देखिए ए7 स्पोर्ट्स और उनके सामने 9 एमएम के प्लेयर्स देखने को मिलेंगे। ये मुकाबला इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों के पास ही सेम कैलिबर देखने को मिलता है, दोनों के पास में सेम पावर देखने को मिलती है। अब देखना पड़ेगा कि कौन यहाँ पे बनेगा एक शहंशाह और कौन बनेगा यहाँ पर सामने वाला एक जो एक होता है कि यहाँ पे दास, क्योंकि दोनों टीमें एक दूसरे के ऊपर निगाहें बना करके रखी हैं। 4 हाउसेस में पूरी तरीके से 7 ए7 एरिस के प्लेयर्स को रोक दिया गया है और वहीं पर आपको अपार्ट्स पे देखने को मिलेंगे 2 खिलाड़ी 9 एमएम के। ऑन द अदर साइड आपको ऐश देखने को मिलेंगे, ऐश 110 जिन्होंने घेराबंदी लगा दी है। ए7 स्पोर्ट्स जैसी मूवमेंट डालने की कोशिश करेंगे, फिर ऐश भी यहाँ पे रिटेलिएशन कर सकते हैं और वहीं पर आपको उनके बाकी 2 प्लेयर्स भी डोमिनेट करते नज़र आ सकते हैं। 3 खिलाड़ी के साथ 9 एमएम के प्लेयर्स आए हैं। ग्रैंड फाइनल्स डे 1 है, ऐसी गलती करनी नहीं चाहिए थी। हर एक प्लेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 3 प्लेयर्स के साथ में आप नंबर्स के गेम के साथ में हो, लेकिन एक प्लेयर यहाँ पर खत्म हुआ तो फिर आप जो ये बोलना नहीं चाहिए था। शायद यहाँ पर ये बात लग चुकी है नारियम को और एक खिलाड़ी नॉकआउट हो चुका है और 7 एरिस के प्लेयर्स के पास में एडवांटेज है, लेकिन अभी भी वो फूँक-फूँक के कदम रखते हुए सामने 9 एमएम के एक खिलाड़ी को डाउन करके उसके पूरी तरीके से हेलमेट वेस्ट को तोड़ दिया गया है। हलूसा वो खिलाड़ी थे जिनको नॉकआउट किया गया है, तो जल्द से जल्द हलूसा अपने आप को हील करेंगे और अपने गेम प्ले को थोड़ा ठहराव के साथ में दिखाने की कोशिश करेंगे। ए7 एरिस सफलता मिल चुकी है, नंबर्स भी इनके पास में हैं। हलूसा एक बार फिर से अगर पिन डाउन हुए तो फिर दिक्कत होने वाली है। ए7 स्पोर्ट्स काफ़ी बढ़िया गेम प्ले देती है हमारे जी। सामने, डस्टिन को स्पॉट करके रखा है। मौका ढूँढ रहे हैं, एक यहाँ पे मौका अगर मिल गया तो दैती भी चूकेंगे नहीं और सामने 9 एमएम के लिए सबसे बड़ी दिक्कतें बन जाएँगे। Well, I guess it's time to avoid this fight and head towards the circle because the blue zone is coming in. And E7 Esports, they don't have much healings on the back end areas. Code 404, are they still present? That's the question. If they're not, I mean, he can move. But now Ash, he has made the situation sort of checkmate for A7 Esports. Now, if they even want to move, even if they want to move towards the circle, they cannot. Because Ash will surely punish them down. And whenever you access Georgopol Western City, you have to make sure that you collect vehicles first. Because if you don't, then later on stages, it becomes difficult for you to collect vehicles. It becomes difficult for you to go in open areas because multiple team, they just ambush you. So it's better to collect vehicles while you're dropping. Multiple teams will continue to fight. That he very smartly, he has just pinned down the players of 9mm Esports, won't let them close it. Last contenders, they are taking on Team Aquila. 2 players getting knocked out with a single grenade. Ragnarok doing a great job there. And I guess Aquila Esports, they're down to 1 player. And Aquila Esports, unfortunately, they'll be getting eliminated on 16th position. Aquila Esports surprisingly becomes the first team to get eliminated from this game. That is serious, serious trouble for Aquila Esports. And now questions rising on points table because maybe after this elimination, they find themselves nowhere on points table, nowhere close to #1. Here we go. It's time for second circle. 9mm Esports in this game, they are playing just with 3 players. And I gotta salute this team. Despite of having numbers disadvantage, they are ready for this fight. There was some other team instead of 9mm, they could have straight away headed towards the circle. But 9mm Esports, they are very stubborn. They love fights and they will initiate one. The second circle has been initiated, ladies and gentlemen, and immediately it will be a northeastern archer by the circle. Primos will not be favored by the circle anymore. Tony with that spray, knocking down Halusa, and Dustin Oji knows it really well that it's time for him to revive his teammate. And Dustin Oji won't waste an extra second. 9mm Ash now, he has a opportunity to create some opening, create some trade knocks. A7 Esports, will they look forward to fall back?
Are they gonna push this fight? I feel like both these teams are pulling this fight like a rubber band. 9mm Esports especially, they had an opportunity to head towards the circle. A7 Esports, they didn't collect vehicles. Multiple mistakes were made by both these teams. Now it's time to just compromise and prioritize the circle. And I guess 9mm Esports, they've heard me. 9mm Esports, they are backing off. A7 Esports, they will get a chance to head towards the circle maybe. But finding vehicles and accessing the circle is a huge question because almost 1 kilometer you're away from the circle, almost 1,000 meters you're away from the circle. You gotta make it quick. And on feet, surely you cannot make it to the circle 7 now. जी हाँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट गेम देखने को मिल रहा है 9mm ई-स्पोर्ट्स बनाम A7 ई-स्पोर्ट्स। दोनों यहाँ पर टीम काफ़ी टफ कंपटीशन दिखाने की कोशिश करी, लेकिन अभी तक हम लोग देखेंगे कि किसी भी टीम का किसी भी प्लेयर का एलिमिनेशन हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऐश सर्कल के अंदर जाना चाहते हैं, कुछ अलग स्ट्रैटेजीज दिखाना चाहते हैं, एक अच्छा हाइट का एडवांटेज दिखाना चाहते हैं। काफ़ी माइंड गेम खेला है, पूरा प्रॉपर उनको नॉलेज है इस जॉर्ज पुल के यहाँ पर नॉर्दर्न सिटी में अपने गेम प्ले को दिखाने का। लेकिन हीलिंग्स की ज़रूरत है, 5 मात्र फर्स्ट एड देखने को मिलेंगे। खास उनके पास में कोई कंज्यूमेबल्स देखने को मिलेंगे नहीं और कंज्यूमेबल्स ना होने की वजह से इनके लिए दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा है। संभल-संभल के गेम प्ले दिखाने की आवश्यकता है। हलूसा भी उनके पीछे-पीछे आते हुए, डस्टिन भी आपको वहीं पे देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी बेहतरीन टीम है, लेकिन एक खिलाड़ी नहीं आया है तो बहुत छुप-छुपा करके इनको गेम प्ले दिखाना पड़ रहा है। वरना ये टीम हम लोगों ने जब-जब साइतर नोटिस किया है तब-तब ये टीम हमेशा फाइट निकालती हुई नज़र आई थी पिछले 2 मुकाबलों में। फाइनली फर्स्ट एड मिल चुका है, बैंडेज के साथ में अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं ऐश। 15 टीम, 52 प्लेयर्स इसी बीच हमें देखने को मिलेंगे। ब्लास्टर एक शारदा के प्लेयर्स, टीम बीएल, हम्बल द आईजीएल काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश रहती है ब्लास्टर एक शारदा की तरफ से। सर्वाइवल यहाँ पर सबसे पहले इनका वो मेन एम रहता है, लेकिन उसमें असमर्थ रहते हैं। बड़े करीब से गए थे टीम वेल्योर के सामने से। अगर वेल्योर के कोई भी एक ही प्लेयर इनको डाउन कर देता तो फिर दिक्कतें हो जाती। लेकिन गाइस यहाँ पे चलिए स्टोरेज पार्टनर हम लोग बात करते हैं अपने सैनडिस्क की, जहाँ पर आपको WD ब्लैक की तरफ से आपको देखने को मिलेंगे काफ़ी अमेजिंग पेरिफेरल्स जिसकी रीड एंड राइट स्पीड बहुत ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाती है। जी हाँ, हम बात करें सैनडिस्क की, जहाँ पर आप वर्ल्ड फास्टेस्ट PCI Gen 5 SSD नोटिस करेंगे। तो फटाफट इन यहाँ पर इक्विपमेंट्स को, इन पेरिफेरल्स को आप यहाँ पर अपने डेली यूज़ के लिए यहाँ पर आप अपने डिवाइसेस में यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आपको ये देखने को मिल जाती हैं, जहाँ पर आपको रीड एंड राइट स्पीड बहुत अच्छी देखने को मिलती है। स्पेस काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है इन सैनडिस्क में। स्टोरेज पार्टनर हमारे सैनडिस्क WD ब्लैक है। आपके लिए काफ़ी यहाँ पे बेहतरीन उत्तम आपके लिए ये यहाँ पर आपको पेरिफेरल लेकर के आया है, तो जल्द से जल्द कंसिडर करिए। लेकिन चलिए बैक टू द गेम। 15 टीम्स, 52 प्लेयर्स, TC फेथ राइट नाउ टीम केओस के काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन केओस अभी तक टॉप 5 में किसी भी मैच को एंड करती हुई नज़र नहीं आई है। यही एक टीम केओस के लिए सबसे बड़ा पेन बन के बैठा है कि इनका सर्वाइवल नहीं हो पाता आखिरी तक। फिनिशर्स निकलते हैं, वो भी बहुत ही कम मात्रा में निकलते हैं और उन पॉइंट्स के साथ में टीम केओस टॉप 5 पे भी यहाँ पे नहीं एंट्री कर पा रही है। लेकिन प्ले जोन के साथ में A7 Esports का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी मास्टर वो डाउन हो चुके हैं। बहुत देर तक 9mm वर्सेस A7 Esports हम लोगों ने देखा था और उसका रिजल्ट क्या है कि दोनों ही प्लेयर्स जिनके पास में कंज्यूमेबल्स है नहीं, हीलिंग्स है नहीं और प्ले जोन का शिकार होकर के डाउन हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच देखिए टीम केओस, उनके पास में मौका हो सकता है कि यहाँ पर टीम वेलर से फाइट निकालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर डाउन हुए तो फिर टीम केओस, इनको पता होना चाहिए कि टीम वेलोर कितनी खतरनाक टीम आज देखने को मिल रही है। बहुत बढ़िया फिनिशेस वाला गेम प्ले दिखा रहे हैं, बट अभी वही है टीम वेलोर के पास में कि उनके पास भी चिकन साइथर वो कामयाबी के साथ में निकाल नहीं पाए हैं। तो संभल करके उनको भी गेम प्ले दिखाना और टीम केओस यहाँ से तो वो तो चलते बनेगी और सर्कल के अंदर रह करके एज लाइन्स के साथ में गेम प्ले दिखाने की कोशिश कर रही है। तो एक यहाँ पर फाइन स्ट्रैटेजी देखने को मिलेगी। परफेक्ट स्ट्रैटेजी तब होगी जब ये टीम आगे बढ़ेगी, फिनिशर्स निकालेगी, चिकन तक के उस तख्ते पे पहुंच करके अपनी जीत को दिखाने की कोशिश करेगी साइदर। Absolutely. Those fights needs to be very much cautious, you know. They need to be very much cautious during those fights because I mean they completely push in. They take so much initiative. They give so much advantage to their opponents. So yes, Team Valor, I've seen most of the times they don't take much cover. They take too much risks. I mean, you get huge amount of rewards as well when you take huge risks.
But Team Valor needs to understand that right now they're not in a position where they can take huge risks. Because they have to build up that inning, and after that, I guess taking those risks will be a legitimate reason, is what I feel. Right now, Team Borg targeting Team T1. Safely, Team T1 will make it to that garage. Phase 3 has been initiated, ladies and gentlemen. Borg Esports still has no finish. Rahul lost tremendous amount of his HP. Probably T1 Esports retaliated with a nasty burst there. Team Borg, I don't know what happens in the later on stages. All of a sudden, a wave comes and Team Borg, within a fraction of a second, they get eliminated. Primary drop location is Milta. Last match, we saw how Team Borg eliminated Team Old Generation, conquering a mega force. They didn't eliminate Team Old Generation. Probably they gave them 2 casualties, and Old Generation lost all their momentum there. Wow, that was a brilliant burst. That was a brilliant retaliation from T1. This will surely give them confidence. Borg Esports, they know that these are pretty much usual things which happen in a angle when the pace of the game completely slows down. And all you gotta do is just compete with your opponent with some bursts. This time it's Omain. Punishing God. Oh, arrow! Spots him. Owen gets knocked out. On the other end, it's Overpowered Esports versus A7 Esports. Well, now, Omen will surely get that revival. There is no way T1 Esports they're gonna close in. 9mm Esports, they were in a battle against Team A7 Esports in the western city of Georgopol. Both the teams backed off. 9mm Esports successfully reached Circle. Overpowered Esports, they are creating troubles for Team A7 Esports. Code 404, accessing the higher grounds, the southern ridge of Pochinki. Code 404 might get their hands on Team T1. They will be looking forward to go for that opening. And Team Code 404, they have a good gun power as well. They play very aggressively. They just look forward for some openings. I guess one opening will be enough for them. Straight away go for that slamming on Team T1. Talk about last contenders. They are trying to enter the circle from the southeastern regions. Probably they will grab that farm highway. Here comes the 4th stage of this game, number 3, ladies and gentlemen. 4th circle will be going for a eastern shift. 9mm Esports find themselves at the center of the circle, but they are in open area, so they gotta be very much careful. Team BL, they are present inside the circle too. Code 404, as they are outside the circle, they will immediately grab their vehicles and start making it to the circle. But Fate knocking down Ash, and this is what I was talking about. 9mm Esports, they gotta be very much careful because they're in open areas. Kill switch down, RL gets hard. Code 404 can really take advantage of the situation because 9mm Esports, they're down to 2 players. Code 404 need to fight with less players. This is what they want in order to conquer this particular ridge. 9mm Esports, they are fading fast. Overpowered Esports, but this they eliminate A7 on 15th position. Overpowered Esports getting those crucial frags. But still, Code 404, they didn't find a safe spot inside the circle. And Halusa is the last player surviving, I guess, for Team 9mm. A huge split maintained by Team 9mm as well. Hutch steals a frag there. Code 404 off the mark, getting their first elimination. Plus Rekshada, they gotta back off. They worked so hard there for that elimination, but that they didn't get one. Instead, that knock got stolen. That finish got stolen. Team BL will be very much unhappy for now. There's nothing they can do about it. Striker knocking down Omen. Code 404. Will they invest in those properties? 9mm Esports with this, they are eliminated from this game. They are eliminated on 14th position. Team Chaos doing the needful. Eliminating 9mm on 14th position. Getting those 2 extra frags. Humble Igil, continuously he's just trying to scout the area. Rest, the assaulters, rest of the team, they're just relaxing in the compounds. But it's risky for Humble Igil, and he needs to understand that he is surrounded by players here. And continuously he's scouting and securing that ridge, but there is actually no need to do. Old Generation getting some frags there. Old Generation securing the circle, and in this game as well, I guess Old Generation, are they playing with just 3 players? Don't tell me that Old Generation, again, they are playing with 3 players. Because if they are, I mean, they've shown hell of a resilience till now. Because they're still surviving. They're still 3 players strong. They've faced no casualty till now. So they've done a pretty good job till now. 7-arm. And now it's time to keep up the pace and get some more finishes as well, 7-arm. या दे हैव टू कीप अप नाउ। जहाँ पर आपको इतनी सारी टीमें देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर आपको हंट करना पड़ेगा।
फिनिशेस निकालने पड़ेंगे, सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। ब्लास्टर एक शारदा, 4 प्लेयर्स है। मिथ यहाँ पे पावर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फायर जॉट अभी भी एनालाइज कर रहे हैं कि इर्द गिर्द कोई यहाँ पर अगर टीम नजर आती है तो अपने एंगल के साथ में नॉकआउट निकालने की कोशिश करेंगे। मिथ स्पॉट करके रखा उन्होंने, लगातार वो कनेक्शन बनाने की कोशिश है। हम्बल आईजीएल यहाँ पे थोड़ा सा अपनी पोजिशन को रिपोजिशन करेंगे और वहीं पर देखने की कोशिश करेंगे कि और कितनी यहाँ पे टीमें नजर आ रही हैं। स्काउटर का रोल अदा कर रहे हैं आईजीएल साहब। वहीं पर आपको कोड ऑफ 404 उनके लिए फिर से मुसीबत बनती हुई नजर आई कि एक और प्लेयर यहाँ पर डाउन हो चुके हैं उनके, तो इतना आसान रहेगा नहीं ये मुकाबला कोड ऑफ 404 के लिए। एंड आई गेस वो यहाँ पर एलिमिनेट होने की कगार पे होंगे, जिस तरीके से हम लोगों ने पहले भी उनके फिनिश फील्ड में नाम देख लिए हैं कई बार। रेड लाइन ई स्पोर्ट्स, इस टीम की भी हमने तारीफ की थी W2R के साथ में ही। बड़ी दिलचस्प टीम है, बड़ा यहाँ पे गेम प्ले दिखाने में विश्वास रखते हैं, लेकिन अभी तक रेड लाइन ज्यादा कोई खास फिनिश निकाल नहीं पाए हैं। मात्र 1 अंक देखने को मिला, लेकिन कोड ऑफ 404 अभी देखिए तो पूरी टीम मौजूद है। नॉक कई बार हुए हैं लेकिन अपने आप को संभाला है, बार बार स्ट्राइकर को भी रिवाइव मिल चुका है। फिर से यहाँ पर वो टीम रीसेट कर चुकी है, अपने आप को एक फिनिश उनके पास में देखने को मिलेगा, लेकिन ओवर पावर्ड कमलेश, उनको यहाँ पर दिक्कतें दी जाएंगी। वाइपर खत्म, टीआर क्लैप्स यहाँ पे पूरी तरीके से वो कोलैप्स कर जाएंगे, उनकी पूरी टीम कोलैप्स कर जाएगी उनके नाम के साथ में। और 13 पोजीशन पे उनका एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। टीसी फेथ, उनको भी नॉकआउट कर दिया गया है ब्लास्टर एक शारदा के फायर जॉट की तरफ से। बट गाइस यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम दीज मैचेस, दीज फाइट्स, आप यहाँ पर देखिए पावर्ड बाय ओप्पो की तरफ से आपको K13 टर्बो सीरीज देखने को मिलता है। इंडियाज ओनली स्मार्टफोन विद अ कूलिंग फैन। गर्मी आ रही है और गर्मियों में अगर आपको हीटिंग इश्यू होता है तो फिर आप इस फोन को यहाँ पर कंसिडर करिए और ऐसे ही BGMI के एक्शन को नोटिस यहाँ पे कराइए। काफी यहाँ पर बेहतरीन ये डिवाइस आपको देखने को मिलता है। नॉट ओनली गेमिंग, यहाँ पर आपको बहुत सारी यहाँ पर आपको एडिटिंग एंड बाकी इन सभी चीज़ों में आपको ये फ़ोन बहुत ही बेहतरीन अपने प्रोसेसर के पावर के साथ में सपोर्ट करने वाला है। लेकिन अभी चलिए फिलहाल बैक टू द गेम, काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है। ओन जेन के डिजास्टर का भी यहाँ पे एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। टीसी नो प्ले जोन के साथ में डाउन हो चुके हैं। फ्रैगर वो कंफर्म हो जाएंगे। नो को यहाँ पे फ्लेक्सी ड्रिवन बाई किया और उनका कंफर्मेशन अपने नाम किया है। वहीं पे कोड ऑफ 404 की हम लोग अभी यहाँ पर काफी अच्छी यहाँ पे स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोड ऑफ 404 के प्लेयर्स का फिर से एलिमिनेशन नजदीक देखने को मिलेगा। मिथ्यू डॉन ग्रेनेड के साथ में यहाँ पर डाउन करेंगे कोड ऑफ 404 के खिलाड़ी को, कंफर्म करेंगे मिथ्यू डॉन को। और देखते ही देखते कोड ऑफ 404 बची मात्र एक इकलौते खिलाड़ी के साथ में। यश के ऊपर पूरा भार देखने को मिलेगा। इंस्टेंट अभी अंश यहाँ पे खत्म हुए और देखते ही देखते यश गोस डाउन और पूरी की पूरी कोड ऑफ 404 यहाँ पे सिमटते हुए खत्म होते हुए। स्ट्राइकर यहाँ पे व्हीकल बस्ट में खत्म हुए थे, जो कि टोजी ने वो व्हीकल बस्ट किया था और अपनी टीम के लिए काफी अच्छा फ्रैग निकाला। लेकिन वहीं पे T1 स्पोर्ट्स के लिए भी काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलेंगी। गॉड हैज एलिमिनेटेड T1 स्पोर्ट्स, उनका भी यहाँ पे खात्मा होते हुए। पूरा मैच यहाँ पर टॉप 7 टीम्स में आ चुका है। 21 खिलाड़ी देखने को मिलेंगे साइड और अभी भी देखिए नॉन स्टॉप फाइट चल रही है। रेड लाइन ई स्पोर्ट्स के लिए प्लेयर्स ने भी फाइट इनिशिएट कर दी और DFW2R से फाइट जा करके उन्होंने चैलेंज कर दिया। एक खिलाड़ी का इंतकाल भी देखने को मिलेगा। कयांश को भी यहाँ पे खत्म किया। रेड लाइन बड़ा गेम दिखाने में विश्वास करते हुए, लेकिन वहीं पे अक्षर देखिए उनके पास में इनविजिबल का कंट्रोल है, लेकिन इनविजिबल दे नो प्रॉपर्टी कि कहां पर अक्षित है। एक बड़ा ग्रेड आया और लगभग 50% की एचपी यहां पे खत्म कर दी गई। Oh, look at that vehicle, the way that vehicle came in like a cover out of nowhere, but Akshat still getting knocked out. Oh my goodness. Akshat was surviving there when that vehicle didn't came, but as soon as that vehicle came like a help, immediately Akshat getting knocked out. That was savage. That was so funny there. There's nothing Akshat can do about it. Red line esports, they are fading fast. He lost Akshat. Akshat was spinning down Invincible esports. Now Invincible esports switched their attention towards Team T1. Team T1, they have that higher ground advantage too. Ganesh getting knocked out. Ganja, he is closing in too. He's very cautious. He's very cautious there. And now Team T1 officially, they are down to 2 men. It all comes down to 3 teams and 8 players, ladies and gentlemen. Invincible esports played really steady in this game, played very passive. 3 players are still alive, but 2 eliminations just secured by Invincible esports. But they gotta end this game in their way. It's T1 versus Invincible esports versus Redline esports. Invincible esports is not present inside the circle. That's the problem here. Danger is 19 meters away from the circle. Redline esports, they are not present inside the circle too. But Team T1, that's the team farthest from the circle. And Invincible esports knows really well that they can get these few easy finishes.
Ganja suffering with that Molotov. Gonna be concerning for him. Arrow knocking down Ara Lakshit with that nose. Read the finish feed there. Ganja burning in that Molotov. Seher getting finished off because of that blue zone. And now last player surviving, I guess, for Team T1. Arrow taken down by Yatat, and with this Team T1 gets eliminated on third position. Yatat getting knocked out, and Mul is the last player surviving. He's struggling because of the blue zone. And with this, Invincible Esports gets the job done. It is all over. Invincible Esports gets a winner chicken in a crucial game. What a play by Invincible Esports. Steady play, a passive play. They played so much passive in the initial stages, avoided fights. Later on stages, in the end stages, pressed their feet hard on the accelerator, got finishes, and got that brilliant winner chicken dinner for them. 7-up. और इनविजिबल का हम लोगों ने परफॉर्मेंस देखा, कहां से उन्होंने कहां तक की डिस्टेंस को तय किया। जैसा कि आपने बोला कि शुरुआत में बहुत यहाँ पर स्लो खेलते हुए नजर आए, लेकिन आखिरी में जिस तरीके से रफ्तार पकड़ी, रेड लाइन जैसी यहाँ पे टीमों को उन्होंने डोमिनेट किया, जो कि W2R को डोमिनेट करके अपने गेम प्ले को यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन सामने जब इनविंसिबल आई तो पूरी तरीके से रेड लाइन यहाँ पे डोमिनेट हुई, और आखिर में आते आते यहाँ पे पूरा वो विनर चिकन निकाल के लेकर के गए। फैबुलस गेम बाय इनविंसिबल ई स्पोर्ट्स, काफी यहाँ पर शानदार परफॉर्मेंस, एंड अब यहाँ पर उनके पास अभी एक चिकन आ चुका है, तो हम कहीं बोल सकते हैं कि सारी तरफ ये भी यहाँ पर आपको टॉप 5 टॉप 3 में अंदर नजर आ सकते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंसी तो इनविंसिबल भी दिखा रही थी, लेकिन अब जा करके वो चिकन आ चुका है। इनविंसिबल यहाँ पर आपको तीसरी टीम देखने को मिलेगी। W2R ने भी चिकन निकाल लिया है। वहीं पर हम लोगों ने देखा था कि ओल्ड जेन के प्लेयर्स ने भी एक चिकन निकाल लिया। 3 मैचेस और 3 अलग अलग टीमें देखने को मिली हैं। अब इससे बेहतर यहाँ पर इन टीम्स के लिए होगा क्या, लेकिन अभी भी यहाँ पर 3 मैचेस बचे हैं, और रेपुटेबल हम लोग चिकन नोटिस करना चाहते हैं कौन सी वो टीम होगी जो दूसरे चिकन की तरफ आगे बढ़ पाएगी। क्या वो इनविंसिबल होगी, क्या वो यहाँ पर W2R होगी, या ओल्ड जेन हमें फिर से एक बार के लिए अपने गेम प्ले को दिखाते नजर आ सकते हैं। बट लेडीज एंड जेंटल, आप लोग देख रहे हैं स्कोर कॉलेज कप दिल्ली एडिशन, काफी बेहतरीन मुकाबले देखने को मिल रहा है, पावर्ड बाय ओप्पो, एंड स्टोरेज पार्टनर आपको देखने को मिल जाते हैं सैंडिस। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद में आपके चौथे मैच के साथ में कुछ ही देर में।
Welcome back, ladies and gentlemen, to the SKOAR College Cup Delhi Edition Grand Finals. We're about to start off with match number 4. Well, this Grand Finals is powered by OPPO, along with storage partner SanDisk and Digit. And there's a twist here, ladies and gentlemen. Along with me, I have my co-caster EMT Gaming. I hope you're doing great, EMT Gaming. Welcome. Yeah. We are halfway there, and I would like to give everybody a short summary of what has happened till now. So the first game we saw, Whole Generation getting that winner chicken dinner. In the second game, we saw Team W2 getting that winner chicken dinner. In the third game, we saw Invincible Esports getting that winner chicken dinner. And now it's time to witness the overall standing. This is the best moment. See the overall standings, and it goes by this. Redline Esports, they're the head of the table. Well, that was unexpected, but with a total amount of 38 points, they're on first position. W2R Esports, they got a chicken dinner, 32 points. They're on second position. Invincible Esports, 3 matches, they're on third position with 30 points. Old Generation, they're on fourth position with a total amount of 27 points. Aquila Esports, they're on fifth, 25 points. Blaster X Shada, they're on sixth with 21 points. Borg Esports on 7th position with 21 points. Last Contenders on 8th position with 20 points. T1 Esports with 19 points. They're on 9th position. So it's so much crucial on points table. EMT Gaming, what are your expectations? This is the last Erangel of the day. What do you think? What will be the strategy of the team? What will be the approach of the teams in this particular game? आई थिंक यहाँ पे देखिए आखिरी मुकाबला इरैंगल का है तो टीम्स बिल्कुल चाहेंगी कि जिस टीम्स का बहुत स्ट्रॉन्ग इरैंगल है वो कंप्लीटली ट्राई करेंगे कि अधिक से अधिक ज़्यादा पॉइंट जो है वो हासिल करे इस इरैंगल में ताकि अपने आप को ऊपर लेकर जाए। और यूजुअली जो टीमें सेकंड पेज पर है उनको भी अब ट्राई करना पड़ेगा कि इस मैच में अच्छा खेले ताकि अपने आप को फर्स्ट पेज पर लेके जाए। अदरवाइज अगर खराब गेम्स गए तो प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ सकती है उनके लिए। Absolutely, ladies and gentlemen, get ready as this is match number 4 of SKOAR College Cup Grand Finals Day 1. Powered by OPPO, along with our storage partner SanDisk. Here we go. Flight path initiating from circuit regions and probably finishing off towards Sosnoka military base. Flight path favoring the western regions of Erangel map. Well, the flight path is initiating from the western region of Georgopol city and finishing off towards Sosnoka military base. A completely western region oriented flight path, which won't allow the players to access the eastern edges. Well, in the last game as well, we saw sort of this kind of flight path, and due to which we saw a lot of chaos in the initial stages. But again, overpowered Esports, I guess they're trying to access shooting range regions or maybe 70 regions. Aquila Esports heading towards the big city of Georgopol. Question is 9mm Esports, they've changed their drop location so much quickly. They usually headed towards the western city of Georgopol, but now the flight path is favoring the western city of Georgopol, and in spite of that, they are going somewhere else. First circle has been initiated too, and the first circle is favoring the southeastern regions of Erangel map. Milta, deep inside the circle, we can consider Milta as the center of the circle as well. Redline Esports, they are the head of the table, trying to access the Katka regions. Right now, they are dropping in the northern regions of Katka, maybe trying to collect those vehicles as well. Code 404, as usual, heading towards hospital. A7 Esports will be alone there in the western city of Georgopol. Overpowered Esports completely controlling the northern Georgopol city. And Aquila Esports, they headed towards the outer skirts of Zerki, which is quite surprising. But immediately, Old Generation, they are going after Team Blaster X Shada Myth. Will be sent back to the lobby. That's concerning, as Team BL, they faced a casualty in the initial stages, EMT. या एग्जैक्टली इनिशियल स्टेजेस में कैजुअलिटीज लेना दिक्कतें बढ़ा जरूर सकता है, बट इनफैक्ट अगर हम 9mm की बात करते हैं बड़ा आराम से इन एरियाज के अराउंड उतरेंगे, अपनी जो लूट है उसे वो कंप्लीट करेंगे और दिक्कतें इनके लिए भी ज़्यादा होनी नहीं चाहिए क्योंकि लूट के मामले में फिलहाल कोई भी टीम्स इनके आसपास हमको देखने को मिल नहीं रही है मेजरली, तो लूट पर पूरा फोकस आउट रहेगा प्लेयर्स का। एंड आफ्टर दैट वो रोटेशंस को जो प्लान है वो करते हुए नजर आएंगे और इनफैक्ट पूरी तरीके से एक ईस्टर्न सर्कल जो हमको देखने को मिल रहा था, बट जोकर चलिए वो भी यहाँ पर बीएल के शैडो को पिक ऑफ करते हुए नजर आएंगे। उत्कर्ष के द्वारा इंस्टेंटली समापन भी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। कुछ रीजन्स के अराउंड जो फाइट्स है उसकी शुरुआत ऑलरेडी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी और कुछ रीजन कंप्लीटली यहाँ पर शांत नजर आते हुए नजर आएंगे और देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि 9mm अपनी लूट करके कितना जल्दी वो यहाँ से निकलना प्रेफर करते हैं। 9mm Esports, they're desperately trying to avoid fights. I mean, 9mm Esports, they're playing so much cautiously. And in the last game, we saw 9mm Esports fighting in the initial stages with Team A7. But now they're on the second page on the points table. And 9mm Esports, they're desperately trying to climb up because this is the last Erangel of the day. And after this game, we'll be starting off with Miramar. And Erangel is their strength. But now they've completely changed their strategy. Their primary strategy is playing aggressive, but now they are going passive. And this is so much shocking for me personally, because I've never seen them playing this much passive. But ladies and gentlemen, SKOAR College Cup Delhi Edition is powered by OPPO K13 Turbo Series, India's only smartphone with a cooling fan.
And out of nowhere, OPPO came up with a miracle. I mean, putting in a cooling fan inside of a phone, that is very rare, and this is something very new I've seen by any mobile company. So OPPO did a great job here. To check out this phone. It will surely enhance your gaming experience. We're now coming back to the game, ladies and gentlemen. Team Valor lost a player in the very initial stages. Pura, he's out of this game. And a slow start for Team Valor again, EMT. हाँ, बिल्कुल एक स्लो स्टार्ट यहाँ पर टीम वैलोर के लिए मिली है और इनफैक्ट अच्छी बात ये है कि अभी फिलहाल पोचिंकी के अंदर अराउंड कोई रहेगा नहीं, तो आराम से अपनी जो इनिशियल लूट है ना उसे वो कंप्लीट करेंगे और इनफैक्ट उसके बाद वो रोटेशंस उसकी शुरुआत यहाँ पर करना चाहेंगे। बट अहम होता है ना कि बीइंग अ 3 प्लेयर स्टैंडिंग किस तरीके से आगे जाते हैं, क्या स्ट्रैटेजीज यहाँ पर रहेगी उनकी, बिकॉज ऑलरेडी आउट नंबर्स हो जाना थोड़ी सी डिफिकल्टीज क्रिएट करता है टीम्स के लिए। फाइट आने वाले फाइट्स के अंदर अपने आप को कैसे आगे वो देखते हैं, ये देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 15 टीमें 56 प्लेयर्स, पहला सर्कल 3 मिनट 28 सेकंड के अंदर जो श्रिंकिंग है वो करना स्टार्ट करेगा। और इवन अगर हम टीम बॉन्ग की बात करते हैं तो वो भी अच्छे एरियाज के अराउंड है और मिल्टा कंप्लीटली सेंटर है, तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर नहीं होगी। बड़े आराम से लूट करके इनिशियल फेज पर वो यहाँ पर रुक सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं जोन कटने का। This has been a brilliant investment by Team Borg. I mean, just grabbing the center of the circle. And there is no doubt that circle won't favor Milta. I guess 2-3 circle. Yeah. Borg Esports might be inside the circle. Milta might be inside the circle. So brilliant investment. In fact, Borg Esports, this is their primary drop location. They always head towards Milta. And they've won so many clashes, especially against old generation. Ladies and gentlemen, SKOAR College Cup. Our storage partner, SanDisk, one of the best SSDs in the world, one of the world's fastest Gen 5 SSD. Do check it out. Coming back to the game. As I was saying, Borg Esports, they've won so many fights against teams. They've won so many drop clashes. They know how to play in Milta regions. And if the end circle ends up favoring Milta, the probabilities of Borg Esports winning the game will be 2x, is what I believe. So they will be just praying right now that the end circle just favors Milta. And whole generation, they will be sent back to their second drop location. That's the caliber of Borg Esports. But on the other hand, 9mm Esports, they will be invading Sosnoka military base. I thought 9mm Esports, they will be very much passive in this game, but they were just focusing on collecting loot. They've got enough amount of loot now, and they are on a hunt. Straight away, they are going after Team T1, Ash getting that first frag, and Team T1, a setback for them. But Team T1, they never expected that out of nowhere 9mm Esports would just interfere in their looting process. And Arrow now, he's trying to fall back too. Meanwhile, Kanishk, he is suffering as he is lacking with his HPs. And I guess Team T1, they are just avoiding this fight. They are not ready for this fight, is what I believe. That's the reason why they are retreating towards the safe zone, EMT. ऑफ कोर्स बिकॉज ऑलरेडी वो लूट कर रहे थे एंड उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आसपास भी टीम्स यहाँ पे रहने वाली है और डायरेक्टली एक सरप्राइज मिला है। ऑलरेडी एक प्लेयर को गवा चुके हैं, तो डिसंगेज करके निकल जाना आई थिंक एक अच्छा फैसला रहेगा, क्योंकि अभी भी काफी समय इस गेम के अंदर बचा है। अर्ली क्लैशेस कई बार मुश्किलों में डाल देते हैं टीम्स को और एक अच्छा फैसला T1 की तरफ से। बट आई थिंक 9mm वो भी बहुत ज्यादा खुश होंगे कि ऑलरेडी एक फ्रैग उनको मिल चुका है। जिस तरीके की शुरुआत हमने 9mm की तरफ से देखा है, कंप्लीटली एक पैसिव अप्रोच के साथ ही यहाँ पर जो है टीम 9mm के प्लेयर्स अभी के लिए शुरुआत करी और ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था पॉइंट्स टेबल में भी यूजुअली काफ़ी स्ट्रगल यहाँ पर 9mm की तरफ से भी चल रहा है, तो वो बखूबी जानते हैं कि अगर अच्छे गेम्स नहीं जाएंगे तो पॉइंट्स टेबल में। बट चलिए फाइट्स की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है, इंस्टेंटली टेक डाउन वहाँ पर किया जाएगा। इक्वला के प्लेयर्स वहाँ पर फाइट के अंदर इंडल्ज करते हुए नजर आएंगे, बट देखते ही देखते जो परेशानियां है वो ऑलरेडी टीम चोज के लिए बढ़ती हुई नजर आ रही है। दो फिनिशेस वहां पर आए, काफी बढ़िया तरीके से जो बैटल है उसे इनिशिएट करा और बहुत आसानी से अपने लिए वो दो फिनिशेस, तीसरा फ्रैग भी सिक्योर किया जा चुका है। And now Aquila Esports, they need to start moving towards the circle as well. Terrific start for Aquila Esports. 3 eliminations into their pocket. And yes, now they're almost 600 meters away from the circle. Team Chaos, they lost their momentum completely. Team T1, Arrow, finally they're pinning down Team 9mm. First opening has been created successfully. Arrow, he went for that vehicle tracing, failed miserably there. And Arrow is about to get knocked out. Kanishk is knocked out too. Zehe gets knocked out. And Arrow is the last 3 or 4, barely surviving in 10 HPs. It's almost game over. Arrow wants to escape, but Halusa won't allow him to do so. And with this, Team T1 gets eliminated on 15th position. That was so much quick. And this is the OG 9mm. This is the typical 9mm gameplay. They love fights. And they messed with Team T1 and they cleaned them out. That was a clean sweep by Team 9mm.
The question is, did they get any finish? Did T1 get any finish? Because 9mm has lost a player. Maybe they got a finish there. But it's absolutely fine. He got 4 eliminations at the cost of 1 player, which according to me is a good ratio. And this is the kind of start Team 9mm was actually looking for. But once they move ahead, they will face Redline Esports. And that might become concerning for them because they are not at all ready for Redline Esports. They are not expecting that Redline Esports they'd be holding in this particular area. But second circle has been initiated with this, ladies and gentlemen, and Redline Esports, they're out of the circle, so maybe they won't just waste much time behind 9mm and they might head towards the circle. They might acquire the circle. Even 404, they are moving from this particular region as well. Chaos might increase. Redline Esports might end up fighting multiple teams, and that's one thing Redline Esports wouldn't want, AMT. या बिल्कुल और इनफैक्ट अगर अभी के लिए हम बात करें ऑलरेडी यहाँ पर एक और टीम कोड के जो प्लेयर्स है वो भी हमको देखने को मिलेंगे और कोड 404 के प्लेयर्स ऑलरेडी शायद उनको भी हल्का फुल्का इंटेल जो है वो लग चुका और जी हाँ बिल्कुल रेड लाइन के प्लेयर्स को पिक ऑफ किया जा चुका और इसी बीच टीम 9mm के प्लेयर्स उनको भी इंटेल ऑलरेडी मिल चुकी है कि आगे कोई टीम रहने वाली है। इंपॉर्टेंट रहता है इन तीनों ही टीम्स के बीच में कि किस तरीके से बैटल को इनिशिएट किया जाता है बट कंप्लीटली टीम रेड लाइन ऑलरेडी अपने एक प्लेयर गवाती हुई नजर आ सकती है यहाँ पर और काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। शॉट्स वहां पर अंश को लेना चाहिए था बट थोड़ा सा इंतजार यहाँ पर किया गया एंड कंप्लीटली 9mm के जो प्लेयर्स है वो पुश इन कर चुके हैं। एक अच्छा ग्रेनेड टेक डाउन वहां पर किया जाएगा बहुत ज्यादा शानदार तरीके से बट ये बात से अनजान है कि कोड 04 के जो प्लेयर्स है वो एक अच्छे एंगल पर बस वो इंतजार कर रहे थे कि मौका मिले और इंस्टेंटली अटैक किया जाएगा। 9mm के प्लेयर्स एक और खिलाड़ी को पिक किया जाएगा। अभी तो एक बैटल को बस जीता ही था बट सब समय जैसे ही बीता पूरी तरीके से कंप्लीटली यहाँ पर 9mm के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी है बट इट वाज बीइंग गुड फॉर द टीम रेडलाइन की कंप्लीटली जो मौका है वो मिला अपने प्लेयर्स को रीसेट करने का और बड़े आसानी से वो अपने प्लेयर्स को रीसेट करते हुए नजर आएंगे। Redline Esports, their luck was really good there. They were favored by luck. Redline Esports could have lost 2 players, but fortune was favoring them. And now Redline Esports, they will be 4-man strong. And this is what I was talking about. If Code 404 becomes a part of this fight, Redline Esports might end up fighting 2 teams at a time. And still, Code 404, they haven't fallen back. They haven't retreated towards the safe zone. And there is still a possibility that they might attack Redline Esports. And on the back end areas, I saw W2 are squaring up as well. So again, it becomes a triple threat fight. There is still a threat. And W2R Esports, they have closed in as well. And Redline Esports won't waste much time. Redline Esports, they are heading towards the circle too. It's almost 600 meters. The distance is huge. Redline Esports, they need to travel fast. And there will be multiple teams on the farm strip. The way Redline Esports is grabbing right now, on that pathway, multiple teams could be gatekeeping their circle. There is a huge threat for them right now, AMT. या ऑफ कोर्स और देखिए W2R की अगर हम बात करते हैं यूजुअली वी नो कि W2R एक अच्छा मुकाबला अभी के लिए इनके लिए चल रहा है काफी अच्छा परफॉर्मेंस पिछले रीसेंट मैचेस में बट रेड लाइन के प्लेयर्स अभी तो जस्ट बचे थे इंस्टेंटली डाउन किया जाएगा। अनमोल एक अच्छा नॉक वहां पर आया तो जरूर है और चलिए वो कंफर्मेशन वो भी आता हुआ नजर आएगा दैट वाज बीइंग गुड फॉर द प्लेयर्स बट कोड दोनों ही टीम डिसएंगेज करके निकलना तो चाहती थी बट आगे आकर जो फाइट है दोनों का आमना सामना हुआ और यहाँ पर जो प्लेयर्स है वो अभी के लिए रेड लाइन गवाती हुई नजर आएगी बट साथ ही साथ कोड उनके भी खिलाड़ी को डाउन जो वो किया जाएगा। दोनों ही टीम्स ने कैजुअलिटी जो वो बेयर करी है बट अब निकलना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी सेकंड सर्कल वो 25 सेकंड के अंदर जो श्रिंकिंग है वो करना स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद हम एक नया सर्कल देखेंगे एंड इनफैक्ट वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सर्कल कि यूजुअली अगला सर्कल कितनी टीम्स को परेशान करेगा और आई थिंक यहाँ पर टीम्स बिल्कुल चाहेगी कि जल्द से जल्द सर्कल की तरफ यहाँ पर जो वो बढ़ा जाए बट रेड लाइन के प्लेयर्स आखिर यहाँ पर क्या मंशा चल रही है उनके इसमें देखना पड़ेगा क्योंकि अगर आगे की तरफ जाते हैं तो शायद मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि 404 के जो प्लेयर्स है वो गेट कीप करते हुए नजर आ सकते हैं। Absolutely. But I guess Redline Esports, they know that there is a lot of traffic on this particular pathway, so they just calmly they change the direction of their rotation, they change their pathway. They will stretch out their rotation, but it will be safe for them. It will be time consuming, they will require a lot of efforts, but it will be safe. That's what they want. They've already lost a player. Redline Esports cannot afford to lose more. And third circle has been initiated with this, ladies and gentlemen. Things have been heated up a lot. 41 players and a total amount of 13 teams are still surviving. Comparatively, if we see the amount of players surviving right now, the amount of players alive right now is less. But still, we are expecting chaos and entertainment from the end circle. But now Code 404, without wasting any extra second, they will be grabbing their vehicles and they are heading towards the circle as well. On the other hand, Redline Esports, they diverted their rotation. Soon they will be seen inside the circle too. But this is a kind of
exhausting circle. Players will need to put in so much efforts in order to compete in this particular circle because so much water areas are being favored by the circle. It's almost 75-25 ratio or maybe 30-70 ratio, 30% land areas and 30, 30% water areas and 70% land areas are being favored by the circle. So that means 41 players, it will be difficult for all the teams to grab a compound inside the circle. It will be difficult for all the teams to make their way inside the circle because the circle is comparatively small. It looks big, but the land area is less. It will be chaotic. We might see some huge fights now. Third parties and fourth parties will surely see that, EMT. एग्जैक्टली और आई थिंक मैं समझता हूँ कि जिन टीम्स के पास वो कंपाउंड्स का कंट्रोल है उनके पास वो बेनिफिट रहेगा पूरी तरीके से पूरा एक अच्छा मौका रहेगा इन टीम्स के पास एंड यूजुअली अगर हम कोड 404 की बात करते हैं एक अच्छे स्पेस एरिया पर हमको जो है वो देखने को मिल रहा है और यूजुअली ऐसे सर्कल्स हम कई बार देखते हैं और अक्सर होता है कि सर्कल जो है वेस्टर्न शिफ्ट लेते हैं और अगर वेस्टर्न सर्कल का शिफ्ट आता है आई थिंक 404 वो बहुत ज्यादा खुश रहेंगे इन एरियाज के अराउंड रहकर क्योंकि ऑलरेडी नंबर्स का एडवांटेज भी उनके पास है तो देखना काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि अगला सर्कल का जो शिफ्ट है वो किस तरीके से यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा बट इनविंसिबल्स की भी बात करते हैं कमाल का अभी तक के जो परफॉर्मेंस है इस टीम की तरफ से भी देखने को मिला है बट चलिए कुछ शॉट वहां पर ये जरूर जाएंगे बट अभी के लिए जो कनेक्शन है वो कुछ खास बनते हुए नजर आ नहीं रहे ध्रुव कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं बट ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने की तरफ एक और टीम है ओवर पावर्ड की भी प्लेयर्स उनको देखने को मिल रहा है और आई थिंक मैं गलत ना हूं तो वहां पर एक ही जो प्लेयर है ना वो ओवर पावर का देखने को मिल रहा है और वो शायद सरप्राइज कर सकता है टीम 7 को तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि वहां पर किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते हुए नजर आते हैं एक्वेला के प्लेयर्स उनकी भी जो पोजीशनिंग है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिल रही है और अब धीरे धीरे टीम्स कंप्लीटली ट्राई कर रही है कि जल्द से जल्द जितने कंपाउंड्स खा लिए उसको जल्द से जल्द कैप्चर किया जाए Invincible Esports might end up in a huge amount of trouble here because multiple teams are squaring up upon them. And on the back end areas is Aquila Esports. Maybe they are taking on Team Valor. Team Valor is already suffering right now. They can become an easy target for Aquila. Monk knocking down AKT Bhumi, I guess. AKT Bhumi got knocked out there. Aquila Esports will find it very much difficult to get that confirmation. Invincible Esports, last game, they were phenomenal. Invincible Esports, they played really well in the last game. They need to maintain the pace. They need to keep up the momentum. Until now, we haven't seen any action from Invincible Esports' side. They're playing very much passive with their OG strategy. They play passive in the initial stages. They are not really greedy for those finishes. They usually focus on securing those finishes in the edge circle. So here as well, Invincible Esports, they are waiting. They are saving their energy for the end circles. But the IGL has done a great job. Invincible Esports again making their way to the circle. IGL with that brilliant anticipation and prediction. But Wintox, my goodness! What a tracing that was! Disaster getting knocked out. So many barriers were there in between. So many obstacles were there in between. But Wintox still made that connection. That was just pure art from Wintox. Disaster getting knocked out. Old generation. They have their backs against the wall. That grenade was right on target. Wintox was about to get knocked out there. Last, he lost tremendous amount of his HP. He will be regaining it immediately. But old generation, I guess they survived that situation and Disaster, he's getting that revival. And meanwhile, Team AKT, they had a good opportunity to take down old generation, but they lost it, AMT. एग्जैक्टली ओल्ड जनरेशन ऑलरेडी अपने एक प्लेयर गवा चुकी है बट आसपास के एरियाज के अराउंड देखिए बहुत सारी टीम्स हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है और यूजुअली एकेटी के लिए भी आसान वहां पर होगा नहीं फ्लेक्सी फाइट्स के लिए पूरी तरीके से इंटरेस्टेड है ये प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेगा ये बैटल एंड लेट्स सी कि कैसे इनिशिएट करते हैं और एक अच्छी पोजीशनिंग पर है बट दिक्कत ये भी है ना कि पीछे भी यहाँ पर हमको टीमें देखने को मिल रही है और ऑलरेडी यहाँ पर रेड लाइन के प्लेयर्स है जो बैकएंड से वो रोटेशंस इनिशिएट करते हुए नजर आएंगे बट जोकर अब धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हैं और किस प्रकार से एकेटी के प्लेयर्स अपने आप को संभाल पाएंगे वो एक बड़ा सवाल रहेगा बट ओल्ड जनरेशन के कुछ प्लेयर्स वो भी थोड़ा सा बैक ऑफ करते हुए नजर आएंगे एक अच्छा स्पॉट यहाँ पर ओल्ड जनरेशन की जो प्लेयर्स है उनको मिलता हुआ नजर आएगा और उत्कर्ष की अगर हम बात करें उनकी भी पोजीशनिंग 2-2 का स्प्लिट ऑलरेडी प्लेयर्स लेकर रखें दो प्लेयर्स वहां पर क्लोजिंग करना चाहते हैं दो प्लेयर्स वो कवर्स पीछे से प्रोवाइड करेंगे एक अच्छा स्मोक्स डिप्लॉय करा था ताकि किसी तरीके से यहाँ से डिसएंगेज करके निकला जा सके और उन कंपाउंड्स के अराउंड जा सके बट एक अहम रोल यहाँ पर रेड लाइन का भी रहेगा बहुत क्रूशल रोल ओ बट नॉक क्या रही एक अच्छा नॉक वहां पर वो निकालते हुए नजर आएंगे टेक डाउन जरूर किया है और अगर फिनिश फीड पर रीड करा है ओल्ड जनरेशन ने तो मौका उनके पास बन सकता है पुश करते हुए वो नजर आ जरूर सकते हैं शायद थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा एक अच्छा प्रहार किया तो जरूर था बट कुछ खास कनेक्शन हमको देखने को नहीं मिला अभी AKT Esports, they barely survived the situation.
whole generation didn't read that finish feed. If they would have read that finish feed, it would have been so much easy for them just to close in and give that final touch. AKT Esports would have been wiped out. That didn't really happen. Overpowered Esports, they are trying to invade the circle too, and it's time for AKT to block the circle of Overpowered Esports. They can get those easy frags, EMT. All they gotta do is just wait. It's Overpowered Esports, they will take the initiative, but Toji has some other thoughts on his mind. Kamlesh was in open areas there. Toji with a miserable spray. On this level, you should be able to make these connections. It wasn't that difficult for Toji, but he messed up there. While getting knocked out, BHM making those connections. AKT Esports won't really allow Overpowered Esports to enter the circle. It's going to be very much tough for Overpowered Esports. They got to do something out of the box. They have to pull off a miracle. It won't come easy in their plate. Now Blue Zone will start shrinking as well. The time is ticking. Aquila Esports, 3 players are knocked out. What's going on here? A whole another story with Aquila Esports. Spec is the last player surviving, and it's his duty to save his teammates. But it's very difficult. It seems like first he has to invest himself in a fight. Opponents welcome him with a grenade, and Utkarsh smashes him. Aquila Esports, they are out. Aquila Esports gets eliminated on 12th position. It all comes down to 11 teams and 30 players, EMT. एग्जैक्टली एक बहुत बढ़िया फाइट निकाला वहां पर, बट रेड लाइन के प्लेयर्स ऑलरेडी वो फाइट के अंदर एंगेज करते हुए नजर आएंगे। 2G की अगर हम बात करें, एक अच्छा ग्रेनेड का प्रहार वहां पर किया तो जरूर है, अगर कनेक्शन आते तो परेशानियां क्रिएट करेंगे। बिल्कुल एक बढ़िया नॉक आता हुआ नजर आएगा। चलिए एक और खिलाड़ी को टेक डाउन वहां पर जो है वो कर दिया जाएगा। टीम इनविंसिबल अभी तक के काफी ज्यादा पेशेंस रखा था, बट अब पूरी तरीके से जो मुश्किल है ना वो इनविंसिबल्स के लिए बढ़ती हुई नजर आएगी। बॉन्ग के प्लेयर जानते हैं, बखूबी जानते हैं कि अकेला प्लेयर बचा है, ये एक सही समय है पुश करने का, बट डेंजर बीइंग द लास्ट मैन स्टैंडिंग अपनी टीम के लिए वो सेवियर बनना चाहते हैं। हवक पे पूरी तरीके से बैठ चुके हैं। दे ऑलरेडी नो दैट कि अगर प्लेयर्स आएंगे तो आसान नहीं होगा यहाँ पर, बट निकलना पड़ेगा। और चलिए उनको भी यहाँ पर टेक डाउन जो वो किया जाएगा। एक करके प्लेयर्स नॉक होते नजर आएंगे। इट्स बिग अ 1v1 बैटल। शॉट लिया, एक बराबर पिक ऑफ किया जाएगा। क्या बढ़िया वो नॉक आता नजर आएगा, बट ओमेन माफ कर दिया। ओह माय गुडनेस, क्या कमाल का 1v4 वहां पर निकाल कर जाएंगे टीम। एक जीती हुई फाइट को हारेंगे टीम इनविंसिबल ई स्पोर्ट्स। क्या बढ़िया वो सेव करते हुए अपने प्लेयर्स को, और अब जो रिवाइवल है उसे प्रोसीड किया जाएगा। Out of nowhere, Ganja with that 1v4, 9mm Esports, they are out too. What's going on here? This match 4, this place is sizzling right now. What a play by Invincible Esports, Ganja OP. He's an absolute genius, and Invincible Esports, they are 3 players up. Such a spectacular play. What a blunder made by... Which team that was, EMT? I forgot the name. Who were the opponents? Wog Esports made a blunder there. Wog Esports made a blunder there for sure. I mean, that was so much easy. They almost knocked out 3 players there. Yeah. That was just cherry on top. They just had to close in and take down the last player, but they wasted so much time, and immediately Ganja, he revived Danger there, made him a bait, and then Ganja OP successfully going for that 1v4. Clean sweep against Team Borg. What a play. 6 teams. Exactly. 16 players are still alive. And Invincible Esports, they make it to the circle. Clasp will be interfering with that spray. Won't be able to make those valuable connections. Invincible Esports continues to enter the circle. Goes deep inside the circle. But this time Clasp finding those fine connections. And Danger might get knocked out. And yes, Danger will get knocked out. Oh, grenade! Where did that grenade come from? That was Utkarsh, I guess. Utkarsh with a surprise, Clasp on his knees. And now old generation, they are charging in. Flexi taking the control. Wintox closing in from the open areas. Mayank, he's waiting for his teammates to close in. Gonna be a 3v3 battle, but Utkarsh getting knocked out. Redline Esports interfering. Redline Esports going for the third party. Mayank versus Flexi is gonna be a 1v1 fight. It's gonna be a very important fight. But Flexi first, he prioritizes those grenades, and he finds those connections. Mayank gets knocked out, and can we see another monumental 1v4? This time it was overcooked grenade. Flexi makes a mess, and now he needs time there to pop in that first aid EMT. एग्जैक्टली यहाँ पर अपने आप को हील करना पड़ेगा। और यूजुअली आप ये देखिए कि सर्कल के अंदर कोई भी टीम्स अभी के लिए हमको देखने को नहीं मिल रही है। जितनी भी टीम है वो जोन के बाहर फाइट्स के अंदर इंडल्ज करते हुए नजर आएंगी, जो सबसे बड़ी दिक्कतें बना सकता है।
फिलहाल फ्लेक्सी अपने आप को रीसेट पूरी तरीके से कर चुके हैं, बट इट वाज गुड ना कि टीम एकेटी के जो प्लेयर्स है वो भी अपने खिलाड़ियों को जो रिवाइवल है वो पूरी तरीके से इनिशिएट कर चुके हैं। बट इंतजार, वो समय ज्यादा नहीं है प्लेयर्स के पास और सर्कल 24 सेकंड का समय बचा है। अब यहाँ पर इंस्टेंट निकलने की शुरुआत जो वो करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल वो शॉट जो है वो जरूर लेते हुए नजर आएंगे। विंटॉक्स अपने आप को थोड़ा सा सेफ रखेंगे, बट फ्लेक्सी आखिर वो एक सरप्राइज अटैक यहाँ पर बन जरूर सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अब जोन का भी जो डैमेज है ना वो भी परेशान करेगा, तो जितना जल्दी हो सके सर्कल की तरफ मूव करना वो बीइंग द गुड ऑप्शन फॉर द टीम। बट फ्लेक्सी वो एक खिलाड़ी को टेक डाउन वहां पर करेंगे, बट चलिए प्ले जोन वो समाप्त करेगा। टीम एकेटी नाउ द टॉप 3 टीम्स इन द लॉबी एंड लेट्स सी ये मुकाबले को विनर विनर चिकन डिनर में कंट्रोल कौन कर पाता है। बट रेड लाइन दे हैव कंप्लीटली एडवांटेज, सामने से टीम्स आती हुई नजर आ रही है, बस उनको इंतजार करना और शिकार करना और इस मुकाबले को अपना बनाना है। Glass, can he pull off a miracle? Udit, surely he's gonna stab him in his back. The trajectory coming on moles away. Glass taking down Udit, Invincible Esports, they are out, they are eliminated on 3rd position. Now Glass snaking it inside the circle, but the grenade was right on money. It is all over. Red Line Esports gets the job done now. They had no winner chicken in after 3 games, but in this 4th game, they do their job well. They get a winner chicken dinner, and the lead on the points table extends just like that. EMT. Exactly, यहाँ पर रेड लाइन ने जिस तरीके से परफॉर्म किया, आई थिंक दैट वाज कंप्लीटली आउटस्टैंडिंग। तारीफ करनी होगी रोटेशंस जिस तरीके से उन्होंने इनिशिएट करा है, कंप्लीटली यहाँ पर काफी कमाल की रोटेशंस। मैं आईजीएल की जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। ऐसे सिचुएशन में हमने कई बार देखा जहाँ पर लगा जरूर था कि रेड लाइन फंस सकती है, बट उनके आईजीएल जिस तरीके से अपनी टीम को रोटेशन दिलाया, दैट वाज कंप्लीटली आउटस्टैंडिंग। कमाल की रोटेशंस की वजह से ये जो मुकाबला है वो चिकन डिनर में तब्दील करा इस टीम ने। I mean, I'm really sad for Borg Esports. Their home was inside the circle. Milta was inside the circle. They have so much experience of Milta region, but despite of that, they didn't get that winner chicken dinner. But Red Line Esports, they secured Milta. They controlled the situation and they got that winner chicken dinner. That has been incredible for Red Line Esports. And they are just superb. I mean, the way Red Line Esports has showed their potential today, that has been very much surprising. We were expecting a lot from W2R. We were expecting a lot from Invincible Esports. But out of nowhere, this team came up, showed their true colors, their standard, and set themselves on the head of the table. That has been incredible. EMC. एग्जैक्टली यहाँ पर देखिए इनविंसिबल के प्लेयर जिस तरीके से गांजा ने वो 1v4 निकाला, दैट वाज कंप्लीटली आउटस्टैंडिंग। बट उसके बाद ना वो मौका उनके पास था नहीं। यूजुअली जो ब्रीथिंग स्पेस था वो ऑलरेडी काफी ज्यादा कम था और सामने टीम थी, उनको पता था कि एंट्री लेना इतना आसान नहीं होगा। तो शुड ट्राई कि चलिए व्हीकल लेकर आगे जाया जाए, अपने लिए पोजीशन ढूंढा जाए। बट अनफॉर्चुनेटली वो जोन का प्रेशर वो भी उनके लिए परेशान करा और एट देन जो प्लेयर्स कंपाउंड के अंदर होल्ड करे थे उन्होंने भी कंप्लीटली उन पर चार्जिंग करा और उस वजह से टीम इनविंसिबल वो आगे जा नहीं पाए। अदरवाइज अगर वो आगे जाते तो काफी और भी मजेदार देखने को मिल सकता था। बट team Red Line, I think I'm fan, literally the IGL was doing great job जिस तरीके से उन्होंने रोटेशन, क्योंकि हमने यूजुअली 404 के साथ उनकी जब फाइट चल रही थी वहां पर भी हमने सेकंड सर्कल के अंदर देखा था, ऐसा लगा था कि हाँ शायद वो गेट कीपिंग हो सकते हैं। बट जैसा आपने कहा था कि दे नो वेरी वेल कि रोटेशंस कैसे देना है, क्योंकि उनको पता है कि गेट कीपिंग हो सकते हैं। फिर वहां से वो कंप्लीटली एक वाइड रोटेशन देकर मिल्टा के अराउंड से आए एंड आई थिंक वही एक की पॉइंट था उनके लिए जो इस मुकाबले में काफी हेल्प करा और एक बढ़िया चिकन डिनर लेकर गए वो प्लेयर्स। Absolutely. Well, ladies and gentlemen, you're watching SKOAR College Cup Delhi Edition Grand Finals, and we just finished off with match number 4. And now it's time to take a short break. We'll be right back with live action from match number 5. It's going to be Miramar. Don't miss it.
Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching SKOAR College Cup Tele Edition Grand Finals, powered by OPPO, storage partners SanDisk and Digit. I'm Saithar and I welcome you all. Along with me, it's EMT Gaming on the Hindi casted desk. How are you doing, EMT, first of all? After the last game, after the chaos we witnessed in the last game, what's your expectation from this fifth Miramar? देखिए एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई है और मज़ा आएगा देखने में कि किस तरीके से अब अगले गेम्स में खेलती है, क्योंकि अगला मुकाबला मिरामार एंड ऑलरेडी नो कि मिरामार में जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहती है, थोड़ा सा स्लो अप्रोच के साथ प्लेयर्स खेलना प्रेफर करते हैं। तो क्या वो स्लो अप्रोच या वो यूजुअली हम अर्ली फेसेस में वो ड्रॉप क्लैशेस देखने को मिलेगा या नहीं, वो तो सारी चीज़ें हमको देखने को मिलेगी। बट चलिए चलते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग्स के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो अभी के लिए ओवरऑल स्टैंडिंग जहाँ पर रेड लाइन #1 देखने को मिलते हुए नजर आएंगे विद दैट वन चिकन डिनर 58 पॉइंट्स के साथ #1 पर हमको देखने को मिलेंगे। ओल्ड जनरेशन विद 42 पॉइंट्स, इनविंसिबल विद 39, W2R विद 32, टीम एक्वाला विद 31 आपको देखने को मिलेंगे। कोडर 404 विद 23 पॉइंट्स, बॉन्ग विद 23, AYKT विद 21, ब्लास्टर विद 21 हमको देखने को मिल जाएंगे। और अब देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हम पॉइंट्स टेबल में देख रहे हैं वो डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पर टीम्स के बीच में। मतलब एक खराब गेम आप नीचे आ सकते हो, एक अच्छा गेम आप ऊपर जा सकते हो। Obviously, this game, if any team performs well, it can change a lot on the points table. But here we go. Ladies and gentlemen, it's match number 5, SKOAR College Cup Grand Finals, Day 1, powered by OPPO, along with storage partner SanDisk. And the flight path goes by this. Big eagle again in the sky, moving from Puerto Paraíso towards El Pozo, basically towards the western regions of El Pozo, the flight path favoring the southern and the western regions of Miramar map. Southwestern regions are being favored too. Chumacera, it will be very much easy to access Chumacera. The drop locations in the southern regions, it will be very much easy for teams to access them. Northern regions, it's quite difficult to access the northern regions. Laco, Breda, Torre, Humida, Campo Militar, Cruz del Valle. These regions, teams will find it very much difficult to access. Puerto Paraíso is being accessed by Team BL. Invincible Esports, they're heading towards Los Leones regions. Maybe Team AKT, they head towards Pecado. But right now, Team Borg, they're heading towards Pecado regions. If you talk about AKT, I guess they're heading towards La Vendetta. Team Valor, they're doing the same thing. They're heading towards Pecado. Maybe they extend their glide and maybe they might try to access San Martin. But the first circle has been initiated and the first circle is favoring the southwestern regions of Miramar. Chumacera is deep inside the circle. We can say that almost Chumacera is present at the center of the circle. Meanwhile, 9mm, I guess they're heading towards El Pozo. They might even extend their glide and might try to access La Cobria region CMT. एग्जैक्टली यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और कंप्लीटली जो सर्कल है ना वो बहुत ज्यादा क्रेजी सर्कल हमको देखने को मिल रहा है। चुमासेरा के अराउंड का वो सर्कल्स रहेंगे, बट अर्ली फेसेस में जो क्योसेस है वो इनफैक्ट हमको जो है वो देखने को मिलेंगे। और पिछले मुकाबले में हमने 9mm को देखा था, थोड़ा सा अलग एरियाज पर उतरे थे, कोई भी टीम्स आसपास नहीं थी, बैटल्स नहीं हुए थे। बट इस बार दो टीम की चुनौती उनके सामने रहेगी। और इंपॉर्टेंट होता है ना कि किस तरीके की जो शुरुआत है वो टीम्स करते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि मिरामार में लूट करने में समय काफी लगता है और इनफैक्ट उतनी खासी जो लूट है वो मिलती नहीं है। हीलिंग्स की काफी जो कमी है वो साफ साफ यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। और तीनों ही टीम्स को निकलना भी है क्योंकि बड़ा फासला रहेगा। तो अब डिसीजन मेकिंग जो है ना वो बहुत ज्यादा क्विक करना पड़ेगा इन तीनों टीम्स को। अगर फाइट के अंदर इनिशिएट कर रहे हैं तो जल्दी कर रहे हैं, अदरवाइज अगर डिले करेंगे तो शायद प्रॉब्लम्स तीनों ही टीम्स को फेस करनी पड़ सकती है। 9mm Esports, they have numbers disadvantage. I mean, they wouldn't want to Yeah. invest themselves in a time-consuming fight. So I believe they will just grab vehicles and try to access the circle because the last match, it was misery for them. And 9mm Esports, this is day 1. They still have opportunities. They still have games left. But in order to finish on a positive note in day 1, they need to start
right here, right now, from this Miramar game. They should write a story of comeback. But Aquila Esports, Novajon, what was he waiting for? He had a clear opportunity there. Could have knocked out Steven God, could have flushed him out too. He waited so much. Now Steven God, he's out of his sight. What is going on in El Pozo and Aquila Esports? They are closing in that distance. 9mm Esports might look forward to go for the third party. I was talking about 9mm Esports just retreating towards the zone, but here the situation has completely changed. He can surely go for that third party, but they got to be very much alert because they will get just one chance and they have to nail it. Meanwhile, Monk, can he take down Zahir? Then now he can't take down Zahir. He had no clue. Zahir was absolutely clueless, and Monk won't make that mistake. Not forward shot. He's pushing into Spec, taking down another player. Even Kanish will be sent out of this game. I guess T1 Wolf, he's the last player surviving. 9mm Esports didn't even get a chance to close in. 9mm Esports has no opportunity to go for that third party. They better head towards the circle. But now, Aquila Esports, responsibility on their shoulders. They need to finish this fight without losing any player. Spec gets knocked out. Spec gets knocked out. Monk is barely surviving in 10 HPs. Monk now, he closes it. And Spec, he will be immediately flushed out. Carry finishes off T1 Wolf. And this is what I was talking about. Aquila Esports needs to understand the responsibility of winning this fight without losing any player. But they lost Spec. With this numbers disadvantage, it will be difficult for them to sustain in the end circle EMT. जी, बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ पर एक प्लेयर गवा दिया। यहाँ पर अगर कोई प्लेयर गवाते नहीं तो शायद काफी मजेदार हो सकता था, बट इनफैक्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि बाकी जो दो टीम्स थी जहां पर हम A7 को देख रहे हैं और 9mm को देख रहे हैं, पूरा मौका था इनके पास वो थर्ड पार्टी करने का, बस वो शॉट्स नहीं ले रहे थे, इंतजार करते, बट अब पूरी तरीके से तैयार है। एक अच्छा बैटल रहेगा 3v3 का, वो प्रॉपर बैटल दोनों ही टीम्स के बीच में हमको देखने को मिलेगा, बट मैं बस इंतजार कर रहा हूँ कि A7 वो इस फाइट के अंदर कब एंट्री लेते हुए नजर आते हैं। एक अच्छा स्प्लिट है प्लेयर्स के पास, काफी क्रूशियल ये बैटल रहेगा क्योंकि ऑलरेडी अभी एक बैटल जीता है एक्विला के प्लेयर्स ने। ओह बट दैट ग्रेनेड वाज कंप्लीटली आउटस्टैंडिंग। एक कमाल नॉक आता नजर आएगा और ऑलरेडी उनको जो प्लेयर्स है बाकी प्लेयर्स की भी इन्फो जो है वो रहने वाली है और पुश इन करते हुए नजर आ सकते हैं। एक 1v उनका बैटल रहेगा टीम एक्विला, उनके लिए दिक्कतें हो सकती है बट साइडलाइंस पर टीम 9mm के भी प्लेयर्स को पिक किया जाएगा, बट लीजिए एक और खिलाड़ी को शट डाउन वहां पर किया जाएगा। देखते ही देखते कंप्लीटली एक्विला ई स्पोर्ट्स के प्लेयर्स एक ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए नजर आएंगे और अब बचते एक सोलो प्लेयर। ओ बट क्यारी क्या कमाल का एंगल था उनके पास, दो प्लेयर्स टेक डाउन कर दिए जाएंगे, बट स्टिल आप ये देखिए कि A7 दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। This is a huge twist in the story. There was no need. Halusa had no clue about the position of Carry. And now he gets knocked out. It's time for Dustin to go in open areas. Dustin, will he take the risk? So much risky. Halusa, he'll be immediately flushed out. Alpha Yugoji still screaming for help. Carry won't let Dustin to go in open areas. Carry cannot leave that particular position. But Dustin, he dares to go in open areas, and now it's time for Carry to explode on Dustin. No way, you cannot prone there, Carry. It will take time to get up and then deal that spray. No freaking way. Carry allowed Dustin to go for that revival. 9mm Esports now, they will be 2 players up. That was a hell of a mistake made by Carry is what I feel, EMT. हाँ एग्जैक्टली यहाँ पर पूरी तरीके से रीसेट करने का मौका दे दिया, एक के बदले अब 2 आ चुके हैं, वो थोड़ी सी परेशानियां बढ़ा सकते हैं कैरी के लिए। एंड यहाँ से अब कैरी का अगला स्टेप क्या होता है ये देखना काफी क्रूशियल रहेगा। यूजुअली उस हाई एरियाज के अराउंड अब वो नीचे आते हुए नजर आएंगे और आई थिंक पुशन करना चाहते हैं, आगे की तरफ आना चाहते हैं, बट पीछे से आई थिंक A7 के प्लेयर्स को भी अब इंटेल मिल चुकी है, ऑलरेडी कैरी को स्पॉट कर लिया गया है, कुछ शॉट्स भी लिए गए, डैमेज काफी ज्यादा पड़ चुका है कैरी के लिए, और अगर हीलिंग्स नहीं है देन मुश्किल होगा यहाँ से सर्वाइव करके जाना। और 9mm काफी खुश होंगे, एक जीवनदान उनको मिला है और उसका पूरा फायदा उठाया डस्टिन, एक एंगल पे जाने की कोशिश, बट टॉनी आप देखिए वो पूरी नजर कैरी के ऊपर रहने वाली है और बिल्कुल कैरी शायद हीलिंग्स की जो कमी है ना वो साफ साफ देखने को मिल रही है। कितना देर इंतजार करेंगे क्योंकि पहला सर्कल केवल 36 सेकंड के अंदर वो समाप्त हो जाएगा और 300 350 400 मीटर का आसपास का जो फासला है वो भी टीम्स को तय करना पड़ेगा, कितना जल्दी वो निकलते हैं। बट रेड लाइन के प्लेयर्स उनके भी खिलाड़ियों को टेक डाउन फिलहाल के लिए किया जा रहा है और चलिए अब जोन का जो डैमेज है वो यहाँ पर पड़ना स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट कैरी अपने आप को हील जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं धीरे धीरे, बट A7 काफी समय यहाँ पर A7 ने लिया और मैं समझता हूँ कि शायद A7 का यही प्लान था कि आगे जो टीम्स है उनको लड़ने दीजिए,
पहले हम अपनी लूट पर फोकस करेंगे। एक बार लूट कंप्लीट हो गई, उसके बाद हम फाइट्स के अंदर इनिशिएट कर सकते हैं। और अब आई थिंक वो कंप्लीटली नजर आ रहा है कि लूट कंप्लीट हो चुकी है। अब वो बड़े आराम से इन फाइट्स के अंदर जा सकते हैं, और अगर डिले भी होता है बट इसी बीच कैरी उनको समाप्त यहाँ पर किया जाएगा। एलिमिनेशन देखने को मिलेगा, और अच्छी बात है 9 उन्होंने भी ज्यादा समय लिया नहीं, डिसएंगेज करके डायरेक्टली अब सर्कल की तरफ प्रस्थान कर चुके हैं वो। Brilliant that was by 9mm. Second circle has been initiated, well, ladies and gentlemen. We'll be going for a Northern Hardship. A7 Esports, after so much patience, they got return. They got a finish there. Aquila Esports getting eliminated on 14th position. And Aquila Esports, I don't know why they always mess up in the first Miramar and play well in the second. Again, that same thing happened. Aquila Esports messing up in the first Miramar. And now it's time to focus on the last game of the evening, the main event of the evening. Last Miramar game, which will be played after this. A7 Esports, now it's time to move towards the circle. They have no vehicles right now. Oh, fine. Tony got one. Master got one. Ares got one, alright. A7 Esports, they can easily move towards the circle. No need to worry. I was concerned about the rotation, but no need to be concerned. A7 Esports, they know what they are doing. Total amount of 30 teams and 49 players are still alive. El Pozo was chaotic. So many teams were there in El Pozo region. So many fights we saw. Finally, A7 Esports, they stand tall with total amount of just one elimination. We're expecting more from their side. But now it's time to move towards the circle. Meanwhile, Borg Esports, they have a really good position inside the circle too. They're always known for all the rotations. But they gotta carry forward their momentum too. They grab the circle really well, they anticipate the circle really well, but somewhere they are lacking in gunpowder is what I feel. Head-to-head fights, they are not able to win. They are very close to Picado. Invincible Esports Gonza will get that free finish. That was a miserable spray. Could have been much more accurate. And Shobit, he's trying to escape there. Gonza, a checkmate from his side. Now Shobit, he cannot escape because the back tire of the vehicle was penetrated with those bullets. And Gonza easily taking down Shobit. And last contenders. Lost a player here. एग्जैक्टली यहाँ पर प्लेयर गवा दिया, और गांजा तारीफ करनी होगी कि एक और बढ़िया जो फ्रैग है वो सिक्योर करा है। ध्रुव की अगर हम बात करते हैं, पोजीशनिंग उनकी भी काफी बढ़िया रहेगी। लास्ट कंटेंडर के प्लेयर्स, परेशानियां थोड़ी सी उनके लिए भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, बट एक अच्छी शुरुआत इनविंसिबल के लिए इस मैच में भी हो चुकी है। पिछले मैच में भी फिनिशेस निकाले थे, इस मैच में एक अच्छी पोजीशनिंग उनके पास है, और अब कंप्लीटली वो ट्राई करेंगे कि लास्ट कंटेंडर के जो प्लेयर्स है ना उनको बैकफुट पर ढकेला जाए, बट निकलना चाहते हैं। एक सही डिसीजन वहां पर कि ज्यादा समय तक इंतजार नहीं करा, कंपाउंड्स के अराउंड वो चले गए, और जाकर उन कंपाउंड्स के अराउंड अपने आप को होल्ड करते हुए नजर आएंगे। बट स्टिल अभी भी एक जो प्लेयर है ना वो फंसा हुआ है टीम लास्ट कंटेंडर का, और ध्रुव उनकी नजर पूरी तरीके से उस खिलाड़ी के ऊपर रहेगी, और इवन इंटेल उन्होंने गांजा को भी दे रखा है। और चलिए पीछे से रेड लाइन के प्लेयर्स का भी आगमन होता हुआ नजर आएगा, और लीजिए रेड लाइन के प्लेयर्स, उनके लिए वो शिकार मिला, फिनिश करेंगे और कंफर्मेशन बड़े आसानी से सिक्योर करते हुए नजर आएंगे। बट रेड लाइन एक अच्छा नॉक वहां पर आता हुआ नजर आएगा, और अब यहाँ पर देखने वाली बात होती है कि क्या रेड लाइन वो पुशन करते हुए नजर आएंगे या इंतजार करेंगे एक आध और नॉक का। शायद एक आधा अगर और नॉक आता है तो ये टीम पुश करते हुए नजर आ सकते हैं, बिकॉज जानते हैं ऑलरेडी टेबल टॉपर्स है, थोड़ा बेहतरीन खेलने की जरूरत होगी, क्योंकि हर मैच में अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तभी जाकर आप अपने #1 को रिमेन रख पाओगे। अदरवाइज एक भी खराब मैच आप डायरेक्टली #2 और 3 पर जा सकते हो। Obviously, they need to finish well. They played so well throughout the day. Now it's time to finish well. Though you didn't start well, but if you finish well, you gain momentum for the next game whenever you play it. For Redline Esports, this is very much important. Last two Miramars, and this happens so many times. Most of the times I've seen this happening. Teams throughout the day, they play so well, but in Miramar especially, they fumble and lose all their position, whatever they've fished out throughout the game. That all goes in vain. Redline Esports, they need to control themselves. Even if they compromise in terms of aggression, it's absolutely fine because they have a humongous lead on points table. Separation they are making with #2 team, that is huge. So Redline Esports, even if they compromise in terms of finishes and make it to the top 3, they will have the momentum, they will have the form, and still have the lead and the #1 with them. They've already lost Bakri. Well, his name is Bakri, but definitely he's not GOAT. So yeah, Redline Esports, after that first setback, maybe they are just poking their enemies from a distance, and they are not really ready for those close range risks. But from the back end areas, we can see Code 404, they are rotating too, and somehow Redline Esports, they felt the presence. They are securing themselves.
But with this, third circle has been initiated too. Team BL, as soon as they found out that they are outside the circle, they immediately grabbed their vehicles and they started moving towards the circle, EMT. एग्जैक्टली और आई थिंक जिस तरीके से हमने स्टार्टिंग फेज में फाइट्स देखी उसके बाद कंप्लीटली जो शांति है ना वो छा चुकी है मिरामार के अंदर। अब बस केवल बुलेट्स का एक्सचेंज हो रहा है, टीम्स के बीच में नॉक्स आ रहे हैं, बट वो फिनिशेस को अभी भी तब्दील नहीं किया जा रहा और इंतजार करना पड़ेगा उन फाइट्स के लिए। चौथे सर्कल तक हमको शायद लगता है कि इंतजार करना पड़ेगा, बट हम्बल आईचल अभी के लिए अपनी जो रोटेशन है वो एग्जीक्यूट करते हुए नजर आएंगे। ट्राई करेंगे कि जल्द से जल्द सर्कल की तरफ बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी जो फासला है वो काफी ज्यादा रहने वाला है। एंड इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ जाकर वो अभी के लिए होल्ड करना प्रेफर करते हैं। ब्लास्टर के प्लेयर्स उनके लिए भी जरूरी है, ये मुकाबला रहेगा, चाहेंगे कि अच्छा एंड करें यहाँ पर इस मुकाबले के अंदर। यूजुअली क्रूशियल रहेगा कि किन एरियाज के अराउंड जाते हैं, बट रेड लाइन के प्लेयर्स, ये टीम तो ऐसा लग रहा है ना कि बस प्लेयर्स दिखने की देरी है। जहां पर भी प्लेयर्स दिखते हैं इंस्टेंटली ये फाइट के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं, भले वो 3 प्लेयर्स हो या 2 प्लेयर्स हो, उनको किसी का डर नहीं है। प्लेयर्स अगर दिखेंगे तो ये फाइट्स के लिए जाएंगे और एग्जैक्टली वहां पर नॉकआउट निकाला तो जरूर है, क्या वो फिनिश कर पाएंगे? टीम वेलोर के प्लेयर्स वो चाहेंगे कि किसी तरीके से जो रिवाइवल है उसे इनिशिएट किया जाए, बट साथ ही साथ उनके आगे एक और टीम उनको देखने को मिल रही है। तो यूजुअली आसान तो नहीं होगा, बट मुझे लगता है कि वो स्मोक्स डिप्लॉय किए गए, बहुत इजीली जो रिवाइवल है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा। The frag might get stolen because I saw whole generation in the back end areas. Aril Yathad, he pushed himself too much hard there. Completely exposed himself. Gets knocked out, gets a reality check. He'll be getting that revival too. Too much risk taken by Yathad. You've got to keep one thing in mind. You cannot take risks right now because you have to save yourself for the edge circles. RL Esports could have lost a player here, but they'll be lucky enough that it didn't. And as I was saying, the frags might get stolen because I saw old generation in the back end areas. With old generation, they are keeping the distance right now. They're not risking for those close range fights. Meanwhile, if you talk about team AKT, last game was pretty much good for them as they secured hashtag 2. Invincible Esports in the last game, they got hashtag 3 Redline Esports with a brilliant performance. They got that winner chicken data. And I'm expecting a lot from Team AKT as well because the first initial 3 games were not that great for Team AKT. But in the last game, the 4th Erangel, which was played, AKT Esports showed resilience, and that was a breakthrough for them for sure. And now there will be a change in momentum from Team AKT Esports side. And they've made it to the top 30, haven't lost any player. Maybe they haven't initiated any fight yet. But the concerning part is they have less vehicles. They have just one vehicle, and all four players will be traveling with just one. This is concerning, and especially you will want to avoid these factors in Miramar because the vehicle pace is quite low. The terrains and all don't really allow you to drive at a speedy pace. So AKT Esports, I mean, if they maintain the distance, I guess that's just luck favoring them. And for now, the pathway they are choosing to enter the circle seems like it's completely safe for them. And hope so they reach the circle safely. But with this, ladies and gentlemen, it's time for fourth circle to get initiated. And AKT Esports, there won't be much interference between because no traffic in between. The circle with a Western hardship. And now AKT Esports, it's important for them to find some more vehicles because with this one vehicle, they surely cannot make it to the circle. Meanwhile, Vogue Esports, they are in Chumasera. They will start moving as well. They are far from the circle. And now AKT Esports, they might get challenged. Arel Anmol! As soon as he opened his fire, straight away he made it those connections. AKT Esports, they were lucky that no player got knocked out. Payu, he had an off-guard angle, but no connections. Yathat with that grenade. No connections will be made again. AKT Esports finding it very difficult to make situation manageable for them. And now, I guess this grenade might do the job. Yathat made some connections, few connections. Lasp pushing in and gets knocked out. Lasp surely overcommitting there. Look at his teammate, how far they are from him. No cover was given to Clasp there. That was surely a huge mistake. RL Esports, they are completely in control. Anmol knocking down BHM. Yathat knocking down Mayank. And within a fraction of a second, AKT, they are eliminated on 13th position. And this happens most of the time. Whichever team plays well in a particular game, the next game they fumble. And AKT Esports, they have fumbled. But Team RL, they are really swimming against the tide here, EMT. एग्जैक्टली बहुत कमाल का बैटल निकाला और शायद थोड़ी सी गलतियां हुई वहां पर एकेटी की तरफ से फाइट्स में, दैट्स व्हाई कंप्लीटली उन्होंने उस फाइट को लूज करा। बट टीम वेलोर, अब उनकी नजर कंप्लीटली जो रहने वाली है वो टीम रेडलाइन के ऊपर रहेगी और इंपॉर्टेंट होता है बट तारीफ करनी होगी रेडलाइन की। एक प्लेयर गवाया है, उसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने बैटल के अंदर अपना कंटेंट दिखाया वो बहुत ज्यादा शानदार है और ये दिखाता है कि पिछला मुकाबला चिकन निकाल कर आए। कॉन्फिडेंस की कोई कमी यहाँ पर जो है वो रेडलाइन के प्लेयर्स के लिए नहीं रहने वाली है। बट अब जो डिफिकल्टीज है ना वो बढ़ेगी क्योंकि सर्कल का फासला
आपको तय करना, और ऑलरेडी जो साइड लाइन्स पे प्लेयर्स है वो बस इंतजार कर रहे हैं कि रेड लाइन निकले और हम यहाँ से वो स्प्रेज ले। बट ये भी है कि दोनों ही टीम्स को वो जोन का डैमेज परेशान करेगा, दोनों ही टीम्स को यहाँ पर निकलना पड़ेगा। एंड आई थिंक इट वाज अ गुड डिसीजन बाय जूसी, वो डायरेक्टली यहाँ से व्हीकल उठाकर निकलना स्टार्ट कर चुका है। टीम वेलोर भी वो चाहेंगे नहीं, बट लीजिए जार्टन को टेक डाउन वहां पर किया जाएगा। ये थोड़ी गलती जरूर हो सकती है, रिवाइवल की प्रक्रिया उसे इनिशिएट भी करना और इवन जोन वो भी तो यहाँ पर आपके लिए दिक्कत बन सकता है। और अधिकतर इस समय ऐसी चीजें हम कई बार देखते हैं कि जब भी प्लेयर्स को जोन के अंदर जाने की बारी होती है तो उस समय पर कोई नहीं तो कोई वो एक खिलाड़ी ऐसा होता है जो knock हो जाता है, बढ़ती है। बट सामने रेड लाइन के प्लेयर्स के ऊपर शॉट लिया, डैमेज भी यहाँ पर दिया जाएगा और यहाँ एक खिलाड़ी वहां पर नॉक होता नजर आएगा। देखते ही देखते कंप्लीटली जो परेशानियां है वो बढ़ रही है और पूरी टीम को वाइप्ड आउट कर दिया जाएगा। टीम वेलोर उनका एलिमिनेशन होता हुआ नजर आएगा, बट टीम रेड लाइन के प्लेयर्स वो प्ले जोन का शिकार होते हुए नजर आएंगे। और अब केवल 2 प्लेयर्स बचे जरूर है, जिसमें से शायद जोन के अंदर एंट्री मिलना यथार्थ के लिए तो इजी होगा, बट नहीं, शायद उनके लिए भी इजी नहीं होगा। फ्लेक्सी वो डाउन करेंगे, ओल्ड जनरेशन के प्लेयर्स पिक करते हुए नजर आएंगे। एंड ओल्ड जनरेशन दे वाज लुक बेटर इन दिस गेम। Yathard gets knocked out too. Timarl is about to get eliminated. Anmol gets taken down. Vayu gets taken down. And I guess Timarl, they are out of this game. They are eliminated on 11th position. That's such a sad ending after so many frags they got. Aril, I mean, they performed so well with their gun, but they couldn't make it to the circle. 5th circle is almost like a dead zone. They cannot spend time inside the blue zone. Old generation now. The gates are open for them. All the big teams, they've been eliminated. I guess Invincible Esports, they are still hanging in. Invincible Esports, yes, they are still hanging in. So yes, they got to compete with just one big team. If they eliminate Invincible Esports now, it will be a clear pathway for them to grab that winner chicken dinner. But Utkarsh right now got knocked out. Borg Esports, they're troubling. Team Invincible Esports for now. Dustin OG on the other end, he's fighting some other team. 9mm Esports, they are into action. Utkarsh needs a revival here. Will that be possible? Striker on the other end. Old 404 on the positive side of the finish feed. But now on the negative side, as Yash gets knocked out, immediate retaliation there from Team A7. Overpowered Esports has a spectacular area inside the circle. They are completely isolated, completely separated, no team around them. They can just relax. They can just do those third parties. 9mm Esports might stab them in the back, but that's really difficult to happen. But Overpowered Esports completely in control. Utkarsh again gets knocked out, and this time because of the blue zone, and this time he gives up. Disaster tried his very best to bring Utkarsh back to life, but that didn't really happen. And now, Old Generation with just 3 players, they are moving towards the circle, but Flexi losing his HP. And no! BLM Belijil knocking down Mr. Joker. Flexi gets knocked out as well. Kamlesh knocking down Flexi. And Disaster, he is the last ray of hope now for Old Generation. I thought that Old Generation might change the factors, might turn the tables. And now Old Generation, they're about to get eliminated. And I guess Overpowered Esports might be the team who can grab that winner chicken dinner AMT. एग्जैक्टली बहुत अच्छा स्पॉट उनके पास है, बट लीजिए डेंजर वहां पर जो कंफर्मेशन है वो सिक्योर करते हुए नजर आएंगे वो के प्लेयर्स को। और इनकी बैटल पर चलिए हिसाब बराबर करा, राहुल ने समाप्त करा वहां पर। पिछले मैच में इनविंसिबल ने एलिमिनेट करा था, बट चलिए इस बार हिसाब को बराबर करा, एंड दैट वाज बीइंग गुड फॉर द प्लेयर्स। बट 404 के अंश एक अच्छा ग्रेनेड का प्रहार वहां पर किया तो जरूर था, बट ब्लास्टर का भी खिलाड़ी वो स्मोक के अंदर रहने वाला है जिनकी एचपी ऑलरेडी काफी ज्यादा लो है, बट चलिए अपने आप को उन्होंने रीसेट करा तो जरूर है। स्ट्राइकर कंप्लीटली यहाँ पर स्ट्राइक कर रहा होगा अपोनेंट्स के ऊपर और टेक डाउन करने की कोशिश, बट जोन एक बार फिर हम सर्कल को ऐसा देख रहे हैं जहां पर सर्कल के इर्द गिर्द टीमें जरूर है, बट जोन के अंदर कोई टीम नहीं है, एंड ये बहुत ज्यादा मुश्किलें क्रिएट करेगा। बट E7 वाज लुक्स गुड। ओह दैट ग्रेनेड वाज कंप्लीटली आउटस्टैंडिंग। E7 के खिलाड़ियों को पिक किया जाएगा और मौका बहुत अच्छा है 404 के पास। अगर वो स्लैमन डालते हैं तो बहुत आसान होगा E7 को एलिमिनेट करना, बट स्टिल वो इंतजार कर रहे हैं, वो पुश करने का कोई भी नजर जो आ नहीं रहा है कि पुश करना चाहते हैं, और रीसेट का मौका दे दिया है कंप्लीटली। देखिए E7 को मौका आपने दिया है, वो रीसेट करेंगे और फिर कहीं ना कोई दिक्कतें वो आपके लिए भी बढ़ा सकते हैं, बट चलिए यश अब व्हीकल उठाकर डायरेक्टली सर्कल की तरफ यहाँ पर बढ़ना चाहेंगे। टीम 404 ऑलरेडी 5 फिनिशेस है। अच्छी बात है कि कोई भी प्लेयर गवाया नहीं है अभी तक के 404 ने, वो भी एक प्रबल दावेदार है इस मुकाबले में चिकन निकालने के। Absolutely. 404 is lucky here that they got a way to make it to the circuit, because I were in the place of A7, I wouldn't really allow them to do so. 404, they're exploding on team Overpowered Esports. Ansh getting knocked out, but it's fine. 404 still controlling the situation. Overpowered Esports will be eliminating. They will be eliminating 9mm. 9mm gets eliminated on 5th position. 4 teams and 30 players. They are still alive. Overpowered Esports,
My bet is on them. Can they get this winner chicken dinner? Fresh knocking down Viper. And now things getting intense for overpowered Esports as well. 404, they don't have much room. They don't have much space. They're 4-man strong. Less breathing space. Less vehicles. Travel. Overpowered Esports completely submissive. They have their back against the wall. They can't do anything. Pashu barely surviving in 10 HP. Striker gets knocked down. Kamlesh handling the situation for now and pressure. He will be putting back that pressure on 404. Similarly, overpowered Esports, they will buy some time for themselves. 5 eliminations have been secured till now. And now overpowered Esports will be focusing on W2R. And you cannot count W2R out. They are still in contention. W2R Esports, they smashed a winner chicken dinner as well today. The very second game, in the very first Wrangle game. So W2R Esports, they are still in contention. But Kamlesh with that brilliant spray, Adi gets knocked out. And now it's time to move towards the circle and let's see how sharp those reflexes are. And W2R immediately they go for that slam in. They have no idea about Kamlesh's location. Wow, he's trapped in open areas. Meanwhile, 404, they are making it to the circle, but Kamlesh grabs the attention of Code 404. Why is the last player surviving? But W2R, they've collapsed. Wow, with that spray, Yash gets knocked down. Only 2 players are alive for Code 404. And I guess OPPO, he should go for that revival instead of going for that frag. But now he's focusing on Krish. It's a 1v1 fight. Oh no, that grenade was right on target and it is all over. Code 404 ends things in style. Winner chicken dinner for them, KMT. या एग्जैक्टली क्या बढ़िया वो ग्रेनेड था. एक ग्रेनेड ने पूरी तरीके से काया पलट के रख दी और एक बढ़िया विनर सेकंड डिनर 404 के प्लेयर जो है वो निकाल कर गए. एंड आई थिंक मुझे लगता है ना कि एक सही फैसला लिया A7 के ऊपर ना पुश करना. वो एक सही डिसीजन उनके लिए जो है वो रहा. 404 एक बढ़िया गेम निकाल कर गया. एंड आई थिंक एक समय पर ऐसा लगा कि शायद थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है. मे बी चांसेस W2R के पास भी थे कि हाँ वो चिकन निकाल कर जा सकते थे. बट सिचुएशन को जिस तरीके से चेंज आउट करा है, आई थिंक दैट वाज बीइंग ट्रेमेंडस एंड कंप्लीटली इट वाज अ गुड गेम. और 404 उनको जरूरत भी थी एक अच्छे चिकन डिनर की. और इस मुकाबले में चिकन निकाल कर कॉन्फिडेंस काफी बढ़ेगा उस टीम का. Absolutely. They can finish this day in a positive way. Till now, it was absolute misery for Code 404. They were not able to make it to the end circle. But this game changed everything for them. I guess Miramar is their strength because in Rondo, we saw them securing finishes in the initial stages. They started really well. But after that, a wrangle, series of errors, a series of mistakes. And now, Miramar has been a great breakthrough for them. And now, ladies and gentlemen, it's time for a short break. We have just finished off with match number 5 and now it's time for a short break. We'll be right back with our main event of the evening. Till then, stay tuned. Do hit that like and subscribe button.
Welcome back, ladies and gentlemen. This is SKOAR College Cup Delhi Edition Grand Finals, powered by OPPO, along with storage partner SanDisk. I'm Saithar and I welcome you all to our main event of the evening. After a few minutes, we'll be starting off with our last match of day one. It will be Miramar, and along with me, it's EMT as my co-caster. Welcome, EMT, again. थैंक यू ब्रदर। और चलिए चलते हैं ओवरऑल स्टैंडिंग्स के ऊपर, क्योंकि अब उछल कूद जो है मुझे लगता है कि ओवरऑल स्टैंडिंग में जरूर हुआ होगा। और बिल्कुल रेड लाइन बहुत ही अच्छा, कमाल की जो कंसिस्टेंसी है उसको लेकर चल रहे। इस गेम में भी अच्छे पॉइंट्स निकाले थे, 66 पॉइंट के साथ ऑलरेडी #1 पर हमको देखने को मिल जाएंगे। ओल्ड जनरेशन विद 50 पॉइंट, कोडर 404 48, एक अच्छी छलांग उन्होंने भी मारी है। इनविंसिबल विद 43, W2R विद 41, एक्वाला विद 36 हमको जो है वो देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ बोंग विद 27 और ओवर पावर्ड विद 25 राइट नाउ। ब्लास्टर विद 23 देखने को मिलते नजर आएंगे। आई थिंक इट वाज बीइंग अ गुड एंड बट ओवरऑल यूजुअली अगर हम पेज 2 की बात करें तो वहां पर टीम्स को काफी मशक्कत करनी पड़ेगी अगर पेज 1 पर आना है। तो यहाँ से आखिरी गेम में भी चाहेंगे कि जल्द से जल्द एक अच्छा गेम अगर एंड करते हैं तो आई थिंक इस डे को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं। Absolutely. This last Miramar game is going to be very much crucial, and I believe the teams which are on the second page, as you said, they will really try to fight hard. Maybe they'll play passive because they are competing for upcoming games as well. So I don't think so. They will just try to attack the teams which are on the top of the table. But ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. SKOAR College Cup Grand Finals Day 1, powered by OPPO, along with our storage partner SanDisk. This is match number 6, and here we go. Big Eagle again in the sky, moving from Villa Del Mar towards El Azahar. Basic flight path. Very brilliant flight path favoring the central regions of Miramar map. Will make it difficult for players to access the northern regions. Similarly, will make it difficult for players to access the southeastern regions. Heading towards Puerto Paraíso will be quite difficult there. The question is, can players access El Pozo? And just like the last game, can we see the chaos in the initial stages from El Pozo regions? Well, Team Code 404, they are trying to head towards El Pozo regions. Maybe they stop their glide nearby Monte Nuevo and grab vehicles, and then they'll try to access El Pozo. But along with this gliding process, the first circle has been initiated, and the first circle is completely favoring the western regions of Miramar map. And the circle is quite associated with the flight path too. Most of the teams right now, they are present inside the circle. Very few teams are there which will be facing difficulties to enter the first circle, EMT. एग्जैक्टली यहाँ पर। और आसपास अगर हम देखें तो पहले जो गेम हमने देखा पिछला मेरा से जो सर्कल्स इस बार आएगा, बट सरप्राइजिंगली इस बार एल्पोजो कोई गया नहीं है। हाँ, एलिजर में हमको कुछ बैटल जो है वो जरूर देखने को मिलते नजर आएगी और मजा आएगा। बट 9mm के प्लेयर्स अभी भी स्ट्रगल यहाँ पर चल रहा है, साफ साफ हम देख पा रहे हैं। बट 404 वो ऑलरेडी फाइट्स के अंदर इनिशिएट करते हुए नजर आ जाएंगे। अभी एक चिकन निकाला था मेरा मारमैन, वापस से अपना डोमिनेशन दिखाने के लिए वो टीम पूरी तरीके से तैयार है। बट 9mm के प्लेयर्स वो स्ट्रगलिंग, अपने प्राइमरी ड्रॉप पर जाने में असफल यहाँ पर इनको देखने को मिलते नजर आएंगे। व्हीकल लेकर निकलने की शुरुआत यहाँ पर जल्द से जल्द जो है वो करनी पड़ेगी। अच्छी बात है कि आसपास के एरियाज पर कोई नहीं है, बट मोंटेनो एक अच्छा बैटल रहेगा। 404 के प्लेयर्स ने ऑलरेडी यहाँ पर एक प्लेयर को टेक डाउन करा तो जरूर है, बट आई डोंट थिंक कि वो कंफर्मेशन मिल पाएगा। काफी दूर दराज की वो फाइट है, बड़े आसानी से जो रिवाइवल की प्रक्रिया है उसे इनिशिएट किया जाएगा। बट E7 के प्लेयर्स इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर कि वो किस तरीके से टैकल जो वो करते हैं दोनों टीम्स के बीच में। एक अहम फाइट। बट अगर हम 404 को देखें तो उतना मेजर एरिया उनको लूट करने को मिलेगा नहीं, तो इतने कम लूट में वो किस तरीके से इनिशिएट करते हैं फाइट्स में, ये देखना काफी अहम रहेगा। Well, last match they got that winner chicken, and I don't think so. Their motive is to fight in the initial stages. Maybe they will just try to secure some finishes, but if they are not able to, maybe they will just retreat towards a safe zone and they will just grab a compound. Will try to spend time because already they are present inside the circle, and I really agree with you a lot because they don't have good loot, and in order to execute a fight positively, you need good amount of loot. You need options, which Code 404 doesn't really have now. So all they can do is just head towards the zone. Maybe they will try to stab Team A7 in the back. Maybe they will try to surprise A7, but A7 knows about the position of Team Code 404. So this is where the chances of getting opportunities are very low. This is just sort of wasting of time. Code 404, they can focus on their loot. Maybe they can grab few vehicles. But still, they are quite stubborn. They want to do it. They want to go for that attempt. They want that first opening frag. But overpowered Esports on the other hand, they are taking on Team Old Generation. Utkarsh will be knocked out. Overpowered Esports far with that opening created. The question is, will he be able to
successfully turn that knock into confirmation? Will he be successfully able to turn that knock into a frag? Yes, he will. Disaster will be finished off. Utkarsh will be finished off too. Mr. Joker gets knocked out. Tensions rising for old generation. Joker, he'll be cooked. And now old generation, I guess they're just down to one player. Mid to dawn, I guess he spotted some players there in open areas. Yeti and Yeah. Ares, both of them trying to secure a few more areas in order to loot EMT. या ऑफ कोर्स और अगर हम मिथुन डॉन की बात करें विद दैट ट्राई कर रहे हैं कि किसी तरीके से का ओपनिंग निकाले बट E7 दैट अ ग्रेटर एरिया आराम से वो लूट अपनी कर रहे हैं दे ऑलरेडी नो दैट कि अगर नॉक भी होते हैं ना कंपाउंड्स के अंदर तो इजीली रिवाइवल इनिशिएट कर दिया जाएगा ज्यादा कोई दिक्कत वहां पर ऑलरेडी E7 को नहीं पड़ेगी बट हाँ ज्यादा ओपन में आएंगे तो फिर पनिश उनको किया जाएगा दैट मिनी 14 का शॉट लिए जाएंगे थोड़ा सा इंतजार अभी भी किया जा रहा है थोड़ा सा और ओपन में आने देना चाहिए था बट ये शॉट लेकर चौकन्ना जरूर आपने करवा दिया अपने अपोनेंट्स को दे नो दैट कि अभी भी ऊपर की तरफ 404 की जो प्लेयर्स है वो इंतजार कर रहे हैं बट स्टिल कितना वेट करेंगे कितना इंतजार करेंगे ये ध्यान Yeah. रखना होगा 404 की अभी भी वो #1 पर नहीं आए दे स्टिल #3 पर हमको देखने को मिल रहे हैं इवन इन द मिरामार टोटली लूट बहुत ज्यादा एक मेजर फैक्टर होती है फाइट्स के अंदर अगर आपके पास अच्छी लूट नहीं रहेगी तो फिर एंड सर्कल्स तक अगर आप सर्वाइव भी करते हो तो फिर फाइट्स में आपको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है You won't have much options with you if you don't have enough amount of या loot. Code 404, they need to understand this fact because they've already done a great job in the last game. And they wouldn't really want to lose this game. So I guess they should try something else. They should try something new. Team Chaos versus Team Borg. Omen, where are you roaming? Noob missed a chance there. And Omen with bare HPs, can he take down Noob? That's the question. From back in areas, cover will be provided to Omen. Omen very smartly, he heals himself, and with that pre-fire, Omen takes down Noob, and Team Chaos has made a blunder there. Fragger is the last player surviving, and in this game, surprisingly, Team Chaos, they are just playing with two players. Fragger is the last ray of hope. He is still lacking with his HPs. And I guess this is game Yeah. over for Fragger. That grenade was right on target. Bravo does the needful. Sends Fragger out of the lobby. Team Chaos gets eliminated on 16th position here. या ऑफ कोर्स एलिमिनेशन और आउट नंबर्स थे तो आसान वैसे भी होता नहीं है कि अगर एक प्लेयर नॉक हो जाए तो पूरा प्रेशर आ जाता है और केओस वो ज़्यादा कुछ खास कर नहीं पाए एक अच्छा मौका था कि आखिरी गेम है आज के दिन का तो आप एक बेहतर नोट पर एंड करने की जो कोशिश है वो करते हो बट कुछ खास वो टीम नहीं कर पाए बट बॉन्ग वो जरूर खुश होंगे 2 फिनिशेस उनको मिल चुके इट वाज अ गुड स्टार्ट बट पिकाडो एक अच्छा कियोस हमको देखने को मिल रहा है 9mm के प्लेयर्स फाइट के अंदर इंडल्स करे एक अच्छा मौका शॉट लिया जाएगा टेक डाउन करेंगे यहाँ पर कमाल का वो नॉक बस इंतजार कर रहे थे और जैसे ही मौका मिला निकाल कर अपने अपोनेंट्स का और इंस्टेंटली समाप्त करके वो कंफर्मेशन भी यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा एंड दैट वाज बीइंग गुड फॉर द प्लेयर्स राइट नाउ टीम वेलोर वी ऑलरेडी नो दैट कि पिछले मैच में भी हमने वेलोर की तरफ से कुछ ऐसी सिली मिस्टेक्स देखी थी जिस वजह से वो जोन के अंदर नहीं जा पाए थे और यहाँ पर भी आई थिंक क्या सरप्राइजिंगली एक अटैक करा टीम 9mm ने इंटेल था या नहीं था और अगर था तो शायद ये बड़ी गलती थी आपकी तरफ से कि पता होने के बावजूद अगर इस तरीके से आप व्हीकल ओपन में लेने जाओगे तो फिर उसका हर्ष जो आपको भरना पड़ेगा बट चलिए बाकी प्लेयर्स वो यहाँ से रिट्रीट करके निकलने की जो शुरुआत है वो कर चुके थे ऑलरेडी नो दैट कि अगर यहाँ रुकेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आपके लिए बढ़ जरूर सकती है बट अभी भी कोशिश वहां पे 9mm की तरफ से चल रही है कुछ शॉट्स का आदान प्रदान जो वो करना जरूर चाहते हैं 15 टीम है 54 प्लेयर्स पहला सर्कल वो 25 सेकंड्स के अंदर जो है वो समाप्त होगा जाट की अगर हम बात करते हैं फिलहाल लूट इनकी भी ठीक ठाक है प्लेयर्स की कोई प्रॉब्लम लूट के मामले में नहीं बट अब यहाँ से अब 3 ही प्लेयर्स के साथ जो सफर है वो आगे बढ़ाना पड़ेगा This has always been a story of Team Valor. They always make those silly mistakes. Now they gave a freebie to Team 9mm. That was a free gift. 9mm, they got a bonus there in Picaro regions. But 9mm, they won't really stop themselves. I guess they will continue to fight Team Valor. And Team Valor didn't create a huge separation. So I guess Team 9mm, they will try to chase down Team Valor. Maybe they will try to create some more openings. Because there is still a possibility. And Team 9mm, they are looking at the situation. They are looking at the situation like a gifted situation. I mean, they can win this fight. They don't consider, I guess, Team Valor like a huge competition for them. So maybe Team 9mm, they will be focusing on initiating this fight and winning this fight for themselves, getting for elimination in the initial stages. The way Team Valor made that mistake, eventually 9mm Esports, their confidence was boosted. This is why they are taking that initiative. Ash, right on that position from where he can create that crucial opening. Team Valor knows it really well that 9mm Esports won't let it go. But from back in areas, Team RL, they were rotating. A single vehicle, multiple players are traveling there. Team RL, they tried to deal some shots.
Juicy brilliantly. He'll be cutting off that flank angle. He has got that height advantage. He will be having his eyes on Halusa and his teammate and the whole lineup of Team 9mm. From back in areas, Dustin Oji, he'll be closing in too. But I guess 9mm Esports, they must be knowing now that already there are only 2 players surviving in that particular compound. They should be closing in. They should be going in for that slamming because it will be a 4v2 scenario and Juicy isn't back in areas. He won't be able to do much, but I guess Ash, he listened to me. And immediately Ash, he'll be closing in, but he should have healed himself. But doesn't need that. Immediately that grenade will be going on the target. Chad gets knocked out. Jimmy lacking with his HPs. And 9mm Esports, I guess they will take down Jimmy easily. Yes, Ash creating another opening. With this, Jimmy, he'll be sent back to the lobby. Ash with a brilliant 1v3. And immediately Team Valor, they are just down to 1 player EMT. एग्जैक्टली यहाँ पर एलिमिनेशन यहाँ पर हमने देखा और इनफैक्ट हर गेम में हमने ये चीज़ें नोटिस करी है कि 9mm अगर किसी टीम को एक प्लेयर को डाउन कर लेती है तो वो सडनली उनको चेज करती है, वो ट्राई करते हैं कि बाकी प्लेयर्स को भी समाप्त करें और यहाँ पर भी हमको वो चीज़ें जो वो देखने को मिली कम्प्लीटली इससे डिसअपॉइंट होंगे ज़रूर टीम के प्लेयर्स। टीम वेलोर जानती है कि इतनी बड़ी गलती आपसे हुई, ऑलरेडी नो दैट कि प्लेयर्स काफ़ी क्लोज है तो वो यहाँ पर आ सकते थे बट उसके बावजूद वहाँ पर रुकना उनके लिए गलत साबित होता और अब उसी वो अकेले प्लेयर और वो भी निकलना चाहते हैं बट चलिए टायर बर्स्ट हो चुका है, मतलब अब रुकना ही पड़ेगा यहाँ पर और अब एक 1v3 का बैटर 1v4 का बैटर रहेगा। शॉट जरूर लिए जाएंगे, कनेक्शंस कुछ खास देखने को नहीं मिला, ट्रेस करने में असफल साबित होते हुए नजर आएंगे और अब ये चारों प्लेयर्स आ चुके हैं। शॉट लिया, चलिए समा बनाएगा 9mm। इट वाज अ क्रेजी स्टार्ट फॉर द प्लेयर्स, कमाल की शुरुआत हमको देखने को मिलेगी एंड टीम वेलर उनका सफर खत्म होता हुआ। Chased down their opponents. 9mm Esports, they are known for this and they succeeded this time. I guess they will try this more because they love to play aggressive. But ladies and gentlemen, SKOAR College Cup Daily Edition is powered by OPPO K13 Turbo Series, India's only smartphone with a cooling fan. It's rare, isn't it? Unique. So do check it out. Check this phone. It will enhance your gaming experience for sure. It will be easy for you to maintain 10 KD for sure in game. What's your KD, EMT? I always play Livik, that's why my KD is 4 because I'm not really like Erangel because in Erangel very pro players was come और usually मुझे pro player से डर लगता है इसलिए मैं Livik ही खेलता हूँ, bots को मारता हूँ और अपनी KD मेंटेन रखता हूँ। वैसे आपकी कितनी की KD है? Well, my KD is pretty much good, but I guess if I use OPPO K13, I guess I will surely improve with my finish death ratio. Maybe I'll reach 15. So yeah, all the players watching out there, do check it out. Do check out this device so that you can enhance your gaming experience. Well, 9mm Esports inside that compound now. 9mm Esports after a very good start. AMT, what are your predictions? What do you think now? 9mm Esports, will they go aggressive or now they will just go passive? Like, as we are seeing it, I think so. They will just go passive because they've got those bonus for eliminations and they will just try to maintain the pace of this game. Then the end circle will see them exploring. What do you say? आई थिंक मुझे लगता है कि अभी तक के जिस तरीके का सिचुएशन चल रहा है ऑलरेडी 9mm बखूबी जानती है कि डे आपका उतना अच्छा नहीं गया बट ये गेम में आपने स्टार्ट बहुत अच्छा करा है, कोई प्लेयर्स गवाए नहीं है तो अगर इसी फेज में आप चलते हो और एंड तक सर्वाइव करते हो मे बी दैट्स अ गुड गेम फॉर दैट टीम और वो चाहेंगे कि अगर आज का दिन आखिरी गेम बहुत अच्छा जाता है तो कल जब वो आएंगे ना तो एक फ्रेश स्टार्ट रहेगा और मे बी शायद कल अच्छा दिन रहे उनके लिए। Obviously. The 9mm Esports, they are continuously moving as they are outside the circle. Now they are moving in. Circle to circle game. You rarely see this from 9mm Esports. As you said, if they finish this game in a convincing fashion, maybe upcoming games, they will keep up that momentum, they will keep up that pace. It's difficult to move now because Timaru, they tried to trace and Mole was about to get knocked out there. That was very close. That was very close. And it's a 3-1 split. And Mole is all alone there inside that compound. Alpha Yukoji won't waste time. Takes down Anmol. And Team Redline Esports faces a casualty here. That was a disaster for Redline Esports. 9mm, they are so much lucky. They slammed in a compound where there was a solo player surviving.
I mean, everything is falling in their basket, EMT. एग्जैक्टली यहाँ पर और 9mm इस मैच में कुछ ज्यादा ही बेहतर खेल रही है एंड दैट वाज बीइंग रियली गुड। अच्छा लग रहा है देखकर, इसी तरीके की परफॉर्मेंस की जरूरत है उनको और कंप्लीटली इस मैच में डिलीवर कर रहे हैं। बट रेड लाइन के प्लेयर्स एक प्लेयर गवाया जरूर है, अनमोल एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपनी टीम के लिए। बट अर्ली एलिमिनेशन हुआ है, देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि बचे हुए 3 प्लेयर्स के साथ कितनी देर तक वो सर्वाइव करते हैं। बट इसी बीच W2R की जो प्लेयर्स है वो भी फाइट के अंदर इंडल्ज यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। बट डस्टिन जोन के अंदर है, आराम से एक अच्छे स्पॉट पर हमको देखने को मिल रही है। व्हीकल्स है प्लेयर्स के पास, लूट्स की कोई कमी नहीं है, एक अच्छा मोमेंटम और इसी को आगे लेकर चलने की जरूरत है। बट फिलहाल फिर हम बात करते हैं एक और फाइट के लीजिए। अभी तो जस्ट रिवाइवल मिला ही था, इंस्टेंटली अटैक किया जाएगा। 9mm के प्लेयर ही थे जिन्होंने वो नॉकआउट निकाला है। आई थिंक इस गेम में 9mm कुछ अलग प्लान्स के साथ उतरी है और एग्जैक्टली वो प्लान्स पर एग्जीक्यूट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। They are everywhere. They've written their name on each and every finish. But again, Monk, he got that revival, and this time I guess he won't make that mistake. Aquila Esports playing with 3 players in this game. Aquila Esports needs to hold back. They need to understand their restrictions, their limitations. That's the reason why. I guess they understood their limitations. They have numbers disadvantage. That's why they are playing so much passive. Usually, Aquila Esports, they are very much explosive in Miramar. B Bravo on the other end, taking down Kitsune of Team AKT. Team Borg coming into action. W2R Esports, surely they have their eyes on Aquila Esports. They're trying to create those openings, but no hot peaks from Aquila Esports. Patiently waiting. Monk again, bearing that spray. Again, he survives. 9mm Esports, they are in a contest with Aquila Esports. Who has the better burst here? And right now, Monk, he's suffering because he doesn't have a better burst there. 9mm Esports, they're in a really good touch, in a really good form. Whatever they are doing, they're succeeding in it, PMC. या ऑफ कोर्स। बट फिलहाल देखना इंपॉर्टेंट होगा कि एक्विला ई स्पोर्ट्स वो किस तरीके से निकलते हैं, क्योंकि आई थिंक एक सैंडविच सिचुएशन में फंस सकते हैं। आगे जाएंगे तो 9mm के साथ मुलाकात होगी, पीछे W2R के प्लेयर्स भी रहने वाले हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर रहेगा। बट AKT के प्लेयर्स शॉट्स वो भी लेना चाहते जरूर है। अभी के लिए स्पॉटिंग यहाँ पर जो दोनों टीम्स करती हुई नजर आ रही है, एक दूसरे को टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। एंड बॉन्ग के प्लेयर्स, उनको भी चाहिए एक आखिरी मुकाबले में बेहतर करके जाए। आई थिंक जितनी टीम है वो 14 की 14 टीमों की बस यही एक थिंकिंग होगी कि भले हमारे जितने भी मैचेस हुए जो भी खराब गए उसे भुला दीजिए, ये आखिरी गेम है। इस आखिरी गेम में अगर आप एक अच्छे नोट पर एंड करोगे तो कल एक पॉजिटिव नोट के साथ आप स्टार्ट करोगे, और वही सारी टीमें चाहते हैं। दैट्स व्हाई कंप्लीटली कोई भी यहाँ पर अब गलती करना चाहता नहीं है, इंतजार कर रहा है, अपने अपोनेंट्स को गलती करने का समय वो ले रहे हैं, ताकि अगर वो गलती करे ताकि फिर वो अटैक करेंगे उनके ऊपर और उनके लिए वो मुश्किलें बढ़ाना चाहेंगे। बट अगला जोन चलिए वो आ चुका है, और अब यहाँ पर बॉन्ग के जो प्लेयर्स है उनको निकलना पड़ेगा, उनको सर्कल की तरफ यहाँ पर जो वो बढ़ना पड़ेगा। एंड लेट्स सी कि कैसे वो सर्कल की तरफ यहाँ पर मूव करते हुए नजर आते हैं। यूजुअली आसान उनके लिए भी रहेगा नहीं, क्योंकि एचएस पर हमको जो वो प्लेयर्स ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। बट रेड लाइन के प्लेयर्स, पिछले मैच में भी रेड लाइन ने एक प्लेयर गवाया था, बट उसके बावजूद अच्छे खासे फ्रैग्स निकाल कर गए थे, और यहाँ पर भी जो जोन का कंट्रोल है टीम के पास वो काफी शानदार देखने को मिल रहा है। Yeah. Redline Esports shouldn't mess up from this particular situation, and more frags are coming their way. Because teams are trying to enter the circle, especially Rahul now, he's trapped in open areas. Bakri, we saw him, the way he got finished in the initial stages in the last game. Because of that, RL Esports, they messed up in the last game. And in this game as well, RL Esports faced a casualty in the initial stages. It's like a deja vu. Just a different player got eliminated, but still, they have to continue this game with just 3 players. It's such a huge cluster in this particular area. W2R, Aquila, RL, AKT, even Borg Esports, they are a part of this cluster. Back in areas, we can see team Last Contenders. And team W2R, they are spread in such a huge area. Such a huge split they are maintaining right now. They are confident. They believe in themselves. Wolf will be taken down with this. Team T1, are they out of this game? Or they just faced a casualty? I guess they faced a casualty. W2R Krish now, he might create some difficulties for team Last Contenders. Yeah. Krish just waiting for that moment. And now they are trying to spam those grenades. And Last Contenders, surprisingly, they know about team W2R. It won't come easy for Krish and his teammate at all. Vintox on the other end, finishing off Rahul. Borg Esports facing a casualty. W2R needs help. Only 2 players will find it very much difficult to stop Last Contenders. Though Last Contenders didn't have a great day, but
You cannot underestimate your opponents for sure. Yeah. Jansh, Krish, both of them. They are prioritizing those grenades. Ragnarok immediately he closes in. Extended too much. Krish with a poor tracing there. Ragnarok survives that spray. But now Shobit. Krish with that spray. I guess Shobit, he got knocked out there. Krish will be getting a confirmation. Kyan's taking down Shobit very smartly. Stark has a small cover there. He goes for that pixel pick. Stark gets knocked out as well. And lost contenders there on back foot. Vicky is the last player surviving. And I guess Krish now will try to chase down Vicky. But Vicky, very smartly, he just sneaks out. But couldn't extend his rotation. And Krish is in open areas. He needs cover here, desperately. But from back in areas, it was Team BL joining the party. And with this, Team Last Contenders, they are eliminated. Vicky was taken down by W2R Adi, alright. Team W2R getting all the frags. 4 eliminations for Team W2R and Team Last Contenders. They'll be getting eliminated on 12th position, EMT. जी फिलहाल अगर हम बात करते हैं मॉक वो हमको देखने को मिल जाएंगे एक अच्छा ग्रेनेड बट 9mm के प्लेयर सामने की तरफ रहेंगे 404 स्ट्राइकर उनको भी पिक किया जाएगा बट मॉन्क एक अच्छा ग्रेनेड प्लेयर्स की एचपी ऑलरेडी काफी ज्यादा लो है बट वो विंडो से शॉट लेना चाहते थे इनफैक्ट वो कनेक्ट कर नहीं पाए 3v4 का वो बैटल जो है वो देखने को मिलता नजर आएगा शॉट लिया जाएगा कनेक्शंस बखूबी बनाएंगे टीम 9mm बट इंस्टेंटली स्पेक वो ट्रेड निकालते हुए नजर आएंगे बट दूसरी ओर से वो प्लेयर्स आएंगे और चलिए एलिमिनेशन आता हुआ नजर आएगा W2R उस फाइट से एक फ्रैग सिक्योर करते हुए नजर आएंगे एंड टीम 9mm दोस लुक्स आउटस्टैंडिंग 8 फिनिशेस आ चुके हैं बट बड़ी दिक्कत ये है कि अब W2R उनके पास वो एडवांटेज है हाइट का वो परेशान करेंगे यहाँ पर प्लेयर्स को फिलहाल एक ही टीम वो भी रूटीन करना चाहते हैं जोन का डैमेज कमाल की ट्रेसिंग वहां पर आती हुई नजर आएगी एक करके प्लेयर्स को पिक किया जाएगा द लास्ट वन स्टार्टिंग फॉर EKT एंड आई डोंट थिंक यहाँ पर आसान होगा उनके लिए बचना और जी हाँ बिल्कुल एलिमिनेशन आता हुआ नजर आएगा एंड बैक टू बैक जिस तरीके से W2R के ये मैचेस आ रहे हैं आई थिंक दैट वाज ट्रिमेंडस और अब एक बढ़िया मौका रहेगा अगर यहाँ से ओपनिंग निकालते हैं 9mm पर और पुश करके उन कंपाउंड्स को अपना बना लेते हैं तो आप चांस की चिकन निकाल सकते हैं All generation, they are eliminated on 7th position. Team RL, I guess they are out of this game too. RL gets eliminated on 6th position. And as you said, 9mm is on W2R's target. But it's just a matter of time. Just a matter of decision. When will W2R close in and go for that slamming on 9mm? Because that compound is present inside the circle. And once you grab that compound, which is present inside the circle, you can make this game yours. W2R Esports, this will be their second winner chicken dinner of the day. Already they have secured total 8 eliminations. PL Humble Igel knocking down Odetopi of Invincible Esports. Invincible Esports, with this, they are down to just one player. And that is hugely separated. Danger won't really try to go for the revival. Humble Igel, he has already pinned Danger down. Even if he tries to revive with it, I guess it will be a gift for Humble Igel there. Meanwhile, Shadow, he has pinned down Overpowered Esports. Overpowered Esports doesn't really have to work hard here. Because it will be an easy entrance inside the circle. They're just beside the circle. Meanwhile, if we talk about Blaster X Shada, they're almost 35 meters away from the circle. And it will be a head-to-head fight against W2R Esports. W2R will start spamming those grenades as well. Myth does a great job there. Takes down Invincible Esports Danger. And with this Invincible Esports, they are eliminated on 5th position. W2R Esports versus Blaster X Shada, ladies and gentlemen. A 4v4 head-to-head fight. PL, they are looking towards Overpowered Esports as well. And they are looking forward to eliminate them. Viper will be finished off. Kamlesh barely surviving in 10 HPs and he will be finished off too. And with this Overpowered Esports, they are out of this game. Overpowered Esports. Oh, no. What a nasty reflex that was. Krish shuts down Myth immediately. The revival process has been initiated. And the remaining players, they are focusing on W2R. Kyanch gets knocked out. 9mm joining the party. Krish was on the target. But Krish survives that spray. M416 could have been a better option there. UMB45 takes too much time. Those bullets takes too much time. Adi gets knocked out too. And W2R, they are slipping. This game is slipping out of their hands. And this is the last thing they wanted. 9mm Esports, they are showing brilliant resilience. But now it's time to enter the circle. And one player got knocked out there. It will be a bit time consuming to revive the player and then enter the circle. But I guess they can still invest in it. A smoke pathway has been created, but W2R is deploying their players in the nearby area to tackle that rotation of Team 9mm. 10 eliminations have already been secured. Bruiser becomes a smoke criminal! What a spray! Right through the smoke! Alpha Yugoji on his knees! Ash surviving in bare HPs! Bruiser now goes for the grenade and misses by a huge margin.
9mm giving up upon their teammate. Only 2 players now will make it to the circle. Krish gets knocked out again. And W2R right now in a sandwich situation. And even Shadow, he closed in. Yanch is knocked out as well. Bruiser, he has to take the control, but Bruiser gets knocked out. 9mm stabs W2R in their back. Shadow on Halusa's target, and Halusa does the needful, knocks down Shadow there. And the last player now surviving for BL, but Humble Igel with that grenade knocking down Ash. That was unexpected. Halusa, you need to go for that revival as soon as possible. You cannot take the risk of making it a one-way anything. Go for that revival, save your teammate, and gain that numbers advantage. एग्जैक्टली यहाँ पर चलिए अच्छा फैसला लिया, रिवाइवल यहाँ पर कंप्लीटली एग्जीक्यूट कर चुके हैं W2R, इसी बीच वो भी रिवाइवल इनिशिएट करेंगे, शॉट वहां पर लिया, कमाल का वो शॉट आता हुआ नजर आएगा, क्रिश बिंग लास्ट मैन स्टैंडिंग, अल्यूसा वो आगे जा जरूर है, बट चलिए वो कंफर्मेशन आएगा, बट दूसरे प्लेयर नहीं था यहाँ पर, एश बिंग लास्ट मैन स्टैंडिंग, दैट ग्रेनेड्स मोलोटॉव, क्या वो कनेक्शन ढूंढ पाएंगे, बट इस बीच ब्लास्टर के प्लेयर शैडो, उनको भी अब रिवाइवल मिल चुका है, ऊपर की तरफ आते हैं तो बहुत आसानी से वो क्रिश को स्पॉट कर सकते हैं, बट अंश ने वो स्पॉट कर लिया है प्लेयर्स को, जी आज शॉट लेंगे, कमाल का वो स्प्रे, वो आखिरी खिलाड़ी, चलिए उनको भी पिक किया जाएगा, इट्स कंप्लीटली अ 1v1 बैटल बिटवीन हम्बल आइजल एंड ऐश, क्या ऐश यहाँ पर इस मुकाबले को पुल ऑफ कर पाएंगे, बट लुक एट द हम्बल आइजल, दे आर वेटिंग, वो पता है उनको कि सामने वाले प्लेयर्स को आना है, बट ये अच्छा फैसला कि जो प्लेयर नॉक थे उनको समाप्त करा ताकि इंटेल जो है वो पास आउट हो सके, और एक और प्लेयर को समाप्त किया जाएगा, अब उनको अंदाजा लग चुका है कि वो प्लेयर कहां पे रहने वाला है, एक 1v1 की बैटल रहेगी, हम्बल आइजल इंतजार कर रहे हैं, हम्बल आइजल अपनी पोजीशनिंग बिल्कुल भी रिवील नहीं करना चाहेंगे, दे ऑलरेडी नो कि अगर रिवील करा दिक्कत हो सकती है, बट इस समय पर बस एक ग्रेनेड या मोलोटॉव की दरकार थी जो बिल्कुल भी रहेगी नहीं 9mm के पास, 9mm कैश 8 फिनिशेस उनके पास है, वो जंप लेकर स्पॉट करना चाहते हैं, क्या पता है उनको, क्या पता है, जी हाँ बिल्कुल पता लग चुका है, वो जाएंगे 1v1 के लिए, काफी रिस्की रहेगा, प्लेयर्स के पास वो कवर का मौजूद है, बट फिर भी शॉट किया, डैमेज देंगे और खत्म करेंगे, क्या बढ़िया गेम यहाँ पर निकाला है टीम 9mm ने, एश आई थिंक ट्रेमेंडस परफॉर्मेंस, आउटस्टैंडिंग गेम फॉर टीम 9mm. What a play! That was a well-deserving winner in a chicken dinner. Ash, he's an absolute genius, snatching that winner chicken dinner out of his opponent's hands. What a play by 9mm! What a finish! This is the kind of finish we were expecting from 9mm, and finally they deliver. So much happy to see that finally, after a exhausting day, 9mm Esports, they managed to grab that winner chicken dinner. देखिए बिल्कुल, और ऐसा लग रहा था ना साइथर की जब वो उतरे थे, उन्होंने वो पिकाडो की फाइट जीता, उसके बाद बैक टू बैक वो फाइट्स के अंदर इंडल्ज हो रहे थे और बहुत ही डिसिप्लिन से वो इस मुकाबले में खेल कर गए, कोई भी ऐसी गलती नहीं करी जिससे अपोनेंट उनके ऊपर हावी हो सके, पूरा मौका लिया, और वो रिवाइवल, आई थिंक वो रिवाइवल एक की फैक्टर है, वहां पर वो रिवाइवल पूरी तरीके से इनिशिएट करा और उसके बाद जो 1v1 निकाला है, दैट वाज ट्रेमेंडस, क्योंकि देखिए सामने वाले हम्बल आइजल की अगर हम बात करें, उनके पास वो ड्रॉप का कवर था, एंड वी ऑलरेडी नो कि जब टीपीपी का एडवांटेज रहता है तो आपके पास बहुत आसान रहता है सामने वाले प्लेयर को टेक डाउन करना, बट उसके बावजूद कॉन्फिडेंस था ऐश के ऊपर, ऑलरेडी रैम्पेज पर चल रहे थे, 8-9-7 फिनिशर्स निकाल चुके थे, और वो कॉन्फिडेंस उनको आगे लेकर गया और ये चिकन डिनर में निकाल कर गए, काफी खुश होंगे टीम 9mm, क्योंकि पूरा दिन उनका जिस तरीके से जा रहा था डिसअपॉइंट थे, बट आखिरी गेम में अच्छे फ्रैक्स के साथ चिकन निकालना, एक अच्छे नोट पर एंड करा है, बहुत ज्यादा खुश होंगे वो. Absolutely a breakthrough for them. This is what they were expecting, and now they are all set for upcoming games. They've grabbed a great momentum, and this is their true standard AMT. They have such a brilliant gunpowder, and especially when they fire in the initial stages, it's just delight to watch them. They are just majestic. But I don't know why they were not in their OG touch, but now I guess they are back in their OG touch. It was brilliant by 9mm. But now, ladies and gentlemen, it's time to witness the overall standings after match number 6, and overall standing goes by this. Redline Esports, they are the head of the table with 69 total points. W2R, they are on second position with ultimate consistency with total 58 points. Whole Generation, they are on third position with 52 points. Coders 404, after that winner chicken dinner, everything changed for them. They are on fourth position with 49 points. Invincibles, they are on fifth with 47. 9mm, a huge jump by their side. Straight away from page 2, they are on page 1. 45 points for them, 6th position. Blaster Shada, they're on 7th with a total amount of 37 points. Overpowered with a total amount of 37 points, they are on 8th position, EMG.
Exactly, Aquila with 37, Bong with 30, AKYT with 27, even with 21. तो ओवरऑल एक अच्छा दिन मैं कहूँगा कि टीम्स के लिए रहा और स्पेशली रेड लाइन के लिए बहुत अच्छा दिन रहा, बट आई एम हैप्पी फॉर 9mm. लिटरली काफ़ी ज़्यादा खुशी, क्योंकि जब आप पेज 2 पर होते हो और फिर एंड पर आप पेज 1 पर आ जाते हो, जैसा हम जानते हैं कि एक ही गेम पूरी तरीके से पाजा जो है वो पलट देता है और एग्जैक्टली वही करा. बट हाँ, आज का दिन भले जैसा रहा, कल के दिन उनको होमवर्क करके आना पड़ेगा ताकि वो अच्छे नोट पर एंड करे, इसी कंसिस्टेंसी के साथ जो वो चलना पड़ेगा. एंड गॉड्स नो, सेकंड डे कुछ भी हो सकता है, ऊपर वाली टीम में नीचे भी आ सकती है, नीचे वाली टीम में ऊपर भी जा सकती है. अनिश्चितताओं का गेम है यहाँ पर, हर प्रेडिक्शन फेल है. तो लेट्स सी कि कल के दिन पर क्या होगा. Absolutely. Well, that's it for today, ladies and gentlemen. This was SKOAR College Cup Tele Edition Grand Finals Day 1, powered by OPPO, along with our storage partners SanDisk and Digit. And now we take a leave. It was a great time serving you all as a caster, me, commentator Saitha, and EMT Gaming. We had a great time, and 7arm as well. So we'll be taking a leave, ladies and gentlemen. Take care, bye-bye, and good night.